even better. He needs to just stand and take that responsibility because Brijpal Gaur is just running from the left to right of our screen, and then on the lobby he just runs the length and breadth. He does not have an escape route. He tries to disturb the defense, Brijpal, but no escape route. But for me, Sahil Bagara is a nice raider. If he can stay on the mat and play well, that'll be really good for the Aravali Arrows. जी, और अरावली अरोज के लिए आज प्रेमदायक प्रदर्शन जब भी होगा जब प्रेम भडू वहां पर प्रेम से खेलते हुए नजर आएंगे और टैकल्स करते हुए नजर आएंगे। तो आइए जल्दी से प्रेम भडू के टैकल्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। Yeah, I also want the pocket dynamite to also blast really well. Yeah, Prem Padu is good, but for me the problem is somehow Rajendra Baka is just lost confidence in himself, just lost confidence in whatever his coach is trying to say. I think, see, he should just forget. He should just forget about whatever is happening outside the kabaddi mat. He should show what he really is made of. That is what Rajendra Baka should do today. जी, आज उन्हें अपना ए क्लास परफॉर्मेंस और अंकित जॉर्ज से भी आज उन्हें उतनी सपोर्ट की आवश्यकता होगी। बहुत ही अच्छे डिफेंडर हैं वो भी। बट सबसे पहला जो मैच अभी आने वाला है हमारे पलक झपकाते शायद आप सभी के समक्ष होगा, मैच नंबर 100 चंबल चैलेंजर्स वर्सेस चोला वीरंस। दो बड़ी टीमें, आज देखते हैं कि कौन सा सी अपना विनिंग सी का कॉम्बिनेशन उतार पाएगा। और अभी तक की अगर हम बात करें तो शुरुआती दो मुकाबले चंबल चैलेंजर्स ने जीते हैं, बट पिछली बार जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी तो नवीन चोला वीरंस ने वहां पर सिर्फ 2 पॉइंट के मार्जिन से जीत प्राप्त की थी। Yeah, that was also very good, and I think we'll have to go in quickly with that the raider of whichever team that we are watching out. I think probably Sanskar first, or अजय who's that? मारवी। Is it Chola? आज हम Okay, चाहते right, हैं कि Ajay एक और Mavi, युवा right? खिलाड़ी जिन पर दावेदारी आज Yeah, कर सकता है चंबल चैलेंजर्स। absolutely. Because see, if there is no Durgesh Kumar, I don't see his name in the playing seven, and it will be a very important role for Ajay Marvi to actually go out there and support Sanskar Mishra. And I'll also have to see how much of a break that Sanskar Mishra has taken. I mean, break in the sense when Durgesh came in, Sanskar underplayed himself. He underperformed himself. He did not go out there and raid too much. Has it broken his momentum? Is also a very good question. And with Ajay Marvi, and don't forget, Gopi will be playing as another raider. Right, there's another change in the cover combination, Arshit. See, that is the problem. They kept on changing the cover combination, and yesterday, I think there was a new defender that came in, Hemant Kaiwar. So when Hemant has come in, along with Aniket Gainande, yeah, again, cover is changing, and Gopi being a third raider, I have my doubts with that. जी नवीन, बहुत सारे कवर्स में परमानेंटली चेंज हो रहे हैं, बट अगर कोई प्लेयर परमानेंट है राइट कॉर्नर पर तो वो दुर्गेश साहू हैं, और दुर्गेश साहू को अच्छा स्टार्ट यहाँ पर चाहिए होगा, अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए होगा एज ए डिफेंडर। Yeah, and today he will be against Ayappan Veerapandiyan. Yeah, because he is a very, very wily raider, very wild. He runs around left to right of the defense corridor. And yeah, Durgesh Sahu should understand. And today, I don't think so. There is any proper left raider that will be coming in apart from Vignesh Murugesan, I think, for the Chola Veerans. So today, Durgesh Sahu needs to go for the attacks. He needs to attack and block the right raiders, especially Arun Kumar Anjapuli. If he can work that out nicely, that will be good. But actually, yes, Durgesh is good, but my biggest concern is that left corner, Rehan Sheikh. Today, he will be really tested. Arun Kumar will test him. Ayappan Veerapandiyan will test him because two right raiders and Rehan Sheikh, if he fumbles, then there will be a difficult match again for the Chambal Challengers. बिल्कुल आपने रेडर्स की बात की। डी रंजीत सिर्फ इकलौते शायद लेफ्ट रेडर आपको चोला वीनर्स में नजर आते हैं। विघ्नेश मुरुगेसन स्वयं एक राइट रेडर है, तो आज टफ कॉन्टेस्ट वहां पर रेहान या फिर जावेद कोई भी वहां पर उतरे उनके लिए होने वाला है। बट अरुण कुमार अंजापुरी नवीन क्या बैकअप किया है, क्या कमबैक किया है और पूरी तरह से काउंटर एक्शन स्किल्स के साथ मुकाबला जिताया है अगेंस्ट टफ टीम नीलगिरी नाइट्स इन्होंने। Yeah, he's like the Ajinkya Rahane of raiding, isn't it? Because we've seen all the hard raid makers, raid point takers. Arun Kumar has slowly and steadily gone to that 100 raid points. And it is nice to see the captain of Chola Veerans, going out there and taking up that responsibility. And also he's learned the art of staying on the mat because of Ayappan Veerapandiyan. Because Ayappan is there, they send him for the do-or-die raid. And Ayappan has been very good in the do-or-die raid because he's very quick, he's wiry, he's wild. He does his job in a do-or-die raid. And good that Arun Kumar Anjapuli stays back on a do-or-die raid and sends in Ayappan. So yeah, that's a good combination. जी बिल्कुल आपने सही कहा कि अय्यप्पन तेज है और तेजी के साथ सीख भी रहे हैं, बट तेजी के साथ क्या सीखते हुए आज पुनः आपको गौतम मुर्गन वहां पर नजर आएंगे। पिछले मैच में हाई फाई था, अभी तक का ग्राफ बता रहा है जिस मैच में वो हाई फाई बनाते हैं उसका अगला मुकाबला उनके लिए 0 टैकल पॉइंट्स आता है। नवीन, क्या आज फिर से यही रहने वाला है या फिर बदलाव करेंगे कुछ?
Hopefully for the Chola Veerans, that law of averages does not catch up. That is called the law of averages, where one day you have good, the one day you have the bad one. But today Chola Veerans will want to have that victory, because this is very important juncture of the challenger round. Because if they lose out today, then it will be very tough. If Humpy Heroes go out there and somehow win against the Palling Tuskers, it is going to be tough for the Chola Veerans. They have to go out there and win this to make a better position for themselves in the summit round. That's really important. And Gautam, hope you get the I-5 and hope the Chola Veerans also win against DJ Chambal Challengers. जी हाँ, तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा हमारे साथ, जरूर आप सभी के साथ मिलेंगे। पर उससे पहले बताएं, हम आप सभी एक छोटी सी प्लेज वीडियो के साथ शुरू करते हैं इस मैच नंबर 100 को। बने रहिए हमारे साथ यूं ही फैन कोड पर। हम युवा कबड्डी सीरीज परिवार शपथ लेते हैं सुरक्षित खेल और सत्यनिष्ठा की। We at Yuva Kabaddi series take a pledge to play safe and clean sport. जी नमस्कार। मैच नंबर 100 चंबल चैलेंजर्स और चोला वीरंस के बीच में यहाँ मैसूरू में खेला जा रहा है ये समर एडिशन, और आप सभी का स्वागत है इस मैच में। So it's the time for the match number 100। सबसे पहली मर्तबा इस समर एडिशन में ट्रिपल डिजिट मार्क। मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है, हौसला हो तो फासले क्या हैं, इन्हीं फासलों को बढ़ा रहे हैं हम आगे की तरफ और बढ़ चले हैं मंजिल के लिए। मैच नंबर 100, दोनों ही टीमें हैं बेकरार एक जीत को सुनिश्चित करने के लिए। तो ये सबसे पहले बुलाने का समय है टीम को, द टीम ऑफ चैलेंजर्स, जो आ रही है छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करने, चंबल चैलेंजर्स। With a surprising win against नीलगिरी, इनका फॉर्म सबसे बेहतरीन परिस्थितियों में है। क्या इसी परिस्थितियों का उठा पाएंगे संपूर्ण फायदा? आ रहे हैं चंबल के विरुद्ध लड़ने और दहाड़ने, चोला वीरंस। स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन, खैर मकदम, आप सभी का करते हैं हम सुस्वागत। हम मैच नंबर 100, पता ही नहीं चला ये सफर किस तरह से बढ़ रहा है। सफरनामा में आइए जोड़ देते हैं हमारे सभी दर्शकों को, उनका धन्यवाद करते हैं कोटि कोटि की। यूं ही आप प्रेम अपना सा प्यार देते रहिए युवा कबड्डी सीरीज के समर एडिशन को। आइए शुरुआती साथ के साथ बात करते हैं चंबल चैलेंजर्स की। संस्कार मिश्रा नजर आएंगे, हेमंत यहाँ पर होने वाले हैं, आपको अनिकेत नजर आएंगे, अजय मारवी, एम गोपी मल्लेपल्ली, दुर्गेश साहू, रेहान शेख, अभिराम वहां पर होंगे, अक्षय होंगे, वंश होंगे, जावेद, उदय कुमार पार्थी को सब्स्टिट्यूट में रखा गया है। पर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है नवनीत, मेरा साथ निभाने के लिए इस मैच नंबर 100 में। स्वागत है नवनीत। शुक्रिया हर्षित। और यहाँ पर हम चोला वीरंस की जो टीम देख रहे थे फिर से आई है। तो मिडिल में रहेंगे यप्पन, राइट कवर और लेफ्ट कवर की बात करें गौतम मुरुगन और सरन मुरुगन, दोनों तरफ मुरुगन भाई साहब है। राइट इन और लेफ्ट इन की बात करें विघ्नेश मुरुगेशन और लेफ्ट इन पर अरुण कुमार अंजापुल्ली। कॉर्नर्स की बात करें प्रवीण कुमार एक तरफ है और बाईं तरफ है विनी। इसके अलावा मोहनदास, सुजित, पृथ्वीराज, मनोहर और रंजीत, ये है बेंच पर आज।
रंजीत को वहां पर लगातार मौका नहीं मिल रहा है यहाँ पर शुरुआती साथ में खेलने का, बट ये कहीं ना कहीं युवा कबड्डी सीरीज एक सागर है जिसमें डुबकियां कई खिलाड़ी लगाते हुए नजर आए हैं, बट सबसे ज्यादा डुबकी जिसने लगाई है स्विमिंग पूल में भी और यहाँ पर भी टॉप 3 रेडर्स की बात करते हैं। आइए गगन राजू गौड़ा वहां पर होंगे, 18 मुकाबले 195 रेड पॉइंट, सबसे पहले खिलाड़ी बन सकते हैं आज 200 रेड पॉइंट प्राप्त करने वाले। संस्कार नवीन मिश्रा, नवीनतम खेल का प्रदर्शन इनका लगातार नजर आया है। नवनीत 23 मुकाबले 160 रेड पॉइंट। दुर्गेश कुमार पिछला मैच नहीं खेले थे, गैप बहुत ज्यादा है संस्कार दुर्गेश में, बट कैलिबर में बहुत ज्यादा अंतर अभी नहीं है। आइए टॉप 3 डिफेंडर्स की बात करेंगे अब नवनीत आपसे। या बिल्कुल, टॉप 3 डिफेंडर्स की अगर हम बात करें तो देखिए लोकेश गोसलिया, ये नाम हमेशा हमें देखने को मिलता है। 23 में से 65 पॉइंट। अंकित जाट 23 में से 58 पॉइंट्स और शिव कुमार की बात करें 21 में से 52 पॉइंट। तो ये है टॉप 3 डिफेंडर्स। टॉप 3 डिफेंडर्स अंकित जाट दूसरे पायदान पर मौजूद है। मैं जल्दी दुर्गेश साहू का उसमें नाम देखना चाहूंगा, एम गौतम का देखना चाहूंगा, बट मोहन गौड़ा यहाँ पर इस मुकाबले के मैच रेफरी कहा कि जब सिक्का उछला कि इसके पक्ष में गिरा। चोला वीरंस ने यहाँ पर टॉस जीता और टॉस जीत को आपके स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड में वो नजर आएंगे, यानी कि पहली रेड संस्कार मिश्रा या अजय मारवी या नवनीत लगाने वाले हैं। इस 100th मैच की पहली रेड, बड़ा सौभाग्य मिलेगा चंबल चैलेंजर्स को। यह संस्कार मिश्रा 23 में से 160 पॉइंट और रेड स्ट्राइक रेट देखिए 65.04। बेहद शानदार खिलाड़ी, बेहद शानदार खिलाड़ी और अपने बड़े सही शब्दों का चयन किया नवनीत, क्योंकि जिस प्रकार से इनका शानदार और जानदार प्रदर्शन नजर आया वो सच में देखने लायक रहा है। आइए अरुण कुमार अंजापुली की बात कर लेते हैं। 14 मुकाबले इन्होंने खेले, 101 इनका भी शतक पूरा हो चुका है। 101 रेड पॉइंट्स पर ये भी मौजूद है। रेड स्ट्राइक रेट 56.42 का है, ये भी काफी अच्छा नजर आता है। पर कितना अच्छी तरह से एक क्रम को आगे बढ़ा पाएंगे और कैसे आज अपनी टीम को लीड करेंगे नवनीत, कहीं ना कहीं ये देखने लायक होगा और बड़ा ही अद्भुत होगा। जी चंबल चैलेंजर्स की बात करें 25 मैच 10 जीत 11 हार और 4 बार टाई। तो बीच में ऐसा वक्त आया था कि लगातार ये टाई खेल रहे थे। विन परसेंटेज 40%। विन प्रतिशत 40 की है, क्योंकि 4 टाई वहां पर मौजूद है, पर अभी भी जीत से ज्यादा हार इनकी टीम के पक्ष में। पिछला मैच बड़ा ही क्लोज एनकाउंटर था, वहां पर हारे थे। बट आइए आज के एक्सपर्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उन्नति सिंह ने वो प्रश्न पूछा है, अजय मारवी हैज 50+ रेड पॉइंट सो फार, शुड चंबल चैलेंजर्स गिव हिम मोर चांसेस इन द स्टार्टिंग 7? अच्छा प्रश्न है। इन द एब्सेंस ऑफ दुर्गेश कुमार बिल्कुल अपने चांस को डिजर्व करते हैं अजय मारवी, बट जब दुर्गेश कुमार आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एम गोपी पर ज्यादा वहां पर ध्यान देती है टीम। एज ए डिफेंडर, एज एन ऑलराउंडर भी थोड़ा सा उनके ऊपर जाती है। बट बिल्कुल सही प्रश्न है उन्नति सिंह, अजय मारवी को संस्कार दुर्गेश के साथ चांस मिलना चाहिए अगर डिफेंस वो गलती ना करे। नवनीत आपका क्या पक्ष, जल्दी से रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ यहाँ पर। और ये रहा चोला वीरंस का 23 मैच 8 जीत 15 हार और जीत प्रतिशत उनसे भी कम 34.78। जी हाँ 34.78, और कई बार ये जीत के किनारे तक नहीं पहुंच पाती है, साहिल तक नहीं पहुंच पाती है। बट आइए बात करते हैं कि रितेश दत्ता ने क्या प्रश्न पूछा है आज द एक्सपर्ट फ्रेम में। आर चोला टू मच डिपेंडेंट ऑन देयर कैप्टन अरुण कुमार अंजापुले? ओके नवनीत, मैं चाहूंगा इसके प्रश्न के उत्तर की शुरुआत आप करें, उसके पश्चात मैं इसमें को जोड़ूं। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अभी हम देख रहे थे 14 मैच 105 पॉइंट, बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। लेकिन बाकी जो भी खिलाड़ी है उनसे भी उस तरीके का प्रदर्शन आना चाहिए, तभी ये टीम कुछ बेहतर कर पाएगी। जी हाँ बिल्कुल, और इसका मैं उत्तर अगर देना चाहूँ तो अरुण कुमार अंजापुले कुछ क्षण के लिए नहीं थे, वहां पर भी चोला वीरंस ने अच्छा किया था। तो आइए पहले काउंटडाउन की तरफ चलते हैं, उसके बाद इस प्रश्नों का लगातार उत्तर आप सभी के साथ ढूंढते रहेंगे हम। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मिट्टी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। और इस आसमान को तोलने की गतिविधियों में युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन 2023 मैच नंबर 100 में आप सभी का सुस्वागतम, इस्तकबाल, अभिनंदन, खैर मकदम।
और वार्म वेलकम करना चाहेंगे। इस मुकाबले के U2 होंगे अमर वर्मा और इस घोर संग्राम की जाती है शुरुआत। देखते हैं कि इस युवा कबड्डी सीरीज के सागर में कौन साहिल तक पहुंच पाएगा और कौन अपनी जीत का रौनक नुमा चेहरा पा पाएगा। नवनीत, आपका स्वागत है कॉम्बॉक्स में। शुक्रिया अर्षित। और देखिए यहाँ पर संस्कार आए हैं और ये जो कबड्डी का खेल है हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और चोला वीरंस एक तरफ, चंबल चैलेंजर्स दूसरी तरफ, एक तरफ साउथ की टीम, दूसरी तरफ मध्य भारत की टीम, और भारत जो कि अपने आप में एक संपूर्ण देश, विविधताओं का देश, और यहाँ पर हर तरह के लोगों के लिए स्थान है, हर खेल के लिए, हर संस्कृति के लिए, और कबड्डी उसमें से बेहद महत्वपूर्ण और मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल। बिल्कुल नवनीत, बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत के अगर आप इतिहास की बात करते हैं तो कबड्डी का हमेशा एक बहुत बड़ा रोल रहा है और युवा कबड्डी सीरीज इस बड़े रोल को बहुत अच्छी तरह से निभा रहा है। पूरे ऑफिशियल्स की टीम बात करें, पूरे मैनेजमेंट की टीम की बात करें, या फिर आप चाहे कमेंटेटर्स की बात करें, इंटर्न की बात करें, सभी मेंबर्स की बात करते हैं, फिजियोज की बात करते हैं, बैक स्टेज पर जो काम करते हैं उनकी बात करें, हमारे ब्रॉडकास्टर्स की बात करें, तो सबका एक बहुत ही अनूठा और निरुपम रोल यहाँ पर रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से सबने निभाया है। बट अभी आइए, पहले रेड पॉइंट का इंतजार कर रहा है चंबल चैलेंजर्स। यहाँ शायद अजय मारवी ने पहली रेड लगाई और एक एम्प्टी रेड के साथ वापस आएंगे। तो आज अजय मारवी लेफ्ट रेडर, संस्कार मिश्रा राइट रेडर होंगे। नवनीत, बिल्कुल। और विघ्नेश आए हैं, विघ्नेश मुर्गेशन चोला वीरंस की तरफ से। यहाँ पर देखिए अंदर जाने का प्रयास है, बहुत ही हाई लाइन डिफेंस यहाँ पर खेला जा रहा है। वो नहीं चाह रहे हैं कि किसी तरीके का बोनस पॉइंट दिया जाए यहाँ पर। और आज हमने ब्रीच में नवनीत जैसे बात की कि रेहान शेख लेफ्ट कॉर्नर जो है विघ्नेश मुर्गेसन के विरुद्ध, अरुण कुमार अंजापुली के विरुद्ध कैसा खेल करेंगे। बट संस्कार मिश्रा, अब बहुत अच्छी बात है कि अजय मारवी पर इन्होंने ज्यादा प्रेशर नहीं डाला, स्वयं वहां पर डू और डाई रेड पर गए हैं। और थोड़ा सा जब दुर्गेश होते हैं ये अपने आप को अंडररेट करते हैं, और जब दुर्गेश नहीं होते हैं बहुत अच्छी तरह से ये खिलाड़ी प्रेशर को मेंटेन करता है। बोनस का प्रयास है, 10 सेकंड से कम का समय शेष बचा है, आने दिए। ये तो राइट कवर से अटैक आना ही था, लेफ्ट कॉर्नर से विनीत जिन्होंने पिछले मैच में अपना शानदार हाई फाई बनाया था जब ये खेले थे, आज फिर से एक शानदार शुरुआत की है। संस्कार को बाहर किया है नवनीत। जी, संस्कार वहां पर मुझे थोड़ा सा लेजी नजर आया, वक्त को जाने दिया, 20 सेकंड गुजर गया था और उसका जैसे प्रेशर उन पर आया उस प्रेशर को संभाल नहीं पाए और वहां पर कॉर्नर्स ने अपना काम तमाम कर दिया। संस्कार वहां आउट हो गए। लेकिन यहाँ पर देखना है क्या अरुण कुमार अंजापुली क्या कर पाते हैं। अगर वो आउट हो जाएंगे तो संस्कार इन हो जाएंगे। जी हाँ, अरुण कुमार अंजापुली यहाँ पर अब रेड पर है, राइट रेडर है, डू और डाई रेड है। थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा अंदर जाकर अटैक करना पड़ेगा। क्या इस बार किक लगाने का प्रयास है। बहुत ही अच्छा डिफेंस अभी तक संभले में खेला है। इनकी पोजीशन से एंकल होल्ड का अटेम्प्ट आया था, अच्छा साथ एंकल होल्ड से जरूर बच गए थे, बट अच्छा क्षण यहाँ पर और अच्छा कहीं न कहीं अटैक कवर की तरफ से। अरुण कुमार बाहर जाएंगे तो संस्कार मिश्रा फिर से एक बार अंदर आ जाएंगे। कमाल का डिफेंस दोनों टीमों की तरफ से देखने को मिल रहा है और डू और डाई रेड में दोनों टीमें असफल यहाँ पर रही है। 3.5 मिनट का खेल चले गया है और शायद हर्षित ये गेम स्लो हो सकता है और थर्ड रेड पर खेला जा सकता है। जो चोला वीरंस ये चाहती है नवनीत, उनके पिछले अगर मैं 2-3-4 मुकाबलों का एवरेज देखूं तो वो अधिकतर अपने डिफेंस पर खेलती है। जरूर दूसरे हाथ में कल अरुण कुमार अंजापुली ने बहुत अच्छा खेला। ये गेम चंबल चैलेंजर्स स्लो डाउन नहीं होने देगा। चंबल चैलेंजर्स नंबर 66 एंड 14 ट्रेड यहाँ पर आ चुका है। शानदार रूट देखा, टर्न किया, टंबल किया प्रवीण को और शायद वहां पर विनीत को शिकार बनाया। रेड और अच्छा अटैक वहां पर, बहुत ही अच्छा अटैक। और जब सीखेंगे इस बार राइट कॉर्नर पे टच करने की कोशिश, दुर्गेश साहू पर अटैक किया, दुर्गेश अच्छा पीछे हुए नवनीत और एम्प्टी हैंडेड यहां से वापस गए चोला वीरंस के रेडर अय्यप्पन। बिल्कुल। और अजय यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर देखिए 4 का घर है, एक चेन है और 2 खिलाड़ी सिंगल पकड़ लिया गया है, लेकिन अजय रेंगते हुए मध्य रेखा को क्रॉस कर गए हैं। चंबल चैलेंजर्स मिलेगा नंबर 33 आउट। जी थोड़ा सा एडवांस टैकल था, बॉक लाइन के थोड़ा सा आगे से यहाँ पर टैकल करने की कोशिश की गई थी और शायद वहाँ पर सरन मौजूद थे। कल इन्होंने अच्छे सोलो टैकल्स दिखाए थे, बट ये देखिए बॉक लाइन के कितना आगे से नवनीत, और क्योंकि वहाँ पर सपोर्ट नहीं था और सपोर्ट आने का समय नहीं था, अजय मारवी ने अच्छी तरह से स्क्रॉल किया और आसानी के साथ वहाँ पर मिड लाइन को क्रॉस किया। एक और पॉइंट अजय मारवी के लिए।
जी हर्षित, बहुत ही एडवांस टैकल था। मुझे लगता है कि आपको भी अगर वहां पे पकड़ लिया जाता तो आप भी मध्य रेखा क्रॉस कर लेते। जरूर मैं ट्राई करूंगा एक बार सारन के विरुद्ध, पर जरूर युवा कबड्डी सीरीज के समर एडिशन के बाद। बट यहाँ दुर्गेश साहू ने एक हेस्टी टैकल, ये टैकल की हम इनसे उम्मीदें नहीं रखते हैं इस राइट फ्लैंक के खिलाड़ी से। चोला वीरांस नंबर 4 and 3 आउट। तो दुर्गेश साहू ने गलती को शुरू किया। अनिकेत कायनंडे पुनः एक बार बाहर जाते हुए नवनीत। या और यहाँ पर देखिए विघ्नेश ने क्या कमाल का खेल दिखाया है। जाते जाते दूसरे प्लेयर को भी एक लात मार दिया और वहां से पॉइंट लेकर के आया। संस्कार मिश्रा बहरहाल यहाँ पर 5 का घर है और ये 5 खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं। संस्कार मिश्रा अंदर आएंगे, उन्हें पकड़ा जाएगा। सुंदर सा चक्रव्यूह तो रचा है, लेकिन क्या संस्कार मिश्रा इस चक्रव्यूह में फंसते हैं? क्या आने वाला 10 सेकंड बताएगा। लेकिन संस्कार मिश्रा अपने जूते के धूल को साफ करते हुए, मुझे नहीं पता इतना क्लीन कोट है, क्या वो जूते के नीचे से साफ कर रहे थे? हमेशा थोड़ा सा जो शू का कभी कभी जैसे हम थोड़ा सा तिरछा पैर पड़ता है तो हल्का सा वो अलाइनमेंट जो है नीचे का जोन होता है हल्का सा, शायद उसे थोड़ा सा चेक करते हुए नजर आए संस्कार मिश्रा। जरूर वहाँ पर बिल्कुल आपने सही कहा नवनीत, ये बिल्कुल क्लीन एंड क्रिस्टल वहाँ पर कोट है, बट उतना क्रिस्टल परफॉर्मेंस वो भी नहीं कर पा रहे हैं। इस खिलाड़ी को तमाम मौके मिले हैं, इन्हें नहीं अनिकेत गायनंदे को भी तमाम मौके मिले हैं। सिर्फ कभी कभार इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस आता है, बाकी समय पूरी तरह से शांत रहते हैं। तो अब वो धीरे धीरे बढ़िया प्रदर्शन करके दिखलाना पड़ेगा इस खिलाड़ी को। 4 और 4 ये स्कोर है। संस्कार मिश्रा फिर से एक बार और 6 का डिफेंस यहाँ पर और जी आप संस्कार मिश्रा बोनस का शायद प्रयास किया, क्या बोनस मिला है? जी नहीं मिला है। और संस्कार मिश्रा देखिए एक अच्छे प्लेयर के साथ साथ नवनीत ये बहुत अच्छे इंसान भी हैं। यहाँ पर बहुत ही सहनशीलता के साथ अपनी टीम को लीड करते हैं। इन्हें पता है कि किस टीम के खिलाड़ी से कितनी वार्तालाप और किस अंदाज में करनी है। वो अच्छी तरह से गाइड हो चुके हैं और अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है। प्रदीप साहब जो कि आज कोच जरूर नहीं है चंबल चैलेंजर्स के यहाँ कोर्ट पर मौजूद, बट कोच और कप्तान दुर्गेश के साथ मिलकर ये खिलाड़ी संस्कार मिश्रा जरूर तैयार हुआ है। और कहते हैं ना कि हम सभी को भगवान ने हीरा बनाया है नवनीत, बट हमें अपने आप को और क्लीन करना पड़ता है, यानी कि हीरे की भी चमक लानी पड़ती है ना, वैसे हम सभी को हम में चमक लानी होती है और संस्कार वो अपने आप में धीरे धीरे चमक ला रहे हैं। बिल्कुल संस्कार चमक ला रहे हैं और अजय के साथ फिर से वही हुआ, बहुत ही एडवांस टैकल किया गया और 1 point कॉन्फिडेंस चैलेंजर्स नंबर 14 आउट। पिछली बार लेफ्ट कॉर्नर ने इनको एडवांस टैकल किया था। यहाँ पर प्रवीण डाइव लगाई थी, डाइव लगाई पर पहले यहाँ पर मिड लाइन की तरफ अपना मोमेंटम बना चुके थे अजय मारवी। उसके बाद जरूर और कोशिश की कि क्या 1-2 प्लेयर को और वहाँ पर किक लगा सकते हैं, हैंड टच ला सकते हैं, बट एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर। और अभी राइट कॉर्नर पर कौन खड़ा है मैं वो देखना चाहूंगा नवनीत, क्योंकि 5 का आउट से दुर्गेश मिडल में खड़े हैं। दुर्गेश का मिडल में खड़ा होना मेरे लिए थोड़ा सा आश्चर्यचकित में कर देने वाला क्षण है। मुर्गेशन चोला वीरंस की तरफ से आए हैं, वक्त तकरीबन गुजर गया है और एम्प्टी रेट के साथ इस बार जाना पड़ेगा मुर्गेशन को। तो ये खेल रहता है चोला वीरंस का। चोला वीरंस अमूमन रेड में अपना गेम पूरा डाउन, जैसे कहते हैं ना कि स्लो डाउन कर लेती है, जब तक उनके लिए डुआ डायरेक्ट नहीं आती या फिर जब तक वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होती है, तब तक रेड में ज़्यादा पॉइंट लाने का प्रयास नहीं करते हैं। थोड़ा सा डिफेंस, ट्रकलोड डिफेंस के साथ ये खेलने आती है मैचेस, और डिफेंस इनके पिछले 2-3 मैचेस में अच्छा किया है। क्या आज अच्छा कर पाएंगे? अरुण कुमार अंजापुली, अय्यप्पन, रंजीत रेड में अच्छा कर पाएंगे? मोहनदास विश्व मोहन जरूर नजर नहीं आ रहे हैं, बट अरुण कुमार अंजापुली यहाँ पर आपको नजर आएंगे इस डुआ डायरेक्ट में नवनीत। जी हाँ, 5 नंबर की जर्सी पहने अरुण कुमार अंजापुल्ली लंबे खिलाड़ी हैं और देखिए उनकी नजरें कहीं और है, पैर कहीं और है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जहाँ मुझे खबर है। तो क्या डिफेंस को यहाँ खबर है कि नहीं? 2 point चोला वीरांस नंबर 12 and 88 आउट। वहां पर नहीं थी। और यहाँ देखिए हेमंत नाम के डिफेंडर राइट कॉर्नर पर थे, अजय मारवी पर भी वो किक आई, तो कितना इम्पैक्टफुल, माफ कीजिएगा किक नहीं, वहां पर हैंड टच किया, कितना ज्यादा स्ट्रेच करते हुए हैंड टच किया नवनीत। इससे पता चलता है कि इनको भी टच किया, कॉर्नर को भी टच किया, तो ये दोनों ही बड़े खिलाड़ियों को अजय मारवी और हेमंत दोनों को शिकार बनाया। शिकार वहां पर
जरूर बनाया और संस्कार यहाँ पर शायद Bonus 2 plus पॉइंट 2 लेकर point. के जाएंगे। बोनस प्लस 2 पॉइंट यानी सुपर हिट है। 66 and 11 out. संस्कार मिश्रा इज बैक इन हिज प्राइम फॉर्म। मल्टीपल रेड पॉइंट्स के साथ शुरुआत करते हुए आज के इनके क्रम की देखिए वो बताते हुए कि किस तरह से दौड़कर भाग गए थे यहाँ पर। विनी ने जरूर अच्छा ट्राई किया था पर इतने लंबे हैं और सबसे पहले इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को झुकाया। जैसे कहते हैं ना कि जैसे नवनीत अगर आपने स्विमिंग भी देखा होगा तो हम पहले जो है ना सर नीचे रख के डाइव लगाने का प्रयास करते हैं जिससे कि हम ज़्यादा दूर तक जा पाएं। वैसे यहाँ पर जो अक्सर बुल जो होता है वो अपना सर नीचे करके पहले भागता है फिर स्पीड करता है। वैसे संस्कार मिश्रा ने पहले अपना सर थोड़ा सा नीचे किया और फिर तेजी के साथ वहां मिडलाइन पर रश कर गए, इसलिए उन्होंने कवर के खिलाड़ी को भी शिकार बना लिया। बेहद खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन किया पूरी वहां पर जो अप्रोच थी उनकी साइंटिफिक अप्रोच थी, अपने को सही दिशा दिया, अपने बॉडी को नीचे ले गए और वहां पर उन्हें सफलता मिली। यहाँ पर एम गोपी आए हैं और चंबल चैलेंजर्स की तरफ से यहाँ पर वक्त गुजर रहा है, आराम से गोपी वापस गए हैं। एम गोपी क्योंकि इन्हें काफ़ी सारे मौके मिले हैं। आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी हैं एम गोपी मल्लेपल्ली, जरूर नाम से वो थोड़ा समझ आता है। और आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी जो छत्तीसगढ़ में जाकर बसे हैं, इस खिलाड़ी को बहुत मौके मिले कहीं ना कहीं। इन्होंने अगर एक दो मैचेस को हम छोड़ दें तो उन्होंने अपना अति उत्तम खेल नहीं दिखाया है नवनीत। तो इन्हें जो मौके मिल रहे हैं उसका पूर्णतः फ़ायदा उठाना इस खिलाड़ी को बेहद ज़रूरी है। फ़ायदा उठाने का अर्थ ये नहीं होता कि आप डिफेंस में बहुत ज़्यादा एरर्स करने लग जाएं या फिर बहुत ज़्यादा टूट पड़ें, पर आपको जहां मौका मिले वहां पर आपको अच्छा कार्य करना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना पड़ेगा, बहुत ही पार लाइन आपको कुछ करना पड़ेगा। जी हाँ, संस्कार एक बार फिर से एम्प्टी रेड में गए हैं। पिछले बार इन्होंने सुपर रेड लगाया था, डू और डाई रेड। यहाँ पर अरुण कुमार आए हैं। 8 मिनट से कम का खेल शेष है। यहाँ पर 5 का घर है, पूरे अंदर तक बुलाना चाहिए डिफेंस को। और जिस तरीके का यहाँ पर चक्रव्यूह रचा जा रहा है अरुण कुमार के लिए आसान नहीं होगा। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है प्रेशर बढ़ेगा और जब प्रेशर होता है तो प्लेयर और यहाँ पर गिर गए, कोई मौका नहीं। अरुण कुमार यहाँ पर Rudder out. शिकार हो 1 गए point. हैं। Chambal challengers. सेकेंड टाइम अरुण कुमार अंजापुली वहां पर डू और टाई रेड में आए थे और सेकेंड टाइम उन्होंने अपने 25 सेकंड इधर उधर होने में वहां वेस्ट किए। जरूर 5 का आउट ज्यादा डीप नहीं गए। संस्कार मिश्रा पर किक लगाने का प्रयास किया, अपने एक लेग पर बहुत ज्यादा वेट ट्रांसफर किया और रेहान शेख ने इस बार अच्छा कार्य किया कि उसी वेट पर जाकर उन्होंने डाइव किया, उसी पैर को होल्ड करने का प्रयास। अब डू और टाई रेड उस तरफ थी तो डू और टाई रेड इस तरफ भी होगी। यहाँ पर अजय मारवी अभी तक का इनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, 2-2 पॉइंट की 2 बार रेड लगा चुके हैं। क्या आप कुछ नया कर पाएंगे? एक सुपर रेड आ चुके हैं चंबल चैलेंजर्स के लिए, 2 पॉइंटर अजय मारवी लगा चुके हैं। लेफ्ट टू राइट तेजी के साथ जाने का प्रयास, अय्यप्पन पर किक लगाने की कोशिश की, थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। क्या प्रवीण वहां पर सेल्फ आउट हो गए? आउट ऑफ द बॉन्ड चले 1 गए। point. Chambal challengers. Jersey number 14 out of bond. तो नवनीत यहाँ पर प्रवीण आउट ऑफ द बॉन्ड चले गए थे। यहाँ देखिए उनका लेफ्ट लेग पूरी तरह पीछे चला गया। जी हाँ, और उसके बाद वो और पीछे जा करके बचना चाह रहे थे अजय से। जी हाँ, अजय मारवी से बचने जा रहे थे। प्रवीण आईएनआर की फॉर्म तो कहीं गुम रही है। 1 point. Chola मुझे Veerans. लगता है कि Number 88 out. मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढनी पड़ेगी इनकी फॉर्म को, क्योंकि उस तरह से प्रदर्शन का नहीं रहा है। यहाँ विघ्नेश मुरुगेसन की जो स्किल है, टॉप मोस्ट स्किल का टॉप मोस्ट और ऑप्टिमम परफॉर्मेंस कहता हूँ मैं इसे। बहुत अच्छा स्ट्रेच करते हैं, राइट कवर पर बहुत अच्छा अपना एंगल बनाते हैं और हैंड टच करते हैं। मजेदार, अद्भुत, और 1 पॉइंट यहाँ अपनी टीम को लेकर आते हुए। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए संस्कार मिश्रा 4 का घर है यहाँ पर और यहाँ संस्कार उस 4 के घर को तोड़ नहीं पाएंगे और चारों के चारों टूट पड़े हैं संस्कार पे। Rudder out. यहाँ पे कोई 1 मौका नहीं point. उनके पास Chola Veerans. और यहाँ पर संस्कार 1 मिश्रा। पॉइंट मिलेगा। जी हाँ, जी नवनीत, संस्कार मिश्रा यहाँ देखिए Time out. कहाँ Chola भागते जा Veerans. रहे थे। हल्की सी उन्होंने देखा कि जैसे लेफ्ट कॉर्नर आ रहे हैं
विनीत ने जैसे देखा कि चलिए वहां उनके पास मौका बन गया। संस्कार मिश्रा लंबे हैं, अपनी हाइट का अच्छा उपयोग करते हैं, पर यहाँ हाइट का उपयोग करने का कोई मौका नहीं दिया। நல்லா पीला साहब பண்ணாடி सुनते हैं कि वो ஒரு क्या லோனா कर रहे போற வெயிட் பண்ண அவன் ஹைட்டா வரும் வெளியே அவன் அஃபென்ஸ் கிடையாது அவன் தெத்தினே இருக்கிறான் கடைசி வரைக்கும் தொடல போற நம்மளே தான் விட்டான் புரியல அவன் வந்தானா உள்ள வந்தானா பண்ணு இல்லைன்னா கையில இருந்து போறா நீ கையில நின்னா அவனை கூட நின்று காலில் கூட சொல்றது நீயே வச்சுக்கு அப்பா நீ வேற ஸ்லோ ஈத்து ஆடு நாளையோ புரியுதா அவனுக்கு தேட்டர் போறேன் ஆடு। ओके तो पी राजा साहब ने यही कहा होगा कि संस्कार मिश्रा को भी धर चुके हैं और हमें गलतियां कम दोहरानी हैं। रेड में अय्यप्पन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या रेड लगाने के लिए कहा गया होगा, बट यहाँ 5 का हाउस है, उतना आसान होगा नहीं अय्यप्पन के लिए, क्योंकि अब पहली डू और डाई रेड चोला वीरन से ही आएगी। तो अब देखते हैं कि अय्यप्पन क्या कुछ प्रयास करेंगे। 5 के हाउस में दुर्गेश साहू अभी तक शांत रहे इस मैच में, और अय्यप्पन की जंप्स बहुत अच्छी है, इसके पास फुर्ती बहुत है, इस खिलाड़ी के पास अधिक तेज़ी भी है, पर तेज़ी को कंट्रोल करते हुए कहीं न कहीं इस खिलाड़ी को एस्केप रूट को भी समझना बहुत ज़रूरी होगा। नवनीत जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी होगा। और अजय 5 का यहाँ पर डिफेंस है, और अजय के लिए ये आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही ध्यान से यहाँ पर डिफेंस कर रही है चोला वीरन्स की टीम, और अजय इस बात को जानते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करने के बजाय वो वापस चले गए हैं। और कभी कभी जो कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वो प्रिवेंटिव मेजर लिया था अजय ने। जी हाँ, वहाँ पर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब देखते हैं विघ्नेश मुरुगेसन क्या यहाँ पर ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश करेंगे। पिछली बार जरूर पॉइंट लेकर आए थे, तो चोला वीरन्स उनके खुद के खेमे में भी और विपक्षों को भी वहाँ पर डू और डाई रेड पर खेलने पर मजबूर कर देता है। और देखिए लगातार इनकी अगर मैं कई हाफ्स के स्कोर की बात करूँ नवनीत, तो यही के आसपास रहता है वहाँ पर। पहला हाफ बड़ा सदी हुई सटीक शुरुआत करता है और अच्छी सोच भी है। कल थोड़ा सा इससे भिन्न था, कल अरुण कुमार अंजापुली ने बहुत ही अच्छा क्रम को खेला, और नीलगिरी नाइट्स और चोला वीरन्स का जो पहले भी इन दोनों की टीम से गलती हुई थी मोमेंटम को स्लो डाउन करने की, वो नीलगिरी नाइट्स नहीं करना चाहता था, बट बहुत अच्छी वापसी चोला वीरन्स ने हाफ में की। ऑल आउट होने के पश्चात एक दफा स्कोर का डेप्थ बहुत ज्यादा था, बट उस डिफरेंस को कम किया। बट अब अय्यप्पन देखते हैं कि क्या अपनी स्पीड का प्रॉपर यूज करने देंगे अपने आप को। एम गोपी मल्लपल्ली थोड़ा बच के रहिएगा, रेहांचे की तरफ ज्यादा चले गए हैं। राइट विडर ऑलवेज टर्न राइट हम कहते हैं, बट जब तक राइट टर्न वो करते दुर्गेश का अच्छा डैश आ चुका था नवनीत। जी हाँ, स्पीड में तो गए थे, पर वहाँ पर ज़्यादा अंदर घुसे और फिर जा करके डैश आया, वहाँ पर फ्रंट ब्लॉक आया, और उसका जवाब अय्यप्पन के पास बिल्कुल नहीं था। 11 और 8, लेकिन इस बार देखिए अजय मारावी गए हैं डू और डाई रेड, और क्या जवाब रहता उनका। मुझे लगता है कि पहले ही कुछ करना चाहिए। अब अजय मारवी एक बार फिर से ये डू और डाई रेड में है, क्या ये कमाल कर पाएंगे। पिछली बार प्रवीण राइट कॉर्नर पर सेल्फ आउट हो गए थे। अब एम गौतम वहां पर है, क्या एम गौतम की तरफ जाने का प्रयास करेंगे, क्या विनीत की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। तेजी के साथ सिर्फ राइट लेफ्ट स्पीड ड्रिल्स एंड इट ऑलमोस्ट किल्स द डिफेंस। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। सबसे पहले लेफ्ट इन पर वहां पर जाकर टच किया, लेफ्ट कॉर्नर ने टाइप करने की कोशिश की, पर दोनों को शिकार बनाते हुए विघ्नेश और विनीत डबल वी को बाहर किया जुआ से अजय ने। प्लीज चंबल चल चोला वीरन्स प्लीज कम। 16 in 33 out रेड। अपनी तारीफ है काबिल परफॉर्मेंस यहाँ पर, और दिलों पर ये जगह बना रहा है खिलाड़ी अजय मारवी जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अब रेहान यहाँ पर होंगे, राइट कोवा हेमंत का आज के दिन का सबसे अमेजिंग कह लीजिए और सबसे बेहतरीन कह लीजिए, सिंगल थाई पर गए। मोहनदास विश्व मोहन को अभी अभी अंदर बुलाया गया था, सेटल होते वो थोड़ा सा अपनी वार्म अप करते, उससे पहले हेमंत का वो अटैक आया। बहुत अच्छी तरह से समझा था डिफेंडर ने, और अब ऑल आउट हो जाएगी टीम। चोला वीरन्स ऑल आउट होती हुई पहले हाफ में। जी हाँ बिल्कुल, और मैं उस रेड की तरफ जाना चाहूंगा जो अजय मारावी ने लगाया, और एकदम 1 या 2 सेकंड बचा था, और जब वो मिड लाइन को टच कर रहे थे तो मैंने शून्य वहां पर देखा। सब्स्टिट्यूशन चोला वीरन्स नजदीकी मामला था। 33 in 55 आउट। एकदम शायद निक ऑफ द टाइम में वो मिडिल लाइन को टच कर गए थे। जी हाँ, बहुत तेज। अक्सर एक प्रोवर्ब है नवनीत, शायद इंग्लिश में कि इन अ न्यूयॉर्क मिनट, बट कबड्डी में इन अ न्यूयॉर्क सेकंड हमें कहना पड़ेगा। वो वहां पर बहुत ही जिफी सेकंड में गए थे,
यहाँ एक अच्छा क्रम करते हुए नजर आ रहे हैं, सही तरीके से बोनस लिया। कल भी अरुण कुमार अंजापुली ने ऐसा ही बोनस के साथ अपनी टीम को बैकअप कराया था। अब देखते हैं कि क्या फिर से वही कारनामे को वापस रख सकते हैं। संस्कार मिश्रा अधिकतर अजय मारवी को आज रेड लगाई है। ये बहुत ही अच्छी सोच यहाँ पर कि युवा खिलाड़ी को पूरी तरह से वो मौका मिले सेटल डाउन होने के लिए। और पर चंबल चैलेंजर्स क्योंकि पिछला मैच आ रहा है दुर्गेश कुमार की एब्सेंस में, हम्पी हीरो से उनका आंकड़ा बहुत ही तेजी के साथ बढ़ा था, बहुत अच्छा प्रदर्शन था, डबल सुपर 10 वहां पर नजर आया था दोनों ही टीमों से। एक हम्पी हीरो से गगन ने बनाया था, दूसरा दुर्गेश ने बनाया था। अभी चंबल चैलेंजर्स के लिए अजय मारवी अगर मैं बात करूं तो नवनीत 7 रेड पॉइंट वो ले चुके हैं अपने खेमे में। अजय मारवी का शानदार प्रदर्शन जारी है। और यहाँ पर हमसे ये भी प्रश्न पूछा गया था कि क्या अरुण कुमार अंजापुली पर बेहद ज़्यादा डिपेंडेंट है चोला वीरंस, तो इसमें आप क्या कहेंगे हर्षित? जी नवनीत, एक अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, मैं अरुण कुमार अंजापुली और एम गौतम इन दोनों पर कहीं ना कहीं ओवर डिपेंडेंट है ये टीम। अब ये अच्छा हुआ है कि विनीत अच्छा कर रहे हैं, पिछले मैच में इन्होंने अच्छा किया, पर अगर गौतम और अरुण नहीं चलते हैं तो टीम बहुत पिछड़ जाती है। कल हमने जीत देखी अगर चंबल चैलेंजर्स की, तो उसमें बहुत अच्छा किया एम गौतम ने भी और अरुण कुमार अंजापुली ने भी, तो इन दोनों पर थोड़ी सी ओवर डिपेंडेंट है। और संस्कार मिश्रा शायद कुछ समझाते हुए अजय कुमार वार्मी को, एक अच्छी बात है कि अजय मारवी सीखेंगे और कभी कभी समझाते हैं बड़ी जब सीनियर्स, तो उसे अच्छी तरह से लेना चाहिए। पर यहाँ 17-9 का स्कोर है नवनीत। पहले हाफ में 10 रेड पॉइंट्स चंबल चैलेंजर्स ने प्राप्त किए। कटसी यहाँ पर रहे पूरी तरह से अजय मारवी। चोला वीरंस को मिले 7 अंक, बट डिफेंस में चंबल को 4 मिले, चोला को मिले सिर्फ 2। एक बार ऑल आउट भी कर चुके हैं चंबल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप सभी के साथ वापस मिलेंगे, बने रहेगा हमारे साथ इस मैच नंबर 100 में। तो ये मैच नंबर 100, ये 100 ही मुकाबला है और ये सफरनामा बड़ा अद्भुत रहा है। क्या संग्राम देखा है, क्या घोर प्रतिद्वंदता का मुकाबले यहाँ पर देखिए। ये 100वें मुकाबले की कहानी के पहले हाफ की अगर हम बात करें तो चोला वीरंस ने शुरुआत की थी कि क्या वो एक बार फिर से चंबल चैलेंजर्स जैसी कड़ी टीम को कड़ा चैलेंज यहाँ पर दे सकते हैं, बट उसके पश्चात अजय मारवी की एक्सीलेंस नजर आई, थोड़ी सी ओवर गलतियां नजर आई राइट कॉर्नर से, लेफ्ट कॉर्नर से चोला वीरंस के मल्टीपल पॉइंट्स आए। संस्कार मिश्रा ऑलरेडी एक सुपर रेट लगा चुके हैं और ये वो सुपर रेट थी जहां बोनस प्लस 2 अंक मिले थे। एम गौतम, अरुण कुमार अंजापुली, थोड़ी सी इन पर ट्रक लोड ऑफ बर्डन है, तो उस ट्रक लोड ऑफ बर्डन को अच्छा साथ निभाना चाहेंगे बाकी खिलाड़ी चोला वीरंस के। और क्या दूसरे हाफ में जो 8 पॉइंट की लीड चंबल चैलेंजर्स के पास है, उस बड़ी लीड को बड़ी छोटी और बौनी बना सकते हैं। आइए मेरे साथ कॉम बॉक्स में जुड़ने जा रहे हैं नवनीत, आपका स्वागत है। शुक्रिया हर्षित। और बेहद रोमांचक खेल देखने को मिला फर्स्ट हाफ में, लेकिन लास्ट में चोला वीरंस एक बार ऑल आउट हो गई, वहां पर पिछड़ गई टीम, जिसके कारण ये जो स्कोर लाइन है 17 और 9 का हमें देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से चोला वीरंस ओवरली डिफेंसिव खेल खेलती है, अगर उस तरीके का खेल खेलेगी तो ये चंबल चैलेंजर्स को जीत वो गिफ्ट में दे देगी, क्योंकि पॉइंट्स यहाँ पर लाना होगा सेकेंड हाफ में, अदरवाइज कुछ होने जाने वाला नहीं है, मुझे जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि पॉइंट्स यहाँ पर गुच्छे में लाना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से बसंत ऋतु की अगर बात करता हूँ नवनीत, बसंत ऋतु में पतझड़ जब यहाँ पर एक साथ पत्ते बहुत ज़्यादा जड़ते हैं, उसी प्रकार से गुच्छों में यहाँ पर पतझड़ की तरफ पॉइंट लाना होगा, चंबल चैलेंजर्स को दबाना होगा, गिराना होगा, ऑल आउट की तरफ धकेलना होगा। और उस ऑल आउट की तरफ धकेलने की शुरुआत की है विनीत ने, एक शानदार लेफ्ट कॉर्नर से अटैक, एंकल्स पर गए। संस्कार मिश्रा जहां थे वहीं के वहीं स्तब्ध रह गए। ये स्तब्ध रह गए विनीत, यहाँ पर संस्कार को कोई मौका नहीं दिए। और इसी वक्त यहाँ पर अगर अरुण कुमार अंजापुली कुछ पॉइंट्स ले आते हैं तो शुरुआत शानदार हो जाएगी। डिफेंस में तो शुरुआत अच्छी हो ही चुकी है, क्या रेडिंग में भी कुछ यहाँ पर कर सकती है चोला वीरंस। अरुण कुमार के पास 4 पॉइंट ऑलरेडी है, यहाँ पर 6 का डिफेंस है, बोनस भी खुला हुआ है।
और जंप लगाया, लेकिन अरुण कुमार ने Red यहाँ out. पर 1 समर्पण point. कर दिया है। Chambal challengers. और इसका मतलब ये है कि दूसरी तरफ जो संस्कार मिश्रा आउट हुए थे वो वापस आ जाएंगे। जी हाँ नवनीत, और मेरे लिए टैकल सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन वाला टैकल था। जिस प्रकार से राइट कवर से थाइस पर गए हेमंत, डिफेंस का बदला डिफेंस से लिया है यहाँ पर, और ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, पत्थर का जवाब ईंट से दिया है। जो भी वो कहावत है उससे हम पूरी तरह से यहाँ पर रिक्रिएट करते हुए नजर आए हैं। बट यहाँ अजय मारवी और नवनीत, चलिए अभी क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, थोड़ा सा मैं आपसे आपके बारे में जानूंगा। और यहाँ 2 points. पिछली बार Chambal challengers. कवर को देखते हुए Number 33 and 14 out. और कहीं ना कहीं अजय मारवी की शरण में सिर्फ चले गए थे, क्योंकि अजय मारवी ने अच्छा एस्केप करते हुए मिड लाइन को क्रॉस किया, थोड़ा लेट आया वो सपोर्ट। बिल्कुल, सावन का महीना है, बारिश का महीना है और बारिश चारों तरफ हो रही है। अजय यहाँ पर पॉइंट्स की बारिश कर रहे हैं। जी अजय बिल्कुल पॉइंट्स की बारिश कर रहे हैं। पर नवनीत थोड़ा सा, क्योंकि आपको ऋतुओं के बारे में बहुत अच्छे से पता है, तो क्योंकि मैंने अभी बसंत ऋतु के बारे में बात की थी, तो क्या नवीन सावन के महीने को वहाँ पर बसंत कब आती है, क्या शायद वो किस समय पर आती है अमूमन बसंत ऋतु, ऑटम सीजन यानी कि ऑटम सीजन कब? अब अगर आप क्लियर ठंडे बारिश की बात करें तब तो हम सबको पता है अक्टूबर से दिसंबर आएगी विंटर्स, अप्रैल से जून रहेगी समर्स, और बारिश का भी महीना है, यानी कि मार्च के आसपास वो पतझड़ का मौसम रहना चाहिए। जी वैसे शायद अगर मैं स्प्रिंग सीजन यानी कि बसंत ऋतु की बात करूं तो मुझे शायद लगता है कि वो शायद फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास अमूमन रहती है, जहाँ पर वो थोड़ा सा बदलाव होता है। बट बिल्कुल आपने सही कहा नवनीत कि अगर आप मूसलाधार बरसात की बात करें तो यही कुछ महीने हैं अगस्त और नवीन, पूरे भारत में ना अभी तो वो सिर्फ बरसात पर, और कई सारी नई झीलें बन गई, कई सारे नए गड्ढे बन गए हैं, पर हम चाहेंगे कि ये इस कबड्डी के ट्रेल में यहाँ पर कहीं भी वो गड्ढे आपको नहीं नजर आएंगे, क्योंकि इस बार संस्कार मिश्रा ने को शुरू किया और समाप्त किया लेफ्ट कवर ने। मोहनदास विश्व मोहन लगातार रेज में बाहर जाते हुए, बिल्कुल किस तरीके से उनके एंकल को पकड़ लिया गया और फिर जाके बाकी खिलाड़ियों का सपोर्ट आया। और बारिश की बात करें तो दो समय जनरली बारिश आती है। वैसे तो पूरे भारत में जून से बारिश की शुरुआत हो जाती है, जिसे साउथ वेस्ट मानसून भी कहा जाता है, लेकिन एक और है जो कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आता है, और वो सिर्फ तमिलनाडु में होता है, जो कि चावल उगाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, और वो दिसंबर और जनवरी के महीने में आता है। और अगर सही से बात करिए पुरातन समय की तो वो चोला वीरंस का जो टेरिटरी था तमिलनाडु, वहाँ पर वो बारिश होती है दिसंबर और जनवरी के महीने में। वाह नवनीत, तो बहुत सारी जोग्राफिकल नॉलेज हमें आपसे मिलती है, कई सारी चीज़ों को हम एक्नॉलेज करते हैं आपके साथ। बट अभी आइए, इस खिलाड़ी क्या अपने आप को एज अ रेडर एक्नॉलेज कर पाएगा, मुझे लगेगा लेफ्ट कॉर्नर अटैक एंड गौतम का स्ट्रॉन्ग डैश यहाँ पर सुपर टैकल करते हुए चोला वीरेंस। ये बहुत अच्छे संकेत चोला वीरेंस के, वो मैच में धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, और पिछले कई मुकाबलों से नवनीत सुपर टैकल का आंकड़ा चोला वीरेंस का आगे बढ़ा है। 12 और 21 यहाँ पर मिरर इमेज हमें देखने को मिल रहा है। 15 मिनट का अभी भी खेल बचा है विघ्नेश मुरुगेशन, और यहाँ पर मुझे लगता है कि 1 point चोला वीरांस, नंबर 88 आउट। बिल्कुल, आपने जो दृश्यों की यहाँ पर बात की, यहाँ एक पॉइंट मिलेगा चोला वीरेंस को। यहाँ पूछ रहे थे चंबल चैलेंजर्स कोच क्या कि रिव्यू की तरह जाएं यहाँ से, पर ये देखिए जिस तरह से विघ्नेश मुरुगेशन ने अपना हाई फ्लाई दर्शाया, बहुत तेजी के साथ डाइव लगाई मिड लाइन को क्रॉस करने में। उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड या फिर शायद राइट हैंड को एक दफा लॉबी में रखा था, उसके बाद मिड लाइन को क्रॉस किया था, और इसलिए जब वहां पर ध्रुमित ठक्कर ने पूछा कि क्या रिव्यू के लिए जाएं, तो प्लेयर ने खुद ने मना कर दिया। एक अच्छी सोच यहाँ पर, एक अच्छा मैनेजमेंट आपको मैनेजर और टीम के खिलाड़ियों में नजर आता हुआ नवनीत। बट एक अच्छा आंकड़ा बताता हूँ नवनीत, क्योंकि बहुत सारे आंकड़ों की बात कर रहे हैं अभी, हमने चोला वीरेंस के सुपर टाइगर्स के आंकड़ों की बात की। जरूरी आंकड़ा कबड्डी के खेल से निर्धारित नहीं है, आसपास नहीं है, पर आज मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें ये आंकड़ा था नवनीत की पिछले कई वर्षों में यूएन का वो आंकड़ा था नवनीत की लगभग 15 मिलियन परिवार जो हैं वो पॉवर्टी लाइन जो भारत में थे उससे अब ऊपर आ चुके हैं पिछले कई सालों में। यानी कि धीरे धीरे अब वो जो पॉवर्टी लाइन के बिलो जो हमारे
बहुत सारे परिवार हुआ करते थे भारत में, वो अब धीरे धीरे ही सही पर पॉवर्टी लाइन के बहुत ऊपर आ रहे हैं। और शायद वो ट्रिपल डिजिट आंकड़ा था नवनीत, जहां पर इतने सारे मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए पिछले तमाम वर्षों में। जी हाँ, 15 मिलियन, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख लोग, 15 मिलियन में बात करेंगे तो 1.5 करोड़ लोग। और जनरली ये जो आंकड़ा है करीब करीब भारत में 30% तक रहता है। तो अगर प्रतिशत की बात करें तो कम से कम 2% से कम होना चाहिए जिस तरीके का आंकड़ा आप दे रहे हैं। और मैंने डेटा देखा नहीं है, पर पॉवर्टी लाइन की बात करें तो बहुत सारे पॉवर्टी लाइन अक्सर रहते हैं भारत में। एक तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ऑफिसर थे और वो उन्होंने पॉवर्टी लाइन बनाई थी कि क्या पॉवर्टी लाइन होना चाहिए भारत में। बात चर्चा करेंगे बाद में। अजय मारा भी यहाँ पर पकड़े गए हैं। रनर आउट, 1 बहुत पॉइंट अच्छा चोला वीरांस। राइट कॉर्नर से यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ गए और अजय मारवी अभी तक वहां पर डू और डाई में बड़े सक्सेसफुल साबित हो रहे थे। इस बार फिर से उन्होंने सेम स्ट्रेटजी को अपनाया, थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो गए थे। किक आई बट किक के साथ साथ ही जो डाइव थी वो कहीं ना कहीं को रिलेट अच्छी की और जो एंकल था वहां पर सीधा उनके ऊपर टूट पड़े थे राइट कॉर्नर। तो एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर नजर आता है। वो थोड़ा सा इंजर्ड हुए हैं। जी नहीं, हम नहीं देखना चाहते कि चोला वीरन से और कोई इंजरी वहां पर हो। विनीत ही वहां पर क्या शायद मौजूद थे, तो राइट कॉर्नर भी खेल लेते हैं, लेफ्ट कॉर्नर भी खेल लेते हैं। एक और बार टू और डायरेक्ट है। अरुण कुमार अंजापुली, रेहान शेख आज अच्छा किया इन्होंने काम। इनका बेंचमार्क सिग्नेचर स्टेप है ये, जब डाई लगाते सिंगल थाई पर। इस बार अरुण कुमार अंजापुली शायद उसके लिए तैयार नहीं थे और इसलिए उनका शिकार बना लिया नवनीत उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल बना लिया और अंजापुली वहां पर कोई मौका नहीं मिला। यहाँ पर एम गोपी आए हैं 22 और 14, चंबल चैलेंजर्स 22, चोला वीरंस 14। और पॉवर्टी लाइन की बात कर रहे थे तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन की बात करेंगे तो शायद $1.9 जो कमाता है, विच मीन्स 150 रुपए प्रतिदिन। उससे ऊपर अगर कोई कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। जी हाँ नवनीत, वो अलग अलग क्रम होते हैं। यहाँ अनुज सैनी कुछ क्रमों की बात करते हैं, पर नवनीत जरूर मैं मेरे आंकड़े को वहाँ पर पार्डन यहाँ पर रेक्टिफाई करना चाहूँ। वो 415 मिलियन वो आंकड़ा था, पर यहाँ शायद जर्सी पुल का आंकड़ा साबित हो सकता है। रनर आउट, मिडलाइन के आसपास वो जर्सी पुल नहीं थी और जब पीछे होती है। टीवी एम्पायर चोला वीरंस challenges Jesse pulling Raider safe 1 point. Audition Raider out. Please review. वाह, क्रिस्टल एंड क्रियल आवाज में यहाँ पर कहा था मोहन गौड़ा साहब ने। दुर्गेश के इस ऊपर से फ्रॉक जंप लगी है, एक्सीलेंट। सबसे पहले तो ये जंप बड़ी काबिल तारीफ थी। यहाँ क्या एम गोपी ने वो जर्सी को पुल किया और वो इतना इम्पैक्टफुल था कि वो मिडलाइन की तरफ नहीं जा पाए नवनीत। ये इसका निर्णय तो जरूर रामवीर साहब देंगे, बट उनके पश्चात उनके बारे में बहुत सारी वार्तालाप यहाँ पर की जाएगी। क्या हाथ को पकड़ पाए थे, हैंड होल्ड कर पाए थे, क्या जर्सी यहाँ पर खींची गई थी और उसके पश्चात किस तरह से काम वहाँ पर किया गया था। बट दुर्गेश के ऊपर तो जो जंप लगाई ना, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट जंप थी नवनीत अभी तक इस एडिशन की। बहुत ही बढ़िया काम यहाँ पर, बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए निश्चित रूप से। और 22 और 14 यहाँ पर टीम रिव्यू लिया गया है। जर्सी पुलिंग की बात चल रही थी। 10 मिनट 34 सेकंड ये Review successful. Raider safe 1 point. Chola Veerans. Jersey number 8 out. जी हाँ, यहाँ देखिए बहुत ही अनकैनी वहां पर जंप थी और बहुत ही प्रिडिक्टिव यहाँ पर, यानी कि ऐसे हम जंप बहुत अमूमन देखते नहीं है। और देखिए क्या शानदार, क्या जानदार जंप वहां पर दुर्गेश के ऊपर से लगाने का ग्रीन कार्ड, जर्सी नंबर 8 पुल हुए और वहां जर्सी पुल मिलेगा। कह रहे थे संस्कार के, चलिए आप रिव्यू ले सकते हैं, उसके लिए लीजिएगा। एम गोपी यहाँ पर बाहर भी जाएंगे और साथ ही साथ उन्हें ग्रीन कार्ड भी दिया गया है नवनीत। तो क्लियर थोड़ा सा दिखा था कि जब उन्होंने जंप लगाने के बाद जा रहे थे जब विघ्नेश, तो जर्सी को पुल किया गया था एम गोपी की तरफ से। और यहाँ पर संस्कार मिश्रा, रनर आउट, 1 पॉइंट चोला वीरांस। चोला वीरंस को 1 पॉइंट मिलेगा, उससे खुश होंगे। और 10 मिनट का खेल बचा है, 6 पॉइंट्स का यहाँ पर डिफरेंस है। और जब ये मैच की सेकेंड हाफ की शुरुआत हुई थी तो स्कोर था 17 और 9, यानी कि 8 पॉइंट का डिफरेंस था।
और यहाँ पर जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले आपके पश्चात 17-9 का स्कोर था, पर अभी 22-16 का स्कोर है। और आज विनीत चोला वीरेंस के डिफेंस में नवनीत 7 टैकल पॉइंट देखते ही देखते लीजिए। विनीत राइट कॉर्नर से भी अटैक कर रहे हैं, लेफ्ट कॉर्नर से भी अटैक कर रहे हैं, पर अब रेहान शेख पिछली बार अरुण कुमार अंजापुली को उन्होंने शिकार बनाया था और अरुण कुमार अंजापुली के पिछले 3 डू और डायरेक्ट बड़ी वहां पर नाखुश कर देने वाली रही है। अब दुर्गेश साहू फिर बॉकलाइन को पार करेंगे, शायद जल्दी आएंगे, अब न्यौता देंगे चोला वीरेंस को डू और डाई पर खेलने का। बट 7 अंक और सबसे ज्यादा इंडिविजुअल अंक अभी तक टीम के लिए उन्होंने प्राप्त किए। 4 अरुण कुमार अंजापुली को मिले हैं, 4 विघ्नेश मुरुगेसन को मिले हैं। बट अगर आप बात करें बाकी खिलाड़ियों की तो चारों खिलाड़ी शरण अय्यप्पन, गौतम और प्रवीण कुमार अय्यनार और मोहनदास विश्वमोहन ने खाता भी नहीं खोला है नवनीत। तो हम जो ओवर बर्डन की बात कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं वो ओवर बर्डन विनीत पर रहा है। टाइम आउट नवनीत, सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं पी राजा साहब। इसके बाद अपना आएगा, इसके बाद एक और है, इसके बाद आएगा उसकी रेड आएगी। हाँ हाँ नहीं कहाँ आएगी पहले तो ஆட விட்டுலாமா, வெயிட் பண்ணி ஆடலாமா சொல்லு. அவன் ஒரு அப்பன்ஸ் இறக்கிறானு, அவன் ஒரு அப்பன்ஸ் வந்துக்கிறான்டா, அன்மாம்பில் வருவான்டாப்பா, தேர்ட் ரைடு வருவான், வெயிட் பண்ணி ஆடு, அது மாரி ஆடு, யோசிச்சு ஆடு. और क्या अब यहाँ से चंबल चैलेंजर्स वॉबल कर सकता है, क्या लड़खड़ा सकता है यहाँ से चोला वीरेंस? एक बार फिर से विघ्नेश मुरुगेसन होंगे। शायद कोच ने कहा होगा कि इस रेड में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगली रेड हमारी डू और डाई रेड है। कोशिश कीजिएगा इस रेड में थोड़ा सा टीज कीजिएगा, डिफेंस को डिसेप्टिव परफॉर्मेंस दर्शाइएगा। विघ्नेश एक बार फिर से तेजी के साथ नजर हो रहे हैं, दोनों साइड पर जाओ तो ध्यान से चाहिएगा। रेहान शेख और दुर्गेश साहू की जोड़ी, दुर्गेश साहू ने देखा कि जैसे विघ्नेश मुरुगेसन थोड़ा सा उन्हें पीठ बिठाकर भाग रहे हैं, शानदार डाई वाई दोनों एंकल पर अच्छी ग्रिप बनाई और रेहान ने आते ही डायरेक्शन को बदला। सबसे अटमोस्ट वर्क होता है किसी साथी डिफेंडर का कि अगर रेडर मिडलाइन की तरफ बढ़ रहे हो तो उनकी डायरेक्शन को बदल दीजिए। अनिकेत गायनेंडे का भी अच्छा साथ नवनीत, ये बड़ा सुपर टैकल यहाँ पर चंबल चैलेंजर्स के लिए। जी अब मुझे अनिकेत का लगा कि लास्ट में जब आप होता है कि पार्टी हो रहा है और कोई चीज खत्म हो रही है तो आप भी उसे खाने आ जाते हैं जल्दी से। अनिकेत का प्रदर्शन मुझे वैसा ही कुछ लगा वहां पर। जी नवनीत, क्योंकि केक कटेगा तो सब में बटेगा। पर अब मुझे लगा कि इस रेड में नवनीत, क्योंकि 4 खिलाड़ी मौजूद है चंबल चैलेंजर्स, तो क्या एक सब्स्टिट्यूशन कर लेना चाहिए था, उदय कुमार पार्थे को बुला लेना चाहिए था, दूसरी रेड उनसे ही करा लेनी चाहिए थी, क्योंकि आप सीधे अब उदय कुमार पार्थे को डू और डाई रेड में भेजेंगे। हालांकि वो हैं डू और डाई स्पेशलिस्ट, पर अगर वो सीधा आएंगे तो जरूर थोड़ी सी मुश्किलात उन पर बढ़ेगी। अब मुश्किलात अनिकेत गायनेंदे अपने आप को पीछे नहीं खींच पाए और यहाँ उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन चंबल वीरेंस चैलेंजर्स के लिए यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण 17 है इन 88 आउट। चंबल चैलेंजर्स को एक बार ऑल आउट किया जाए इस वक्त। तो हम जिसकी बात कर रहे थे उदय कुमार पार्थे, क्या इस उदय का आज यहाँ पर क्रम उदय होगा? बोनस का प्रयास किया है, डाइसी लगा मुझे यहाँ से। प्रवीण के पास जा सकते हैं, प्रवीण थोड़े से एरर प्रोन है, वो आपके ऊपर जरूर डाइव लगाएंगे, तो थोड़ा सा एक बार राइट कवर को अटैक कीजिए। पर अगर प्रवीण की अटैक की बात करें उससे पहले नंबर 33 शरण मुरुगन आज कहीं न कहीं बिल्कुल इफेक्टिव नहीं रहे और ये देखिए खराब टैकल, अकेले गए, सोलो गए, एडवांस टैकल के लिए गए और मिडरेव पर नहीं, थोड़ी सी लोअर बॉडी पर डैश के लिए गए, इसलिए अपर बॉडी से पूरा मौका मिला उदय को वहां पर मिड लाइन क्रॉस करने के लिए। नवनीत, इनका आंकड़ा मैं बताऊं, इनका डू और डाई में आंकड़ा बहुत ही अद्भुत है। டைம் கம்மி, டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, புரியுதா? எது பண்ணாலும் தெளிவாக பண்ணு, புரியுதா? யாரும் எல்லாம் 5 பேர் உன்னை ஆட முடியல, அங்கே 5 பேர் ஆட முடியல, ஒரு வாட்டி பவுன் டாஸ் விட்டு காலம் கழிச்சு விடு, டயர்டாகணும், அதுக்கப்புறம் கூட ஆகும், புரியுதா? யோசிச்சு விளையாடு, விக்கியா யோசிச்சு போய் அந்த மூளைக்கு போவாரா, மூளைக்கு போனால் எடுக்க இங்கேயே ஆடுற, சந்தில் பூந்து ஓடியா, கையை பவராக வை, ஜம்பில் வா, உன் ஸ்கில்ல பண்ணு, ஓடாதா, ஒன்னா மாட்டிக்கிறான் அந்த இடத்துல. ஏய் தம்பி நித்துறா, உனக்கு காலில் அவன்கிட்ட சொல்லு, நான் பண்ணாவா இல்லைன்னா வராதான்னு சொல்லு, இல்லைன்னா மேட்ச் மாறிடும், புரியுதா? மேட்ச் லோனா நம்ம போட வேண்டியது எல்லா வாட்டியும் சான்ஸ் இருக்கு, ஆடு। ओके और यही शायद कहा गया है कि टाइम को वेस्ट नहीं करना है।
टाइम यहाँ से बहुत ही जरूरी है और टाइम बहुत कम बचा है इस मुकाबले में, लीड थोड़ी सी बढ़ चुकी है। सो जहां हमें जो करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा काम रहना है, थोड़ा सा बेहतर खेल पर यहाँ पर प्रदर्शित करना है। और अगर एक ऑल आउट यहाँ से आप कर देंगे चंबल चैलेंजर्स को तो मुश्किलात में आ सकती है चंबल चैलेंजर्स। और इस ट्रांसलेशन का कर्टसी हम हमारे प्रोड्यूसर अश्विन को देना चाहेंगे। चंबल चैलेंजर्स रिव्यू चाहता है बोनस प्लेस पॉइंट। ऑडिशन रेडर आउट, प्लीज रिव्यू, सॉरी रेडर से 1 पॉइंट, प्लीज रिव्यू। तो हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर बोनस था, बोनस लाइन कटी है जरूर। ट्रेलिंग फुट बहुत देर के लिए हवा में था, उदय कुमार पारते थोड़ी सी यहाँ चूक हुई है, शायद बचा लेना चाहिए था थोड़ा सा अंतिम समय के लिए बोनस को या फिर रिव्यू को, पर यहाँ बोनस लाइन पूरी तरह से कट रही। शायद बिल्कुल एक आसान सा निर्णय हमारे रामवीर साहब के लिए होगा। नवनीत, पर क्या आपको कितनी सही बात लगी जिस प्रकार से पी राजा साहब ने कहा है कि काम रहो, खेलो, बट टाइम कम है इसलिए ज्यादा समय वेस्ट मत करो। नवनीत जी बिल्कुल, अगर आप रेड करने जा रहे हैं, पॉइंट की कोई संभावना नहीं है तो वापस आ जाना बुद्धिमानी का सबब। और मैं भी थोड़ी देर पहले वही बात कर रहा था कि एक बार अगर चोला वीरन्स को मौका मिल जाए ऑल आउट करने का, गेम में वापस आ जाएगी। और 2 बार मिस्टेक कर चुकी है चोला वीरन्स। वहां पर जब 3 के डिफेंडर्स थे तो वहां पर सुपर टैकल खा गई और अभी सरन का भी गलत यहाँ पर खेल देखने को मिला। ये बिल्कुल जरूरत नहीं था, इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं थी। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि डू और डाई में प्रेशर पूरी तरह से उदय कुमार पारते पर था और अगर वहां उदय कुमार पारते आउट हो जाते तो सिर्फ 2 खिलाड़ी वहां पर बचते, वो शायद रेहान और दुर्गेश साहू होते। बट अब अरुण कुमार अंजापुली बहुत अच्छा टोटल, बहुत ही वाइड स्ट्रेच किया अपने टोज को। अजय कुमार मारवी को यहाँ पर शिकार बनाया और अरुण कुमार के लिए वहां पर एक बहुत अच्छा टच। तो सेकेंड हाफ का एक खिलाड़ी अरुण कुमार अपनी टीम को बहुत ही अच्छी तरह से लीड कर रहा है सेकेंड हाफ में। जी हाँ, 6 मिनट 20 सेकंड का खेल बचा है। यहाँ पर 3 खिलाड़ी मौजूद है चंबल चैलेंजर्स के लिए। चोला वीरन्स अगर यहाँ से कुछ कर पाती है तो मैच बिल्कुल कांटे का हो जाएगा और 6 मिनट काफी होता है खेल बदलने के लिए। मेरे ख्याल से चंबल चैलेंज थोड़ा सा डिफेंसिव खेल यहाँ पर खेल रही है फिलहाल और अरुण कुमार अंजापुल्ली पे बहुत कुछ निर्भर करेगा और सुपर टैकल होगा। ये मौका कैसे लेते हैं अरुण कुमार, ये देखना होगा। अरुण कुमार अंजापुली वैसे सुपर टैकल हो चुके हैं, पिछली बार जरूर शायद इन्होंने इनके खिलाड़ी को अटैक किया था और ये इन पर ही अटैक करने जाएंगे वापस। ये देखिए यहाँ जहां पर हेमंत खड़े हैं वहां वो अटैक करने के लिए जाएंगे। क्या हेमंत कुछ और कर सकते हैं? जैसे अरुण कुमार उनके पास आए, रेहान और दुर्गेश के साथ प्लान अप करके रखे कि जैसे वो मेरे पास आएंगे अब दोनों को मैं भी अटैक करूंगा और हम तीनों को मिलकर एक साथ अटैक करना है। बट अरुण कुमार अंजापुली मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा रेहान शेख को अटैक कर सकते हैं, उनके ऊपर किक लगा सकते हैं, क्योंकि दुर्गेश साहू डैशेस में बहुत ही ज्यादा तल्लीन नहीं है एंड क्रॉस और उतने इम्पैक्टेबल नहीं है तो उन्हें वहां परेशान कर सकते हैं। बट दुर्गेश साहू यहाँ पर एफ्टी रेड के साथ वापस आएंगे, ये जरूर पक्का है। और दुर्गेश वक्त गुजर रहा है, लाइन क्रॉस करिए। जी हाँ, क्रॉस कर लिया है लाइन दुर्गेश ने। सुपर टैकल फिर से एक बार और मोहनदास दौड़ के गए, वॉक लाइन को क्रॉस किया, वापस आए। चंबल चैलेंजर्स प्लीज कम। अब एक बार सब्स्टिट्यूशन पुनः होगा और कौन अंदर आएंगे? वंश अंदर आएंगे। इन्हें भी यहाँ पर अब डू और डायरेक्ट की बड़ी जिम्मेदारी लेने का मौका होगा। 25-18 पर स्कोर है, 5 मिनट से कम का समय शेष बचा है। डू और डाई, अगर चोला वीरन्स कैसे भी चंबल को ऑल आउट कर देता है तो ये मैच बराबरी पर आ जाएगा, नेक टू नेक हो जाएगा। बट वंश राइट रीडर विनीत के पास मत जाएगा। विनीत ऑलरेडी 7 अंक अपनी टीम के लिए अर्जित कर चुके हैं, बहुत ही डिसेंट फॉर्म में है, बहुत ही डिलीगेंट परफॉर्मेंस दर्शा रहे हैं। क्या प्रवीण पर अटैक कर सकते हैं? गौतम को आज एक भी पॉइंट नहीं मिला है। लीजिए फिर से वही कहानी दोहराई गई है। चंबल चैलेंजर्स नंबर 11 में चंबल चैलेंजर्स का ऑन एन एवरेज पॉइंट कम से कम नहीं बल्कि लगातार बढ़ रहा है। टाइम आउट भी लिया, चंबल चैलेंजर्स करने के लिए आए, हाफ हार्टेड और उन्हें भी टच किया। जी हाँ, हाफ हार्टेड टच किया और यहाँ पर वंश को दिक्कत हो रहा है। चंबल चैलेंजर्स आड़ रहा तुम क्या और आउट। ओह, ये अच्छे दृश्य नहीं है नवनीत? जरूर जैसे कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी जरूर मैदान पर आया है हमारे फिजियो पार्टनर और तुरंत वहां पर जब वो शायद आ रहे थे, मैं उसे एक बार फिर से हम रिप्ले जब भी हमें समय मिलेगा उस रिप्ले को हम देखेंगे और कोशिश करेंगे क्या हुआ था, कैसे वहां वंश को इतनी थोड़ा सा क्या निगल आया। बट यहाँ अरुण कुमार अंजापुली इन्हें और थोड़ा सा फास्ट, रैपिड और हरीली अटैक करना बहुत जरूरी है। जो अभी तक इन्होंने डू और डाई में गलती की है, 15 सेकंड 20 सेकंड वेस्ट मत कीजिएगा। दुर्गेश साहू ने फिर से फ्रंटल गए
डबल थाइस पर जाने का प्रयास किया, Turn जंप out. लगी बट One point. उतनी Chambal कारगर नहीं challengers. थी, नवनीत पॉइंट ले जाए। अच्छा सपोर्ट सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का। जी हाँ, अरुण कुमार के आउट होने से मुझे लग रहा है तकरीबन इस मैच का जो फैसला है वो हो चुका है, क्योंकि अब अंडर 4 मिनट्स का खेल बचा है और अगर अरुण कुमार वापस भी आते हैं तो वक्त बहुत कम अब रह जाएगा। अरुण कुमार का जल्दी से जल्दी रिवाइवल चाहिए। चोला वीरन्स को यहाँ पर 28-18 फिर से 10 पॉइंट की लीड है। चोला वीरन्स एटलीस्ट देखिए 1 पॉइंट आपको इस मैच से लेना चाहिए, क्योंकि जब चैलेंजर राउंड की अगर मैं बात करूँ तो स्टैंडिंग्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम प्री शो में भी दिखाया था हमने रोड टू फाइनल्स, हम पोस्ट शो में भी दिखाते हैं रोड टू फाइनल्स कि टॉप 2 को कैसे बिजनेस क्लास टिकट मिलती है फाइनल में जाने के लिए। अगर हारे तो भी उनके लिए मौके होते हैं। थर्ड फोर्थ पोजीशन को अच्छा एसी में टिकट मिलता है ट्रेन में कि वहां आप जीतिए, फिर उसके बाद क्वालिफायर 1 के लूजर से खेलिए और धीरे-धीरे अपने आप को आगे बढ़ाइए। बट अगर आप एलिमिनेटर यानी कि 5वें छठे पायदान की टीमों के लिए बात करें तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता है वहां से। बट यहाँ अय्यप्पन को फिर से अंदर बुलाया है। मोहनदास विश्वमोहन वहाँ पर कुछ समय के लिए अंदर थे बट इम्पैक्टफुल नहीं आ पाए, तो उन्हें कहा कि चलिए अय्यप्पन को भेजा जाए, वो कभी भी मैच में तब्दीली ला सकते हैं, उनके पास वो स्पीड है। फिलहाल विघ्नेश मुरुगेशन यहाँ पर और बहुत ही अंदर चले गए और इतने अंदर आप जाएंगे तो जहाँ पर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है समुद्र के अंदर, वैसा ही प्रेशर बढ़ेगा, आप उतने डीप जाओगे और कोई मौका नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब आप बहुत ज़्यादा अंदर चले जाते तो आप एक्स्ट्रा एडवांटेज दे देते हैं डिफेंडर्स को। और आज मैं चंबल चैलेंजर्स की डिफेंस की तारीफ करूंगा, एज अ कॉम्बिनेशन वो दिखे और एज अ प्रॉपर टेंडम उन्होंने वर्क किया है। सबसे अच्छी बात कवर ने ज़्यादा अटैक नहीं किया है, हालांकि बहुत ज़्यादा 6-7 के हाउस में नहीं रहा है चंबल चैलेंजर्स, तो उनके लिए ये भी एक रणनीति हो सकती है, बट वो हमेशा डबल साइडेड रणनीति होती है। प्रोज और कॉन्स भी उसके होते हैं, आप कभी ऑल आउट हो सकते हैं और 4-5 के हाउस को बनाना लगातार उतना आसान नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल का वो कार्य होता है। बट यहाँ अब अय्यप्पन के लिए मुश्किल का कार्य ये है कि जो 11 पॉइंट की लीड है उसे एटलीस्ट 6 पॉइंट की लीड तक तो लाया जाए, अन्यथा मुश्किलात हो जाएगी। अभी नवनीत में तारीफ कर रहा था कवर की, अय्यप्पन एज अ राइट ट्रेडर बहुत अच्छा टर्न किया राइटली उन्होंने, और यहाँ पर बाहर जाते हुए हेमंत और कोच कहते हुए, मैनेजर कहते हुए आराम से आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ आहिस्ता कीजिए बातें, और बातें खेल सब कुछ खत्म हो गया है। 90 सेकंड से कम का समय, 29 और 19 ये स्कोर लाइन हमें देखने को मिल रहा है। संस्कार मिश्रा आए हैं, 5 का डिफेंस है, डू और डाई रेड है, फिर भी वो पहले चाह रहे हैं कि मैं 30 में से मैक्सिमम सेकंड्स ले लूं और उन्हें कोई बुरा नहीं लगेगा, जैसा लग रहा है आउट भी हो जाएंगे तो। या बिल्कुल आपने सही कहा, बट संस्कार मिश्रा जरूर यहाँ पर आउट है। अच्छा किया है, मुझे लगता है आखिरकार पहला पॉइंट उन्हें आज डिफेंस में मिला है। बट मैं कहना चाहूँगा नवनीत, मुझे एज अ प्लेयर संस्कार मिश्रा एक और चीज़ उनमें मुझे अच्छी लगी है कि जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है ना, ये कभी भी किसी और पर जिम्मेदारी नहीं डालते हैं, हमेशा डू और डायरेक्ट की जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं पर ली है। उन्होंने कहा कि चलिए आप टीम को बनाकर रखिएगा, बचाकर रखिएगा, और मैं कोशिश करूँगा। वो क्या लॉबी में चले गए थे, जिन्हें लॉबी में शायद जाते जाते बच गए अय्यप्पन, क्योंकि स्पीड एज यूजुअल थ्रिल्स बट इट किल्स समटाइम्स। यहाँ दुर्गेश के पास अगर आप इतना तेजी से जाएंगे और अपना एंकल दे देंगे तो दुर्गेश आसानी के साथ आपको जाने का मौका नहीं देंगे नवनीत। जी हाँ, मुझे वहाँ पर गिलहरी की याद आ गई, जिस रफ्तार से इधर से उधर कर रहे थे। जब पेड़ में गिलहरी होती है, ऊपर नीचे इधर उधर करते रहती है, वैसा ही अय्यप्पन ने अपने स्पीड से दर्शाया। 9 पॉइंट 10 पॉइंट का लीड है, आराम से खेलो, जल्दबाजी मत करो। 6 पॉइंट चाहिए आप उनको। சொல்றது புரியுதா? அப்படியே நிறுத்திக்கு. பாயிண்ட் நம்மளுக்கு தான். Please come. 39 in, 33 out. अब यहाँ पर बदलाव किया गया है एक बार फिर से, और कौन वहाँ पर अंदर आए हैं उसकी तरफ एक निगाहें डालें तो यहाँ पर आपको क्रम के लिए अभिराम अंदर आते हुए नजर आए। 1 मिनट से कम का समय यहाँ पर शेष बचा है। 10 पॉइंट की बहुत बड़ी लीड यहाँ पर मौजूद है चोला वीरन्स। नवनीत, फिर से वो जो इनके लिए स्लो डाउन द मोमेंटम वाला गेम है ना, वो आज उस तरह से उनके लिए काम नहीं कर पाया, और साथ ही साथ उनके रेडर्स उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाए। 6 रेड पॉइंट अरुण कुमार को मिले, 4 विघ्नेश मुरुगेशन को मिले। मुझे लगता है विघ्नेश का
उस तरह से प्रॉपर यूज अभी भी चोला वीरेंस नहीं कर पा रहा है नवनीत। डिफेंस में 7 अंक विनीत के लिए, सिर्फ 1 अंक गौतम मुर्गन के लिए, बाकी कोई डिफेंडर को कोई पॉइंट नहीं मिला है। जी हाँ, और खेल समाप्त 30 और 20 का ये स्कोर फाइनल। चंबल चैलेंजर्स इस मैच को जीत गया है और रेफरी की आवाज वहां पर सुनने को मिली, मैच इज ओवर। जी अमर वर्मा साहब ने मैच ओवर का यहाँ पर निर्णय दिया कि ये मुकाबला समाप्त हो चुका है, चंबल चैलेंजर्स जीता है। संस्कार मिश्रा जरूर उतना खुश नहीं थे शुरुआत में, क्योंकि उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, बट बाद में जीत की खुशी इसलिए थी कि पूरी टीम ने आज अच्छा किया वहां पर, और एक अच्छा हाईफाई नजर आया दुर्गेश साहू से। अजय मारवी ने अच्छा कार्य किया, 9 रेड पॉइंट, 1 टैकल पॉइंट। संस्कार मिश्रा सिर्फ 3 रेड पॉइंट्स बट 1 टैकल पॉइंट उनका अच्छा था। रेहान शेख आज जो में लेफ्ट फ्लैंक थोड़ा सा वीक नजर आ रहा था, आज रेहान शेख ने हेस्टी टैकल नहीं किए। हेमंत ने बहुत अच्छा कार्य किया, 2 डिफेंस में इन्हें पॉइंट मिले। वंश और उदय कुमार पार्थे, जो इन दोनों ने डू और टाई में काम किया, अगर उस समय डू और टाई में ये काम नहीं करते नवनीत, तो शायद इस मुकाबला इतना क्लोज वहां पर जो अभी वन साइडेड नजर आ रहा है वो बहुत क्लोज होता। हो सकता था कि मुकाबला बराबरी पर भी समाप्त हो सकता था, चोला वहां पर जीत भी सकता था, बट उन दोनों ने डू और डाई रेड में वो काम किया जिससे कि जो अंतिम मोहर लगती है जीत की, वो लगा दी चंबल चैलेंजर्स ने। जी हाँ, बिल्कुल लगा दी। और संस्कार मिश्रा यहाँ पर देखिए हाइलाइट्स में वहां चोट लग गया था उन्हें, हल्का सा उन्हें चोट लगा था, और उनका अपने आप को बचाए रखना, उनके शरीर पर काम करना बेहद जरूरी है। पर अभी ये चैलेंजर राउंड है, इसके बाद समिट राउंड भी आना है। ये वो जर्सी पुल था जहां पर अंक मिला था विघ्नेश को, बट ये जंप बहुत ही शानदार थी विघ्नेश मुर्गेसन की, प्रॉपर फ्रॉक जंप, यानी कि डिफेंडर्स के कंधे का इस्तेमाल करके वो जंप लगाना और उसके बाद आगे की तरफ कूदना और लगभग रश कर जाना मिड लाइन की तरफ, वो बहुत ही शानदार था। अरुण कुमार अंजापुली अच्छा खेले, बट उनको डू और डाई रेट की जो थिंकिंग है ना, उसे थोड़ा सा और बदलना पड़ेगा। अगर आप डू और डाई रेट में 15, 20, 25 सेकंड आसानी से वेस्ट कर देंगे और उसके बाद जाकर अटैक करेंगे तो मुश्किलात आपके ऊपर बिल्कुल होगी। और मैच ओवर ये वाली बात सुनने को मिली। यहाँ मैच समरी की बात करें, मैच नंबर 100 चंबल चैलेंजर्स और चोला वीरेंस के बीच में खेला गया, 30 और 20 ये स्कोर रहा। रेड पॉइंट्स की बात करें 15 और 11, वहां पर चंबल चैलेंजर्स लीड कर रही है। टैकल पॉइंट्स में 12 और 8, चोला वीरेंस एक बार ऑल आउट हो गई तो 2 पॉइंट मिले चंबल चैलेंजर्स को। एक्स्ट्रा में दोनों टीम 1-1, सुपर रेड चंबल चैलेंजर्स ने 1 लगाया, और टैकल की बात करें सुपर टैकल दोनों टीमों ने 1-1 लगाया। और दोनों ही टीमें दूसरे हाफ में बड़ा डू और डाई रेट पर खेली हैं, ये पूरी तरह से तय, क्योंकि 8 के टैकल पॉइंट्स यहाँ पर चंबल चैलेंजर्स को दूसरे हाफ में मिले और 6 लगभग चोला वीरेंस को वहां पर मिले थे। पर जाइए टॉप रीडर की बात कर लेते हैं इस मुकाबले के, और टॉप रीडर जो रहे इस मैच के वो रहे अजय मारवी। बहुत अच्छा प्रदर्शन, 14 रेड्स, 9 रेड पॉइंट, स्ट्राइक रेट 64%। ये ग्राफिक हमें पूरी तरह से क्लियर दर्शा रहे हैं कि अजय मारवी बहुत अच्छा खेले, और वो चंबल चैलेंजर्स के लोगों में वो जो एलिगेटर, वो क्रोकोडाइल आपको नजर आता है, आज उसी तरह से इन्होंने अपनी जबड़े में फंसाई है वो बड़ी जीत, और बहुत ही अच्छा खेला है यहाँ पर अजय मारवी। और आज पूरा चंबल चैलेंजर्स हर एक पॉइंट पूरी तरह से सील किया है इस मैच से नवनीत ने। डिफेंडर की बात करते हैं आपसे। जी हाँ, विनीत बेस्ट डिफेंडर है, 9 में से 7 इनको टैकल पॉइंट्स मिले, एक बार सुपर टैकल में इनका हाथ रहा है, और सक्सेस रेट की बात करें तो 77%। और लगभग पहले हाफ में इनके हाई फाइव पूरा हो चुका था नवनीत, तो सेकेंड हाफ में भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। विनीत 7 टैकल पॉइंट इनका ऑन एन एवरेज पॉइंट्स हमने बहुत अच्छे से देखा, बट जो आज मैंने प्री शो में बात की थी ना कि गौतम मुर्गन का एक मैच हाई फाई जाता है तो अगला मैच उनका पूरी तरह शांत जाता है, और आज वही हुआ है। आज गौतम उतना अच्छा नहीं प्रदर्शन कर पाए, इसलिए चोला वीरेंस चौथे पायदान पर आपको नजर आएगी। चंबल चैलेंजर्स ने जंप लिया है, दूसरे पायदान पर वो आपको नजर आ रही हैं। 10 स्कोर डिफरेंस है और 12 पॉइंट्स है। पलनी टस्कर्स पहले पर मौजूद हैं। अगला जो मुकाबला होगा पेरियार पैंथर्स बनाम अरावली एरोज होगा। अरावली एरोज अभी तक सबसे अंतिम पायदान पर मौजूद हैं, और अब अरावली एरोज को क्या पटकनी दे पाएगा पेरियार, या फिर पेरियार पैंथर्स कह जाएगा जी नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा आसानी के साथ। मिलेंगे आप सभी के साथ मैसूर में, बनी रहिएगा हमारे साथ 6:45 बजे फैन कोर्ट पर। इससे पहले अवार्ड रिकॉग्निशन का समय, मिलते हैं आप सभी के साथ पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच नवनीत हमारे साथ कॉम बॉक्स में जुड़ने के लिए।
So for the 100th time in this summer edition, here I am welcoming you all in the post-match presentation in the match number 100 of Yuva Kabaddi Series Summer Edition. First of all, a huge congratulations to all of you for joining us. सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस post-match presentation की with thanking all our partners. First, broadcast partner, fan code fantasy partner, Dream 11 Physio partner, Department of Sports Science, JSS College of Physiotherapy, hospitality partner, Ginger Hoodle, our healthcare partner, Ramakrishna Specialty Hospital. In the presentation today, we have Mr. Narsimha Murthy, sir, senior national player, third national games player and coach of Humpy Heroes. A huge welcome in the post-match presentation. Sir, Chambal challenges बनाम Chola Veerans is 2C की लड़ाई में कहीं ना कहीं charismatic performance एक बार फिर से डबल सी ने कर दिखलाया, यानी कि Chambal चैलेंजर्स ने इस मुकाबले को जीता 10 पॉइंट के मार्जिन से और आसानी के साथ यहां पर दर्शाया कि इनका डिफेंस कैसे बेहतर करेगा. सीधा चलेंगे रिकॉग्निशन की तरफ और अवार्ड्स की तरफ. शुरुआत करेंगे विद फर्स्ट बेस्ट रेडर ऑफ द मैच के साथ जो रहेंगे Chambal चैलेंजर्स के अजय मारवी, जिन्होंने पहले हाफ में अपनी टीम को बहुत अच्छी लीड दिलाई और प्राप्त किए 9 रेड पॉइंट्स. आइए देखते हैं उनके प्रदर्शन को. और अब बात करते हैं बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच की तरफ. तो चोला वीरेंस के लिए आज जो बड़ी पॉजिटिव यहां पर साबित हुए वो कहीं ना कहीं बहुत ही पाइवटल रोल उन्होंने निभाया और वर्सेटाइल परफॉर्मेंस दर्शक करके दिखलाया. वो थे विनीत, जिन्होंने 7 टैकल पॉइंट्स के साथ कहीं ना कहीं डिफेंस में अ लोन वॉरियर के तौर पर साबित हुए. देखते हैं इनके परफॉर्मेंस को. और जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि एक अकेला चना वहां पर बाहर नहीं डो पाता है, वैसा ही आज इस डिफेंस में हुआ. बट अभी समय कबड्डी कमाल ऑफ द मैच का. वो रहेंगे चंबल चैलेंजर्स के दुर्गेश साहू, जिन्होंने बनाया स्टनिंग हाई फाइव और जब जब टीम को सुपर टैकल्स की आवश्यकता थी और टैकल्स की आवश्यकता थी, इन्होंने कहा So that's all from the post-match presentation of match number 100. Thank you so much for joining us one more time.
I am very flattered to be here for the 101th time announcing the teams. ये मुकाबला होगा पेरियार पैंथर्स बनाम अरावली एरोज का। दोनों ही टीमें जीत के साथ अफसाने लिखना चाहेंगे इस शगुन के आंकड़े वाले मुकाबले में। तो आइए दस्तक देते हैं आप सभी की मोबाइल स्क्रीन पर और शुरू करते हैं ये बड़ा मुकाबला। तो दोनों ही टीमें बेकरार है इस मैच पर जीत को प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले आएगा वो खेमा जो लाएगा तेजी, जोश, जज्बा और जुनून के साथ। सो लेट्स इनवाइट those who are in the winning streak, Perrier Panthers. क्या ये टीम विरासत में ला पाएगी एक ठोस प्रदर्शन और अपना रोबस्ट मोमेंटम? आ रहे हैं चट्टान सी मजबूती लिए, इरादों में जुनून लिए, अरावली एरोज। जी हाँ बिल्कुल। और पेरियर पैंथर्स की टीम यहाँ पर हमें नजर आ रही है। मिडिल में रहेंगे सरदार चौधरी, राइट कवर पर राहुल चौधरी और लेफ्ट कवर पर भगत सिंह खेलेंगे। राइट इन और लेफ्ट इन की बात करें तो एक तरफ है रिचपाल जाट, दूसरी तरफ है रोहित यादव। कॉर्नर्स में मुकेश चौधरी और मोनू प्रसाद की जोड़ी हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा अनुज सैनी, लोकेश गोशलिया, नकुल सैनी, कानाराम चौधरी और गोपाल सिंह ये है बेंच पर। लोकेश आज नहीं खेल रहे, ये आश्चर्य की बात मुझे नजर आ रही है। जी हाँ बिल्कुल। और जी हाँ Rohit Benewal. Yeah, that is a big name in the center, and that covers Chetan Chaudhary and Prem Badu. And more importantly, Rajendra Bhakar should come out very strong today in that corner, along with Ankit Jat on that right corner. Yeah, and then the raiding unit. Yeah, Rohit Pancholi, that's a new name. He can come in and try and build some stability in that already weak raiding side of the Aravali Arrows. Hariom Chaudhary, Dev Gurjar, Pradeep Singh, and Aftab Khan will be there in the substitution lines along with their coach to make sure that something goes in their way. And the head-to-head is actually in favor of the Aravali Arrows. This is not in this season probably, as they are going in with a little more of a strong attack, the Periyar Panthers comparatively, and they are better placed. And Navneet, it was a very nice way to get to 100 matches, as the first raider might be Gagan Glorious Goda to reach that 200 points of the first top raiders. And of course, top 3. जी हाँ बिल्कुल। और टॉप 3 डिफेंडर्स की बात करते हैं। लोकेश गोशलिया 23 मैच 65 पॉइंट। Grading units of the Palani Tuskers. Right, so what happened in the toss was also really important, as Rakhi, Bobby is her pet name. She flipped the coin over. Chetan Chaudhary said, "Give me the coin," as Aravali Arrows have won the toss. And the first raid might happen now from Rohit Yadav. Rohit Yadav getting the captaincy of the Periyar Panthers. Yeah, that's a big responsibility on the strong shoulders or young shoulders of Rohit Yadav. He's matured into a very good raider. That's what I'm being really impressed of with this lad. 84 raid points with just 54.54 as his raid strike rate. But what has impressed me is, Navneet, the way he came into Yuva Kabaddi series and took upon that big responsibility
of becoming their premium raider. And he'll be facing Prem Badu and Ankit Jat. यह निश्चित रूप से अंकित जाट 23 मैच 58 पॉइंट और स्ट्राइक रेट 42.86, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की वहां आवश्यकता है अंकित जाट को. And the reason why he's not been able to perform well is because he's not got good support. That's really been their problem. Yeah, Periyar Panthers, they have started well in the challenger round, and they will be trying to go one up against their friendly neighbors, I should say, the Arab Liaros. That is what their real goal will be, because the Periyar Panthers have come in with strong covers and making sure the match is going to be very, very tough. Who do you think is the most valuable player for the Periyar Panthers, right? Tanmay Gupta asks me this, but I'll tell you what, if you really compare with Durgesh Kumar for the Chambal challengers, for the Periyar Panthers, I will try to pinpoint one name that definitely will be Lokesh Gosalia. The captain today is not playing on that left corner. I guess he's just had some injury. He did not play the previous matches as well. So I think he's suffering a little bit of an injury. For me, Lokesh Gosalia is definitely the most valuable player, because without him, it goes really as a weaker side compared to other sides there, Navneet, because Periyar Panthers are very, very good when Lokesh Gosalia is there, because he brings in that balance. निश्चित रूप से लोकेश गोशलिया बहुत ही शानदार खिलाड़ी, बाएं तरफ के कॉर्नर्स में खड़े रहते हैं. अरावली एरोस की बात करें, 24 में से 8 जीत, 15 हार, बहुत ज्यादा हार है, और 33.33 ये है जीत प्रतिशत. और अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो आप जस्ट पास हो रहे हैं अरावली एरोस. अच्छे खेल की आवश्यकता है आपसे. Is it just pass? I thought they're clearly lacking 1.5% still. 33.33. I think they need one more point, one more mark, isn't it? Yeah, right. What strategy should the Arab Liaros bring in to improve? Yeah, it's Rishabh Raj. Good question. Simple. We've been saying this time and again, time and again. The Raiders are not working. Is it Sahil Bagada, or is it going to be Rohit Beniwal? Somebody to take up that lead responsibility of a lead Raider. Navpreet Singh, unfortunately, has not been molded enough by the think tank and the team management, Navneet. That has been the big problem, because Rohit Pancholi also is a very newer Raider compared to Navpreet Singh. Navpreet Singh was very good. He has played previous editions of the Yuva Kabaddi series. So, to change their gameplay, they need to have Raiders who can take up that responsibility. Let's go to the countdown and see who will take up that responsibility and win this match number 101. Yeah, let's do this. Here we go. Just watch. Hundred matches have gone through in the summer edition, and we are stepping into the 101st as Jay Kumar gives the go-ahead to Sardar Chaudhary to begin the proceedings. Yeah, the toss was won by the Arab Liaros, and Sardar Chaudhary, left raider, starts off the proceedings. He has lost pace, he has lost form, he has lost touch, but good that he is still there in the team. Oh, that was a very bad and a very hasty tackle. He came in the chain there, Navneet. But easy 2 points for Sardar Chaudhary, beginning the Periyar Panthers' raid points. जी हाँ, क्या शानदार डुबकी लगाई, और डुबकी में से 2 महत्वपूर्ण पॉइंट रूपी मोती वहां पर लेकर के आए. खाता खुल गया. और जो दोनों टीमों की जर्सी की बात करें तो बेहद नजदीकी कलर्स आप देखेंगे. पेरियर पैंथर्स थोड़ा सा डार्क, अरावली थोड़ा सा लाइट, बट एनफ है कि थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है. वहां पर पैंट्स की अगर कलर देखें तो ब्लैक है. Correct. The trousers, yes, the trousers, the shorts are black. That is the Periyar Panthers. For the Arab Liaros, everything is on the purple lines. That's good. Sardar Chaudhary started off with proceedings well, and also one bonus being taken off by the Arab Liaros Raider to start off. Sahil Bagara tries the sweeping toe touch. He's got it. Got it on that left corner, Monu Prasad. And as I said, no Lokesh Gosalia on that left corner. The top defender
sitting out in a match that is really important to win. What are the Periyar Panthers thinking? You want to give away a match away to your friendly neighbors? That might cost you your place in the summit round. I don't think that's a good strategy. जी हाँ, और मैं यहाँ पर एक डिफरेंट टॉपिक लाना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि नवीन आप इस पे थोड़ा सा और लाइट डालेंगे। आपने कहा कि लोकेश बिल्कुल इंजर्ड नज़र नहीं आ रहा है और मैं लोकेश की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर देखिए रोहित बेनीवाल, यहाँ पर कोई मौका नहीं और बाहर गए। 1 point. Periyar Panthers. मैं अपना प्रश्न को यहाँ पर आपके लिए पेश करूंगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को देखते हैं और वो हमें चोटिल नजर नहीं आता है फिजिकल इंजरी के रूप में, लेकिन मेंटल हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और स्पोर्ट्स में अक्सर हमें ये पिछले 1-2 साल से लगातार देखने को मिल रहा है। और सिमोन बिल्स की बात करें, जिन्होंने बहुत ही शानदार जिम्नास्ट थी अमेरिका की, जिन्होंने ओलंपिक्स में जा करके पार्टिसिपेट नहीं किया। 1 point. तो इस पर आपका क्या विचार है? Oh yeah, very good point. As Rohit Yadav in a do-or-die raid once again gets entangled in the chain. Right, this is looking very, very lackluster from the Periyar Panthers. They are having a soft corner towards the Aravaliaros. That's what it's looking like until now. Yeah, once again, high line of defense does not go back in time. Rahul 1 Chaudhary point. Aravaliaros. is not good. This is number 6 out. The Periyar Panthers are asking the Aravaliaros to go ahead and try and get a win under their belt. Yeah, easy hand touch, no conviction whatsoever there. Yeah, mental condition is also one important aspect, Navneet. Yeah, very good point. And we've heard players somehow saying, complaining rather, of over-exertion, over-match exposure. Sardar Chaudhary is now, I think, got a bonus point. Bonus point. Periyar And, Panthers. yeah, see, one thing they'll have to realize is, especially in India, or even any nation, say even if it's the European nations where the football game is so much so popular, they'll have to realize one thing, that see, listen, you're not playing for anything else but apart from you. If you keep playing, that'll actually benefit the side that you're playing, that'll actually benefit your state, district, country. And now Rajendra Bakar. That's a third time that's happening at Periyar 1 Panthers. point. Aravaliaros. They're, I think, today playing with cotton hands and cotton legs. That's getting easy and easy for the Aravaliaros. Yeah, nevertheless. So, yeah, very good point of discussion. Because when you have that sort of a mentality where you go back and complain about playing too much, I really want all those players to think about Red shape. somebody who's 1 not got point. the chance to play. Aravaliaros. This is number I mean, 55 out. as a player, I understand. It's another running hand touch. Easy point here for Rohit Beniwal. See how much time he's got, as if he's climbing a mountain towards the lobby. So, as a player, when you don't get selected, there is so much disappointment. There is so much, the excitement goes down. And when you've got a chance, you need to play. You just need to imagine before you complain that you've been overutilized or overplayed. Just remember of all those great souls or nice people that have not got a chance to play. Sahil Bagara comes in a do-or-die correction, super tackle here. जी हाँ, साहिल बगारा को यहाँ पर सुपर टैकल में यहाँ डिफीट किया है Red shape. और 1 point. 1 पॉइंट लाया है। Aravaliaros. This number 71 out. और मैं एक दूसरा पक्ष यहाँ पर रखना चाहता हूँ नवीन, जैसे आज के जो नंबर 1 ऑलराउंडर है दुनिया के, Periyar Panthers. Please come. क्रिकेट की बात करें तो 44 बेन in. स्टोक्स है 1 out. और उन्होंने एक लंबा ब्रेक लिया था और पूरा जो इंग्लैंड का मैनेजमेंट है उनके सपोर्ट में था और कुछ 6 महीना के बाद जब वो वापस आए तो बेहद शानदार खेल दिखा रहे हैं एशेज में। और यहाँ पर कानाराम चौधरी यहाँ पर पकड़े जाएंगे। 1 point. Aravaliaros. Yeah, very good ankle hold. As Kanaram Chaudhary had come in, and Rajendra Bakar today looks a very, very different
defender on that left corner. Very good work. I think now this is going to be a surrender rate. Periyar Panthers. Rider shape. they just, 1+2 3 point. Aravali just arrows. खाली fight करा नहीं पा रहे हैं. All That's out what I Periyar see Panthers. with the Aravali arrows. But yeah, speaking All about in. Ben Stokes, yeah, see that break is necessary. You know, where you get the opportunity to go back, relax, and actually recharge Right. your energies and then come back, which is good, which is really good. But imagine if that moment, if you've been overtaken by Rider shape. somebody, 1 point. Periyar Panthers. I think that Jersey means that number 3 especially out. happens from a place where it's in India. Right. Another hand touch by Sardar Chaudhary. In India, so much competition goes on, isn't it? निश्चित रूप से कंपटीशन है और ये बहुत ही थिन लाइन है क्योंकि मेंटल एनर्जी मेंटल एग्जॉशन कभी कभी हमें दिखता नहीं है और वही इंसान जिनसे हम मिलते हैं वो आपके सामने Rider मुस्कुराते shape. रहता है 1 point. Aravali arrows. Jersey number 5 out. Yeah, and the Periyar Panthers, as expected, you know, they are actually playing a bit of a big brother role here. Total big brother role. Yeah, that's all I Rider can see. shape. 1 point. Periyar Panthers. Batu Jersey number also- 77 out. They've taken it lightly, which will really go back and bite them hard. I'm sure this is going to bite them hard. It's a nice toe touch, though, nevertheless, by Sardar Chaudhary, but they have kind of taken it more lightly. The Periyar Panthers, they're not going strongly. Apart from this one, apart Right from out. this tackle, 1 Bhagat point. Singh from that Periyar left cover, Panthers. the first time puts out a strong tackle against Rohit Beniwal. You think Rohit expected Right. even Bhagat to play a little softer, but I'll tell you what, Bhagat Singh is a name which does not know how to be soft. One of, rather, I should not say one of, my favorite freedom fighter. That's it, the only one. After him, of course, Subhash Chandra Bose. But before Bose, Bhagat Singh. जी हाँ भगत सिंह कमाल के फ्रीडम फाइटर और काफ़ी पढ़े लिखे फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने काफ़ी किताबें पढ़ा था और जन्म उनका हुआ था बांगा पाकिस्तान में 27 सितंबर 1907 और उन्होंने आखिरी सांस ली थी 23 मार्च 1931 लाहौर में Yeah, I think what? Just 24 years of age? Just 24. 24 साल Captain, please come Yeah. for your challenge. Please go back. TV umpire, Aravali Arrows challenge is bonus point. Our decision, no bonus point. Please review. Yeah, Raki says bonus point challenge has been thrown in for the Aravali Arrows. Oh, that's I think a clear one. Marginal, but if the toes are landing fine is what Rambir Singh will see. Yeah, only that is a question. Yeah, we'll speak about, I think we'll have to speak more on Bhagat Singh and other topics because Periyar Panthers have taken a bit of a liking towards the Aravali Arrows this match. That's why they're leading. Yeah, nevertheless, yeah, the birthplace of Bhagat Singh was once in the United India. Then when Review the partition successful. happened, Bonus point, Aravali Arrows. successful review. Captain, return Aravali your Arrows can keep the bonus as well and also the review. So yeah, after the partition, everything went in the very, very wrong direction. And that's why I hate whatever happened during 1947. Not required at all is what I always feel the partition. Yeah, people thought, the violence would be controlled or ended if the partition has been allowed. But there were more violence. There were more violence, and now that has become a big nonsense because all our tax money is just going there. Just imagine if our country was not partitioned. Just imagine if Bhagat Singh would have led to live just 20 more years. It would have been amazing. इसी बीच साहिल बगारा
अरावली एरोज बोनस 13, पॉइंट अरावली एरो पेरियर पैंथर्स 7। और अरावली की भी जो बात करें, बेहद शानदार पहाड़ राजस्थान की। यहाँ पर सरदार चौधरी आए हैं पेरियर पैंथर्स की तरफ से, 14 और 7 स्कोर है। और क्या इस अरावली एरोज में पेरियर पैंथर्स कुछ तीर मार सकते हैं? क्या उस पहाड़ को छोटा कर सकते हैं? लेकिन One यहाँ point. पर पेरियर पैंथर्स पेरियर जैसे पैंथर्स के नंबर 3 पास आउट एक पॉइंट मिला है। Yeah. Toe touch. Good work. In a do or die raid, Sardar Chaudhary and Ankit Jat just playing a little more high line. He did not expect Sardar Chaudhary to have that toe touch, and once again there's a problem. Rahul Chaudhary the 1 point on that right अरावली cover. एरोज जैसे The नंबर second 6 time आउट does not go back in time. But I'm mighty impressed with Bhagat Singh today. That left cover is done good for the Periyar Panthers. Yeah, because he's got 2 attempts on the tackle, and all the 2 have been successful, Navneet. Yeah, Navneet, I was expecting that you will have your say on during the partition on the freedom fighters. Your favorite? या बिल्कुल। मैं एक बात हमेशा से समझता हूँ कि जब भी भारत में फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनकी सोच और हमेशा अलग रही है। कुछ थोड़े शांत प्रवृत्ति के रहे हैं, कुछ थोड़े गर्म प्रवृत्ति के रहे हैं, कुछ पढ़ने लिखने वाले रहे हैं, कुछ जोश से ओत-प्रोत रहे हैं। और ये एक्चुअली भारत की विविधता जो है वो दिखाता बोनस है। पॉइंट अरावली एरोज और मुझे ये Yeah, काफी खूबसूरत लगता है। मैं कभी कंपेयर नहीं करता हूँ। और मुझे याद है कि मुझसे एक इंटरव्यू में भी एक सवाल पूछा गया था। वो 1885 और 1915 में जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्हें कंपेयर करने को बोला गया था। तो मैंने उस समय यही बोला था कि ये बहुत ही अन्यायपूर्ण होगा कि मैं अपने जनरेशन को अपने पिताजी के जनरेशन से कंपेयर करूं, क्योंकि जो रिसोर्सेज रहते हैं, जो सोच रहती है, वो हमेशा बदल जाती है। और मैं आपको एक बात मतलब बताना चाहूँगा, अगर अक्सर गांधी की बात करें तो 1890 वाले जो गांधी थे, 1910 वाले जो गांधी थे और 1940 वाले जो गांधी थे वो अलग अलग थे। Yeah, totally तो different. टोटली डिफरेंट। और भगत सिंह की भी आप बात करें तो जो छोटा सा समय था उनमें भी काफी परिवर्तन देखने को मिला था। 1 पॉइंट क्योंकि पेरियर पैंथर्स जैसे नंबर 2 आउट दुर्भाग्यपूर्ण रूप से 23 वर्ष की उम्र में वो चले गए। अगर वो लंबा रहते तो बहुत सारी जो उनमें भी हमें विविधताएं देखने को मिलती, क्योंकि एज अ पर्सन जब हम लोग ग्रो करते हैं तो जो आज नवीन है और जो 20 साल वाला जो नवीन था उसमें काफी डिफरेंस होगा, जैसा मैं समझता हूँ। तो Yeah, totally. लीडरशिप 1 पॉइंट Totally. अरावली एरोज जैसे नंबर 15 आउट No doubt. No doubt at all. अगर आप सुभाष चंद्र बोस की भी बात करें तो वो सिविल सर्विसेज एग्जाम निकालते हैं और बहुत दिन तक वो गांधी की सोच से वो रहना चाहते हैं। फिर उनकी सोच बदलती है। इंडस्ट्रीज के बारे में उनकी सोच और गांधी की सोच अलग थी। उसमें वो थोड़े से नेहरू से सिमिलर थे, लेकिन कुछ सोचों में नेहरू गांधी से सिमिलर थे। तो कभी कभी क्या होता है, हम चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखना चाहते हैं, जैसे नंबर 77 आउट लेकिन काफी इसमें सिमिलैरिटीज होती है लोगों में। पर मैं सारे फ्रीडम फाइटर्स का जो रोल है, चाहे वो मदन मोहन मालवीय हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, खुदीराम बोस हो, गांधी हो, बहुत सारे लोगों ने, रानी लक्ष्मीबाई हो, 1857 की बात करें, नाना साहब हो, जितने लोगों की नाम हम ले उतना कम है। और भारत जैसा कि कहते हैं 1 पॉइंट विविधताओं का पेरियर देश। पैंथर्स Yeah, totally. Ilavarasan and Narasimha both are ready for their respective matches. As that right corner, without a defender, Rohit Yadav comes सब्स्टिट्यूशन in. पेरियर पैंथर्स For प्लीज the- कम जैसे नंबर 1 इन 14 आउट Okay, सब्स्टिट्यूशन now अरावली Mukesh Chaudhary comes in. 4 and इन plays, 12 आउट of a raider. Right, I think they want a defender. Right, Right. Mukesh Chaudhary comes in onto that right corner. Yeah, interesting. Super tackle on. Yeah, interesting talks as Rishpal Jat also comes in. This match looking like
two different teams of the same college playing a friendly match. That's all it looks like. They're not serious about the challenger round. Whoever is not serious, of course, they are the ones who will be, in a bit of a bother where they get into the summit round. But yeah, absolutely, whatever you said was bang on. Because man who faced humiliation in South Africa, spent all his younger days in the very good country of Bonus point, Aravaliaro. South African lines, then finally realizes that something is not right in his nation, comes back after all his youth. It's been nicely spent across. Oh, I think has he gone to the lobby? I think Right out he of has bound, gone into right the lobby. out. Super tackle. 2 point Aravaliaro. And without a touch, I think Mukesh Chaudhary is a defender. He is going to raid. Now there, without a touch on Chetan Chaudhary, there he steps into the lobby. That's it. That's a raider going out of the bound. Sagar Panchal indicates the same thing. Yeah, then when you come back to India, yeah, of course the situations are different. The British Raj rule that's already conquered the entire nation, have their own setup, and yeah, with peace talks, diplomatic talks, try to convince it. Yeah, they had their different ways. Each freedom fighter had their different ways. But yeah, nevertheless, जैसे कि पुजारा है और पंत है, तो जब पुजारा और पंत खेलते हैं तो एकदम कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल है, लेकिन वो दोनों मिल करके आपको वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जिता देते हैं. तो क्या सही है, क्या गलत है? 1 point Aravaliaro. it's not about sahi galat. Yeah, correct. It's never about sahi galat. It's about the situations. Yeah, very right. Right. Yeah, single thigh hold on that left corner. But yeah, still fresh memories with that Border Gavaskar trophy that you mentioned. With so many injuries going on, Keteshwar Pujara and Pant both got together, and now Bhagat Singh, compare the talk of all the freedom foundations and all that freedom talks happen. It's that Bhagat Singh defender who does not bend in time. Nice strong reach by Rohit Beniwal. Gets a hand touch on him. Good work, very good work. But whatever was said and done, was much needed for the country to be still united. That's what most of the survey also, a recent survey also, actually indicating the same thing. The country shouldn't have been broken, because anything broken has not done well at all. Whatever period of history we take, it should not be in the case. It should definitely not be in the case. Because two close friends wanted to become prime ministers at the same time, and what they do, they give out the country, and we are just paying up all our tax money to keep up that partition. Right, nevertheless, let's forget about that, because it might get into something else. But yeah, come back to this challenger round where Richpal Jat has no challenge, and it is as easy as it has been taken by the Periyar Panthers. They're just going in and giving points in heaps to the Aravaliaros. I don't see any other team doing this. It's looking like a practice match. I'm sorry I'm saying this, but it's looking like it. यहाँ सुपर टैकल ऑन है. यहाँ पर साहिल बगारा एक बार फिर से आए. 40 सेकंड का खेल बचा है. सुपर टैकल ऑन है, और क्या सुपर टैकल में 2 पॉइंट ले पाएंगे, ये देखना है. वक्त गुजर रहा है. फ्रंट ब्लॉक आया, और यहाँ पर असफल फ्रंट ब्लॉक. साहिल बगारा को 2 पॉइंट मिल जाएगा. 1 point Aravaliaro. Jersey number 6 out. Good handwork. He just pushed Rahul Chaudhary. He turned his pages around. There. Turned the pages with both hands. That's good. Very good. Right. And Sahil Bagada gets another point. Yeah, so not a problem here for the Aravaliaros, as they are going in of almost getting closer to inflict another all-out on the Periyar Panthers. Aravaliaros also winning the toss, so they will get the first chance to raid. Full house in the second half. So, Navneet, it was 7 ones are 7, 7 twos are 14. It was 8 ones are 8, 8 twos are 16. And now it is 12 ones are 12, 12 twos are 24. I think the Periyar Panthers have, got a plan in their mind that they're going to give more than half the points today to the Aravaliaros. We'll slip into a short break and come back soon.
Welcome back. As 100 matches have been passed off, that is a very, very good feat for everybody to achieve that. I congratulate the entire team of the Yuva Kabaddi series to cross 100 matches in the summer edition. And it's not an easy feat to achieve. You need dedication, you need coordination, and you really need that understanding of one ship, everybody thinking on the same lines. That's what it's called. The one-man ship where everybody works for the same betterment of a series. And in the previous match, the Chambal challengers, what a strong domination from them. Yesterday, the previous match was just mind-blowing, because even without Sanskar Mishra rating well, we did speak about Ajay Maravi in the pre-show, me and Harshit. That's what exactly panned out to be. Ajay Maravi was somewhere even better. Sanskar Mishra, I think, underplaying when Durgesh Kumar was there, has lost a bit of momentum. And the Chola Veerans just could not go out there and find anything in that previous match of the 100th. The 101st, it's looking like the Aravali Arrows will probably go out and win handsomely on this. Right, finally Lokesh Gosalia is back on the mat. I think they have decided to play the second half very differently. Right, second half is first straight. Lokesh Gosalia, the entire first half, he was sitting there warming the chair nicely. And a running hand touch on Sahil Bagara got Monu Prasad out. Leadership. So even the inclusion of Lokesh Gosalia might not affect anything. As I'm now for you, along with me is Navneet. Hi Navneet. I think this is going the Aravali Arrows' way. नमस्कार नवीन, और सेकेंड हाफ में सभी दर्शकों का स्वागत है। 19.5 मिनट का खेल बचा है, 12 और 25 ये स्कोर है, और लोकेश गोसलिया आए हैं। लोकेश गोसलिया यहाँ पर घोंसले में चले गए हैं, बहुत ही आराम से वहाँ पर गला लगाया और ऑल आउट हो गई है। All in. I really want to mark this match, Navneet. 101st match. Whoever's losing this, I really want to see how much of a struggle that will be taken by them to, reach the summit round, and in what place. Because the Periyar Panthers have taken it very, very lightly. This is not the Periyar Panthers that are actually placed against any other team. Right. Leadership. Inclusion of Lokesh Gosalia also does not matter anything to the game. Yeah, ankle hold attempted on Navpreet. He has to go back. So Navneet, whoever loses this match, I really want to mark this, because I'm very poor in memories and I'm very poor in numbers. I just don't remember most of the things. But 101st, I have marked in my diary. The team losing this, I want to see which position they will be in the summit round. Because they have not taken this match seriously at all. जी और यहाँ पर सरदार चौधरी प्रेम का यहाँ शिकार बनाते हैं। 1 पॉइंट मिला। नंबर 77 आउट। 101, जो भी नंबर 1 से खत्म होता है वो भारत में अक्सर शुभ माना जाता है। और इस मैच को अगर आप जीतते हैं तो क्या आपके लिए ये शुभ लाभ वाला असर हो सकता है या नहीं? मतलब अगर आप सच्चे मन से खेलकर वो जीत को हासिल करेंगे, आप वो हकदार बन सकते हैं जीत की, तो तब जाके कुछ शुभ बनेगा। मतलब यहाँ तो लग रहा है प्रैक्टिस मैच का है, जहां पॉइंट हो जा रहे हैं। नाइस एंकल होल्ड फ्रॉम लोकेश गोसलिया फाइनली। और एकदम एज पर थे। इसी बीच फिर से एक बार यहाँ पर पेरियर पैंथर्स की तरफ से सरदार चौधरी आए हैं। 14 और 29 का ये स्कोर। और अरावली के पहाड़ में पेरियर के जो पैंथर्स है ये वो सेंध नहीं मार पा रहे हैं, और बहुत ही यहाँ पर सरदार को सरदार देखने मिला है। This is number 81 now. Yeah, Chetan Chaudhary once again just trying to play a high line defense, and Sardar completely outside the ball line, getting a point. And all the raiders watching this will be saying, "Wow, that also is possible outside the ball line. Can I also get that touch point?" But yeah, Periyar Panthers play a different team. They're not like this. They're really not like this. They're something else. 29 there for the Aravali Arrows, and Rohit Peniwala has no pressure whatsoever. And he does not even struggle with that. Right out. 1 point. Navneet, Periyar Panthers.
I don't know. I somewhere in your experience, have you seen any team practicing their kabaddi moves in without a match situation? ये मैंने देखा तो नहीं है, पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वो प्रैक्टिस तो करे. Yeah. Lucky that me and you can now watch it here. और सुपर टैकल ऑन है यहाँ पर. और ये क्या परसूट है यहाँ पर, Right बिना out of टच bound. किए आउट ऑफ Right बाउंड out. चले गए 1 हैं. point. Perrier Panthers. Yeah, right. और इसीलिए Pursuit was not necessary. Sardar Chaudhary और was आप- running in. And no आप जब touch by गाड़ी any स्टार्ट करते defender. हैं, Yeah. नवीन, गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं तो आप सीधे 5वें गियर में नहीं स्टार्ट करते हैं. वैसा ही कुछ देखने को मिला. Yeah, right. Now, this is now a defender himself going out. Rajendra Bakar, I think, will shake hands to Sardar Chaudhary. Yeah, even he goes outside the end line. No Arrow touch. shape. 2 plus 2. 4 Both point. the Perrier defenders Panthers. just going All outside out. the end Aravali line. Arrows. And yeah, Periyar Panthers are showing that they're trying to prove hard that this is not a practice match. And they're just going back on that end line. जी हाँ, 21 और 29. और पेरियर पैंथर्स को ये दिखाना पड़ेगा कि ये प्रैक्टिस मैच नहीं है, ये रियल मैच है. साहिल बगारा. Yeah, they और really वहाँ need पर to prove- वहाँ पर क्या पी रहे हैं? Yeah, I think he's sipping up a little bit of a water for sure. Yeah, Sahil Bagara, come on. Does not get anything. Looks at the referees. Look at this. Both the defenders. One, boom, okay. Have you seen that ever from any defender happening? Then Rajendra Bakar goes slowly towards the corner. Just takes the walk. And now watch what he does. He laughs and falls over the end line. And Navneet, you know what? Yeah, that's a nice ankle hold. That's good. That's very good. Right out. All these 1 visuals, point. Navneet, Aravali the Arrows. whole world is watching. और जब दुनिया देख रही है, it will be reflecting bad on your part. Right. However, whatever you do on the planning wise, how much can you go out there and help your friend, isn't it? जी हाँ. रिच पाल एक तरफ उनके नाम में रिच है और दूसरी तरफ पाल यानी कि एक अच्छा दोस्त. Oh, right. It's a complete English translation. That's good. That's 1 point. Mukesh Chaudhary is Bonus crossed plus 2 over. point. Aravali Bonus Arrows. plus 2. Jersey number Right. 1 and 3 out. Ray Kumar says 2 points. Let's see this. If the block Substitution. Perrier Panthers, please come. came in after Jersey the number 17 in. previous attempt. 5 out. Yeah, the block comes Jersey in. number 77. Where is the ankle hold? Jersey number The ankle 77. hold attempt Jersey right number 77. happens Jersey here. number 77. During the right coaching. Green card. No good. Prem Badu gets a green card. So the crossover has happened while the ankle hold from another defender was attempted. So 2 more points there for the Aravali Arrows. नकुल सैनी यहाँ पर आए हैं पेरियर पैंथर्स की तरफ से. और जिन्होंने अच्छा खेल दिखाया था, यहाँ पर पेरियर पैंथर्स फिर से थोड़ी सी कमजोर नजर आती हुई. यहाँ पर 4 का घर है और प्रेम बादू पूरा वक्त लेंगे और यहाँ पर पूरी तरीके से इंतजार चल रहा है. कोई कुछ नहीं करेगा. Yeah, he's trying to kill the time. Time out. Perrier Panthers. बोनस करता है, टपकड़ा 2 नंबर में बोनस करना है. सीधी सा बोनस करना है तो दोनों बोनस हो जाए तो आ जाना. 8 पॉइंट की ट्राई नहीं करनी. बोनस हो जाए 2 नंबर बोनस करना, आ जाए. इधर है टाइट रहना, कॉर्नर केच बनानी लोकेश आराम से बोल के खिला. कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं है. 12 पॉइंट की तो लीड आ जाएगा मैच आराम. बोनस आते हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं है. Right. Whereas Jay Kumar allows the game to proceed. Nakul Seni, he's been brought in from the bench, and Rajendra Bakar enjoys another point on the Right ankle out. hold. 1 point. Aravali Arrows. I think Periyar Panthers, as I said, Navneet,
and they're trying hard to make it a non-practice match. Right. निश्चित रूप से। और Right. यहाँ पर नकुल, कोई मौका नहीं नकुल को। 34 हो गया है। यहाँ पर एक सुपर टैकल ऑन है। रोहित बेनीवाल गए हैं। 11.5 मिनट का खेल शेष। और यहाँ पर आसानी से एक और पॉइंट लेंगे। लालच दिया कि मेरे एंकल को पकड़ो। राहुल ने Head वो shape. 1 point. Aravali arrows. Jersey number 6 सफलता out. नहीं मिली। So much of effort goes in every production, every lensman, every producer, every referees. I think everybody's efforts now being utilized for a practice match here. Right, not necessarily. That's why I once again go out there and repeat myself. 101st match. Whoever loses this, I really want to see them in what position they end up. Lokesh Gosalia also get a red point. Head shape. Wow. 1 point. Has that Clear ever Panthers. happened before? Jersey number 4 out. There you go. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेड पॉइंट लाया है। और लोकेश गोशलिया बता रहे हैं कि Right. रेडर्स आपको क्या करना चाहिए इस मैच में, इसका उत्तर एक डिफेंडर दे रहा है। But I really wanted Navpreet Singh to be a better raider. He is a good talent. But Right a out. super tackle point will Super be taken tackle. 2 by the point. top Period defender of the Panthers. Yuva Kabaddi series. And he can still hold on to that armband that he's got, the light green armband, Right. strong ankle hold. Yeah, Navpreet Singh is a very good talent. He should have been molded even more better because he's played previously as well in the Yuva Kabaddi series arena, and he's been left out actually without being motivated and cultivated into a better raider. That is why the Arab Arrows are still struggling in whatever conditions they are. Because Sahil Bagara is good, but he also cannot take up that lead raider responsibility. And now they are playing on the do-or-die race strategy. They want to kill some time here. Lokesh Gosalia comes in, tries his hand on Chetan Chaudhary on that right corner, does not get it. More importantly, Navneet, see, the point why I'm saying that is because you finish in the top 4, you get multiple chances to actually reach the July 19 finals. If you don't finish in the 4, you will be really left wanting for. Now, do or die right, Navneet. Richpal Jat. Easy point. Head shape. 1 point. Period Panthers. Jersey number 81 out. पता चलता कि डू और डाई रेड है, वहां पर पॉइंट लेकर के आ गए रिचपाल जाट। और क्या हाथों का एक्सटेंशन था। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी एक दिन में नहीं आती है, लगातार प्रैक्टिस करने से आती है, और रिचपाल जाट ने वो करके दिखाया। इसी बीच यहाँ पर साहिल बगारा डू और डाई रेड 25 और 35 का स्कोर। 8.5 मिनट का खेल बचा है। साहिल बगारा 13 पॉइंट ला चुके हैं। क्या इस बार डू और डाई रेड में उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं? डिफेंस मुस्तैद, डिफेंस अलर्ट। वो बोल रहा है कि आप यहाँ पर बहुत ही नजदीक रह गए, पर उस लाइन को क्रॉस नहीं कर। Right out. 1 point. Period Panthers. Very close. Very, very close. And they say, no, don't take the review. Come back. It's okay. Ankle hold came in later. First the block. And then Sahil Bagara almost very close. Very close to the midline. Let's see what's going to happen in the next frame. Doesn't challenge it. Doesn't cross the midline. Lokesh Gosalia comes right on time. Just touches the midline. He's been pulled back. Ankle hold. First time. My God. Head shape. 3 plus 2. 5 First point. time. Period Panthers. First All time, out. Sardar Aravali has arrows. been attacked is what I felt. But no, just forgot. All Peria in. Panthers Aravali arrows. want to have that soft corner. जी, और उस मोमेंट को याद रखना पड़ेगा जब लोकेश गोशलिया ने वो एक पॉइंट लाया था और टीम ऑल आउट के नजदीक थी, वहां से बचाया था। Right. I think now the Peria Panthers have realized that this 7 minutes after this raid, I think we will have a strategic timeout.
this 7 minutes. They should stop Right hand having shape. that top 1 corner. point. Aravali arrows. Jersey But, number 1 now. again, just easily given away by Mahesh Chaudhary. Correction, Mukesh Chaudhary there. Strategic timeout. पाँच के कुछ को नहीं, 5 की लीड। खड़ गया मुकेश, उस तक कहते इतनी बार बोनस मार ही नहीं रहा वो। आराम से बढ़िया बोल के खेलो, बढ़िया सरदार, बहुत बढ़िया। लोकेश बोल के, ठीक है, आराम से कंट्रोल करना। जहाँ देखे ना उसका एक का ध्यान रखना तेरे को, स्पेशल वो पकड़ा ही पकड़ा गट्टा, तो उस पर बोनस मारना है ना, तो उसकी जगह उस 2 पर मार लेना। नहीं उसका सेकंड घुसता, सेकंड की कार्रवाई नहीं करवाते तुम। क्या कॉर्नर खेल रहे हो तुम? कोई भी कॉर्नर खेलो, कोई सेकंडों को घुसाते ही नहीं। प्रेम सेकंड से तो कार्रवाई कराओ, लगना चाहिए ना, बढ़िया खेल रहे हो। सेकंड से कोई कार्रवाई नहीं करता, रेडर केवल रेड के लिए थोड़ी ना है, डिफेंस भी तो करेगा। चलो बढ़िया खेलो। Three more seconds, 2 more seconds for the match to resume. As the Periyar Panthers are really trying to get back to the game after the initial first half falters that we actually saw. But yeah, so the coach wants the in defender also to have an ankle hold support. He does it. Rajendra Bakal Right goes out. for the back hold. 1 And now point. Preet Singh Aravali arrow. listens to his coach and goes for the ankles. Something finally happening of whatever the coach actually told them to do. Right. यह नकुल वहां पर कोई मौका नहीं था उनके पास। रोहित बेनीवाल फिर से आए हैं। 6 मिनट 6 सेकंड का खेल, यहाँ पर 5 डिफेंडर्स। क्या 5 डिफेंडर्स रोहित बेनीवाल को रोक पाएंगे, या रोहित बेनीवाल उसमें से एक खिलाड़ी या उससे ज़्यादा का शिकार कर पाएगा? वक्त गुजर रहा है, और जब वक्त गुजरता है तो प्लेयर वही करता है, खाली हाथ वापस जाता है। I think now let's go and see if possible that mini points table. Sure, Deva and team and everybody there in the graphics will need a lot of time to get that sorted. I think if we can get it any time, it'll be interesting of the mini points table, because I really want to see where can the Periyar Panthers end up if they don't come back in this match. They've taken it a little lighter side, little softer side towards the Aravali arrows. Now Preet Singh came in for that pursuit and gets an easy point again Right hand on that shape. right corner. 1 point. Aravali arrows. Jersey number Why 6 does out. the Periyar Panthers not play like this against any other team is what the other teams will be thinking. And even in the referee counters, they're just having a small smile on their face. Rahul Chaudhary Right. once again takes the ankle hold, attempts an unsuccessful one. Right, whenever the mini points table is ready, I think we can fire it and just have a look at that. कानाराम चौधरी यहाँ पर आए हैं। 4.5 मिनट का खेल है और फ्रंट ब्लॉक आया, उनके पास कोई मौका नहीं। Right out. 1 point. Aravali arrows. That's interesting. It's really interesting. Krishna there in that orange t-shirt, just front of the fan. He's been a very good support system to Yuva Kabaddi series. As, Right. the raider himself was sitting down first even before the defender came in. And now super tackle on. I think Periyar Panthers want to inflict this numbing if they want to come back. जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर साहिल बगारा आसानी से 1 पॉइंट ले Right लिया hand है। और shape. 1 point. पैंथर्स Aravali arrows. पिछले बार जब Jersey number अरावली 3 आरोज out. को ऑल आउट की थी तो लग रहा था कि गेम में वापस आ जाएगी, और इस वक्त फिर से यहाँ पर अरावली आरोज की जो पोजीशन है बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। Right. Once again, Lokesh Kosalia has been asked to go in and raid. Can he save the Periyar Panthers? No, does not get anything. Just a small question on Ketan Chaudhary from the right cover. Nothing there, nothing there. सुपर टैकल ऑन है, लोकेश घोषलिया है वहां पर। साहिल बगारा को एक और पॉइंट मिलेगा। Right hand shape. 1 point. Aravali arrows.
Jersey number 55 out. And even Bhagat Singh joined hands with the Aravali Arrows in giving away that point. Tries for the frontal block, but Sahil Bagara Right. much easy on that escape. So, right, Periyar Panthers, the third all out. Almost there, staring at their face. Just one man standing is not. I've never seen Bonus that. point. Periyar Panthers. Never ever seen Right that. out. 1 plus I know 2 he 3 wanted point. to get the Aravali bonus Arrows. point. All out Periyar Panthers. Anybody watching this match, any youngsters, it's the best example of not to how to play kabaddi. जी लोकेश गोचलिया पिछले बार पॉइंट लेकर के आए थे, यहाँ पर कोई मौका नहीं था लोकेश के पास. Substitution. Aravali Arrows. Please come. 70-18 in. 81 out. Next. 30 in. 77 out. 7 in. 8 out. 12 in. 10 out. The previous time Aravali Arrows did this is when they were losing very Time out. badly. Periyar Panthers. Now they have done that just because Periyar Panthers have taken it so lightly on their shoulders. Yeah, can we have that mini बकवास points करने लग table रहा है. very soon? 32-44. पंचोली तू जा रेड पे. ठीक है, खेलो. And even they are not even thinking about at least getting 1 point out of this match. Yeah, there we go. Currently, the Periyar Panthers, they're I think on the third phase, and I think if Right they out. lose, it 1 point. Periyar Panthers. will be a big loss. I think we'll have to stick with that more just to see where the Aravali Arrows was. It was just taken off in a flash. Right. Yeah, we will keep speaking about it more. We'll definitely keep speaking about this more, and I will not forget this 101st match. Sure, Harshit Sharma also will be marking in his diary. Harshit Sharma was going all guns blazing, Navneet, saying rivalry, ye, wo, sab kuch on this match. I told them, see, again, listen, there's going to be a lot of friendship on the kabaddi mat when these two teams meet, and that's what has happened. That's once again is what has happened. And the Raiders struggles to get through. Right out. Different 1 comes along point. nicely. Aravali Arrows. जी हाँ, और यहाँ पर नकुल असफल रहे हैं. 33 और 44 ये स्कोर था. एक Right. पॉइंट के साथ अरावली एरोज के 45 बन गए हैं, और यहाँ पर रोहित गए हैं. Now just watch this. Now whatever Rohit does. Now where are the Aravali Arrows? There. Right at the bottom. Right at the bottom. The Periyar Panthers have Right done out. their bit. 1 point. Periyar Bring the Panthers. Aravali Arrows from that bottom place on from there to top. Yeah. That smile tells all the stories. That smile really tells all the stories. But yeah, just they'll have to realize that Periyar Panthers, if you don't finish in the top 4, what will be losing, what you will be losing in the summit round is a big chance to get to the finals. And I really want to see where the Periyar Panthers actually finish. Nice ankle hold. Right Good out. work 1 by point. Rajendra Bhatt. Aravali Arrows. Substitution. Aravali Arrows. Please come. Jersey number 18. 21 out. Now they're just going through with the motions. Periyar Panthers, and they just want this 40 seconds to get over soon so that they can go back and plan really better against some other team. My God! Better shape. 2 points. Yes, no, Aravali Arrows. I'm not able Jersey to number believe 9 my and eyes. 6 out. Navneet, I don't know about you, but I can't grind my words. I can't mince my words. बिल्कुल, और 50 पॉइंट के नजदीक पहुंच गए हैं. इन आने वाले 28 सेकंड में मैं एक्साइटेड हूं ये देखने के लिए कि अरावली एरोज क्या अपना अर्धशतक पूरा करती है पॉइंट्स पर. All credit goes to the Periyar Panthers, so don't worry about that. They will definitely be happy and thanking hands and shaking hands as well for that attempt. No, Nakul Saini says, okay, listen, even I need Better some shape. points. 1 point. Periyar I Panthers. need Jersey number 7 something in out. my favor as well.
Once again, there was a weak attempt there by Dev Gutkar. So finally, the last raid of this match coming up. And look who's gone in. Look who's gone in. Can you believe this? Can you really believe 1 this? point, Aravali Arrows. The match Jersey finally number comes to an 70 end. now. Aravali Arrows will get 49. And all thanks to the Periyar Match Panthers, over. the Aravali Arrows have won their first match in the Challenger round. जी हाँ, 35 और 49, 49 होना चाहिए मेरे ख्याल से वो स्कोर। और अरावली एरोज इस मैच को जीत गई है, पहली जीत। और दोनों टीम यहाँ पर एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए, फीस्ट पंप करते हुए If you look at that high pointers very soon, as we will all be gearing up for the real tough rivalry battle that will come up. 102, match number 102, Humpy Heroes versus the Palani Tuskers. That's what we are all gearing up for now. As this will give some time for Arshit to go back and get ready for the post-match presentation. Even Sahil Sagar Panchal behind in the end line. Even he is knowing what this match will be panning about. He was also seen in a relaxed mode, Sagar Panchal. But I think now that relaxed mode will be taken off, because the Humpy Heroes will come down and it will be against the Palani Tuskers. One team who is not yet lost in the Challenger round, and one team who are searching for their first victory. All odds stacked up against Gagan Gowda in that left corner where Tamil Arasan. The left corner is very, very strong for the Palani Tuskers. So that is how the 101st match panned out. It was comfortably won by the Aravali Arrows. That's how the summary will be read about. एक वक्त आया था जब 31 और 35 का स्कोर हो गया था, जो लोकेश घोषलिया ने 1 पॉइंट लिया और उसके बाद वो जो ऑल आउट कर गई थी उनकी टीम ने, पर उसके बाद अरावली एरोज फिर से एक बार अपना दम दिखाया और मैच को जीत गई है। मैच समरी की बात करें, 49 और 35 ये स्कोर लाइन रहा। 8 पॉइंट्स में 28 और 19 यहाँ पर लीड कर रही है अरावली एरोज। टैकल पॉइंट्स 13 और 10 वहां पर भी लीड। ऑल आउट यानी कि 5 बार ऑल आउट हमें देखने को मिला है। 6 और 4 ये स्कोर रहा ऑल आउट में। एक्स्ट्राज में 2-2, सुपर हिट्स 1-1, सुपर टैकल्स 1-1। Especially on a kabaddi mat, it has always been told that there is no hiding place. In any other game, either in hockey, especially cricket, football, there are hiding places that you can hide under a radar, but not on the kabaddi mat. So no radar to hide, and everything will be picked up. That's what happened today in this match, and the whole world has seen what just happened. But nevertheless, I think Periyar Panthers will be happy that the Aravali Arrows have won their first match. Nice that this lad has got a Best Defender award. 7 tackle points for him. But I'll be waiting to see where will the Periyar Panthers end up in the summit round. Currently number 3. It's not going to be a soft and easy spot to be. It's really not going to be a soft and easy spot. And look at Aravali Arrows. Because of this massive victory, without even thinking anything, from the bottom of the table, they've come to 4th place. Right. I really want to see where will the Periyar Panthers end up. So that is my eyes on Periyar Panthers in the summit round. Let's see what that's going to happen. But the next match, Humpy Heroes and Palani Tuskers. That'll be really good. And Navneet, thank you so much, as we spoke really nicely about some freedom fighters and all the history that was connected to our country. We will come back soon for the real tough and the real rivalry match, 102nd match, Humpy Heroes versus Palani Tuskers. Stay tuned with us.
So it is a third win for Aravali Arrows against Periyar Panthers. Welcome to the post-match presentation of match number 101 of Yuva Kabaddi Series Summer Edition 2023. We would like to start this presentation with thanking all our partners. First, broadcast partner FenCode, fantasy partner Dream 11, physio partner Department of Sports Science, Jesus College of Physiotherapy, hospitality partner Ginger Hotel, our healthcare partner Ramakrishna Specialty Hospital. In the presentation today, we have Mr. Amar Verma, sir, technical official Yuva Kabaddi Series. हम आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे इन द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सर। ये मुकाबला खेला गया पेरियार पैंथर्स और अरावली एरोज के मध्य। हालांकि पेरियार पैंथर्स बाकी टीमों के बड़े विरुद्ध में नजर आती है, बट अरावली एरोज के विरुद्ध हमेशा अक्सर मुकाबला थोड़ा हार पजाना लगातार करती है, क्योंकि अरावली एरोज अच्छा खेल का प्रदर्शन करके वहां पर मुकाबले को इस बार भी जीता। सीधा चलेंगे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की तरफ और शुरुआत करेंगे विद फर्स्ट बेस्ट रीडर ऑफ द मैच के साथ, जो रहेंगे अरावली एरोज के साहिल बागड़ा, जिन्होंने प्राप्त किया आज अपनी टीम के लिए 16 और 8 पॉइंट्स। आइए देखते हैं इनके प्रदर्शन को। तो चलिए, अरावली के अच्छे खेल के चलते यहाँ मुकाबला उन्होंने जीता है, बहुत ही अच्छी रेट थी। तो डिफेंस में भी इस खिलाड़ी का फॉर्म में आना कहीं ना कहीं एक बेहतर सिग्नल है हम सभी के लिए। नाउ द टाइम फॉर द डिफेंडर ऑफ द मैच, वो रहेंगे अरावली एरोज के राजेंद्र भाकर, जिन्होंने प्राप्त किया अपनी टीम के लिए 7 बेहतरीन टैकल पॉइंट्स। निगाहें डालिएगा इनके टैकल्स पर। Now the time for the Kabaddi Kamal of the match, और ये जाएगा पेरियार पैंथर्स के ऐसे खिलाड़ी को जिन्होंने शानदार सुपर हिट लगाई और ऑल आउट किया था एक बार अरावली एरोज को, और मैच अपने पक्ष में लाने का पूरा किया था प्रयास। वो थे बड़े ही असरदार सरदार चौधरी। So that's all from the post-match presentation of match number 101. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
Humpy Heroes will take on the Palani Tuskers. And this is a firework match for sure. And I can be my own self of having all that energy and enthusiasm to go ahead and ask Arshit to bring both the teams on the mat first, please. खुद से ही जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं हूं जिंदगी की, मेरी टीम के अंदर ही एक जमाना है और इस जमाने की, इस समर एडिशन की दो सर्वश्रेष्ठ टीम यहां आने आ रही है भिड़ने। देखते हैं कौन दिखा पाएगा अपना अति उत्तम और सर्वोत्तम खेल। The biggest derby, the rivalry of rivalry with two ties in their history. Let's invite first the team of heroes, Humpy Heroes. And the boys in blue really need to get their first victory in the challenger round. It's not going to be easy. Let's see what's going to happen. Now we are inviting the team who is on a mission to score and conquer their opponents. Let's invite the team of Tuskers, Palani Tuskers. They will have a plan cut out for the cutout raider, I should say, the glorious raider of the summer edition, who is just 5 raid points away from reaching that 200 raid mark. First raider to reach 100, first raider to reach 150, and he might as well be the first raider to reach 200 raid points. I'm speaking about Gagan Glorious Gowda. Of course, the Palani Tuskers will have a big plan against him, especially Tamilarasan and that right cover. That is going to be very, very crucial to stop that tall raider, as we see him right there in the middle, number 77. That's nice to see him there on and start the match from the starting 7 as well. They're coming in after a break day, and nice to see Sai Prasad come in and become the third raider in place of Kiran BS. Yeah, that's a very good change. And Madhu Kaverappa will be the 3 raiding trio for the Humpy Heroes. Narsim Murthy and Sukesh Kullal, trusted corners, and no Shivakumar, right, top third defender of the summer edition, does not find his place in the combination there with Suhas Nagraj. They're going in with Rutik. Shashank, right, he's back. That's nice as well, Shashank. And Krishna Kumar, Shiv Kumar, Sudarshan and Teja Nayak will be in the substitution lines. Along with me is Radhika Reddy. Good evening, Radhika. Thank you so much, Ravi. Even the substitution, lineup for Humpy Heroes, they sound so terrifying. But then this is the Palani Tuskers, who haven't lost a match in the challenger round. Mukesh Kannan, the captain, will be leading from the front, and he'd be supported by Ram Kumar and Stuart Singh in the raiding department. In the covers, we have all trusted Arul and Ajay Muthaya. And in the corners, we have Purushothaman Palnivel and Vishwanathan Vijay Kumar. And Jay Surya Nagarajan will get to see him as a substitute, along with Pasupati and Ayyanathan, Tamilarasan and Manikandan. Did I pronounce all of them right, Naveen? Yeah, very much. Totally. Yeah, but surprise changes there from Ilavarasan. I was expecting Gagan Gowda to go against Tamilarasan, who was in form, but Vishwanath Vijay Kumar has been brought in. Yeah, I don't understand sometimes Ilavarasan what he actually thinks in with all those silent brains that he's got. But Sanskar Naveen Mishra, second best raider. Durgesh Kumar missing out after he played that match against the Humpy Heroes. After that, he's still been struggling. But the top third raider has been replaced. Right, there you go, Radhika. That was Shiv Kumar first, and now it's Rajendra Bakar there. Exactly. There is a tight-knit contest now, but then the chat is still led by, Lokesh Gosalia and Ankit Jad on the second, and yes, Rajendra Bakar finds his foot there on the third spot. Yeah, all thanks to Periyar Panthers with the way they played their practice match yesterday. I mean, in the previous match, just that match 1-1. I'll keep my eye on where will the Periyar Panthers finish in the summit round. Right, as Akshay Desai flips the coin over, and Palani Tuskers have won the toss, and the first raid will happen from Madhu Kaverappa.
and along with Madhu Kaverappa, it will be really important to see this man, the glorious Raider, 195 raid points. And he will have a bit of a breather today because the informed Tamilarasan is not in the left corner, and a very inexperienced and not so much in form of or not so much in match practice left corner Vishwanath Vijay Kumar will be there along with Arul Nandababu. So no proper right cover, no proper left corner. I think this is advantage to Gagan Gowda to start off with at least. Exactly, being a right raider, that would definitely help him. And this is Ajay Mutea, a proper defender there. 17 matches played, 41 tackle points, tackle strike rate close to 50. But I think he'll have a challenge from the opponent Raiders, Naveen. Yeah, and that heavy bandage behind his neck, that's a bit of a concern because he got his neck tangled between the Raiders' legs, and he did not come back on the match. But today he is there. He's looking fit with a lot of bandage on his, the neck, especially on that spine region which connects the neck. Hope he's all fine with that. Which current form of Gagan Gowda do you think he can cross 250 raid points? And this is a question that's been asked by Jatin Mitra. Yeah, all chances are there. Today he will reach 200, and definitely, why not? If the Hampi Heroes does not finish in the first or second place, he will get more matches to play. But I don't think so. 250, it is a little doubtful. For me, it is a little doubtful. Radhika, what do you think? With his strike rate, he has 92 plus. I'm sure he'll get close to that, Naveen. Yeah, close to that. Yes, very much close to that. Because not many games left in the challenger round. And 250, Jatin, you might be a little disappointed. But that's the hardcore fact. As Nasimha just having a conversation out there with his manager. Very silent manager, I should tell that. Out of all the managers I've seen, the Hampi Heroes' manager is more silent and more dedicated around. All the managers are dedicated, but he's the silent one. That's what I've seen him as. Palani Tuskers, they really did not start that booster round well. But the challenger round, yes, fabulous work. And no J. Surya Nagarajan, no Tamilarasan, no Ayanathan Ranganathan. Complete surprise there by Ilavarasan. Vaibhav Arora asks, where do you see the Palani Tuskers finish in the points table in this challenger round? Okay, so I really want them to finish at 1 or 2 with the way they have started this challenger round. That's very important. But if they keep on making changes in the set 7, I don't understand why that has been done by Ilavarasan. Even in the previous matches, Radhika, he was trusting upon a different left corner, a different right cover, and today also he's gone in with a different combination. I don't understand why Ilavarasan is not satisfied. For a coach who's really seen through this Palani Tuskers in the previous editions in the Puducherry leg where he led them to the finale, he had a set 7. But I don't know in Mysuru what is he eating or what is he trying to think, and that water, has he been drinking that water where he's allowed to think more radically, more differently? As we will speak much about it along with Radhika as well as we go to that countdown and get this 102nd, the real rivalry match underway. Yeah, let's do this. Here we go. Just watch. The toss was won by the Palani Tuskers and Madhu Kaverappa will start the proceedings as Sagar Panchal. Even he had a break match, the previous match, even he was taking it very lightly. I saw in one frame, he was even yawning. Yeah, that was a kind of a match, the previous one. But now, he will be all up and awake as this is going to be a tough one. Radhika, your thoughts on Ilavarasan constantly changing this lineup and setup? Especially, not wise coming to this end of the tournament. At least not changing the defense. That's definitely not wise. Changing the Raiders is still okay, but not the defense, because when we talk about combinations, it has to be a set one. Yeah, I'm totally with you. Now you can experiment with your Raiders because that's not going to hamper too much. But the defense, I doubt if Ilavarasan has miscalculated this somehow. Narasimhamurthy, strong double tie hold on to it. 1 point. First point. Hampi Hampi Heroes. Heroes. Narasimha is happy about that.
Yeah, Stuart Singh, he just went blindly, and that was a beautiful double thigh hold, and the left cover came in right on time. And now see, just imagine if it was Tamil Arasan there. Gagan Gowda would have really thought about it. And because there is Vishwanathan Vijay Kumar, who's inexperienced, having no match practice, he can raid freely. But Ajay Mutaya has come in onto that left in. He's been forced to come in. And what is this? What is this? Was it a pursuit? No, it didn't look like a pursuit. That is why I say lack of match practice. Not needed. Yeah, he wanted to go for a pursuit, being the corner defender. He thought he would get it, but we know Gagan how speedy raider he is, and he can just walk as speed as he can into his court as well. Yeah, totally. Oh my God, Madhuka Verappa. He's taken the responsibility to go into a do-or-die raid. He is not sent out Sai Prasad, and he crosses out with the legs. 1 That is point. the problem. Hampi When you Road. don't have Number the 2 out. covers in the chain. All Tamil teams, this is another example for you guys. Have the chain in the covers. Yeah, when you have a raider in your hand, this is what happens. Exactly, and also maybe the left corner would have come in to support Naveen. Maybe just waiting there watching. Even the Kannada team has picked up that bad habit, Radhika. I call it bad habit because see, Suhas Nagaraj is standing with Madhu Kaverappa. And Hrithik as a defender is having a resting time. That too when Ram Kumar, when a big raider like Ram Kumar is holding, and he easily gets a bonus point. And what has gone wrong with our Dravidian teams? I don't want to call it South India, I want to call it Dravidian teams. Why are they holding chains with one raider in their hand? I just don't understand this. As Sai Prasad comes into his first raid, Radhika, I don't know. Even the coaches are really baffled with this. They agree with me that we have asked them not to stand like that, but the players stand. They are not, I think, correcting it. I don't know. At least. Yeah, now they stand correctly. No, now they stand correctly, Yeah. Radhika. See this? Exactly. Gagan is left alone, and the covers are standing in a chain. Yeah, and even then they don't go in the chain. 2 Come points. on. Paleta Hrithik, scores. you are Number a left 4 cover and 2 defender. out. And the right cover should have come for it, isn't it? My God. Exactly. Though he's close to it, but the angle will be right for the right cover to go for the dash, rather than he changing his own completely changing his direction of the body and going through the dash. Yeah, Radhika. Kagappa turns right. Letter shape. Crosses the midline. 1 point. Hampi Road. Number 8 out. Victorious raider. For a raider like Gagan, you can't go solo. You definitely can't go solo. Great. Because he's such a tall raider. If somebody do not take care of the lower body, he just slips out. Correct. And why did he go solo? Because he was standing with the raider. Simple. As simple as that. Stand with Mukesh Kannan. He's not going to come with the tackle. Not going to support you. And also that previous attempt by Hrithik. Sukesh Kulal and Hrithik are a good combination. When Sukesh Kulal is on that left corner, Hrithik generally plays the right cover, and some sort of friendship goes on with Hrithik and Sukesh Kulal. Not so much with, I think, Suhas Nagaraj. Yeah, Shiv Kumar and Suhas Nagaraj is a good combination. That's why we were speaking about don't change your defense combination, and Sai Prasad gets 1 his first point. Hampi Road. Number 3 out. And as you said, Naveen, this is not the right time at all to, play with your defense setup now. Totally not right. Yeah, for both the teams, or rather, whoever. Right, Deva is asking me a very tricky question. As I think Deva also wants to participate in the Ask the Expert contest. Oh, no touch! Fast Mukesh comes in, gets it on Narasimha 1 Murthy. point. Paleta scores. Number 1 out. With what fifth touch Mukesh has got. Radhika, Deva, our PCR director, asks me that team do I support? Is it the Kannada team or the Tamil team? Yeah, because he knows this. Yeah, because my mom is Tamilian, dad is a Kannada guy. I speak both languages. I'll tell you what, Deva,
Your, You are in Mysuru. your karma bhumi is Bengaluru, so you better stick to Hampi Heroes, Naveen. No, I would want to warn Deva. Deva, listen. பொன்னி நதி வந்து அங்க இருந்து தான் வருது நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு. தேவா கேட்டுட்டு இருப்பேன்னு எனக்கு தெரியும். இப்போ நீ வந்து என்ன பண்ற, மைசூர்ல இருக்கிற வரைக்கும் நீ ஹம்பி ஹீரோஸ் தான் உன்னோட ஆதரவை தருவ. அவ்வளவுதான் நான் உன்கிட்ட எதிர்பார்ப்பேன். பட் nevertheless, the Palani Tuskers win. You know what, 1 point, Palani Tuskers, number 9 out. Kaveri Nadi, okay, Kaveri river that flows through the Mysuru towards Tamil Nadu as well. So unless and until Deva is in Mysuru, he should also support Hampi Heroes. That's what I said. And the one who definitely had big support on the stadium, of the stadium, in the commentary box is Gagan Gowda. No, not in the commentary box. Right, he gets the bonus point, I think. But, Bonus point, Hampi Heroes. Yesterday in the post-match show, you know, he's a different person with the mic and without the mic, and I'll tell you what, he's learned the skill of corporatism already. So whatever trials, whichever team he went for the trials, I think one person out there is very close to Radhika as well. As the dash came in nicely, Stuart Singh has been dashed out. 1 point, Hampi Heroes. I think Gagan God has drank some water from Hyderabad, and he's learned how to speak in the mic, Radhika, because in the post-match show, I asked him, so many people give you so many good advices, and without the mic and camera, he agreed to whatever me and Madhu Kavirappa told, that utilize the lobby, turn towards your right because you're not doing it and all that. And when he did it and he got escaped from the tackles, I just wanted to see who does he actually give the credit to. Is it Madhu Kavirappa or 1 Narasimha? point, Who does he want Hampi to say? Heroes, number And what 8 he out. said? He said, I'll do what I feel like doing on the Kabaddi match. I said, oh my God, there is Hyderabad water running in his body. Great. I think he's sticking to his instinct, Naveen. Come on. I think Srini asked him to tell all that. No? Radhika? Because he is being politically right as well. Srini at home, he doesn't discuss anything about the teams. Bonus plus point, Palani Tuskers, number 4 out. Correct. The politically right thing is coming. Right, as Sukesh Kulal makes that error. Again, a strong bonus attempt. Why, Sukesh? That's okay. When the raider is attempting the bonus, don't go for the ankle holds. As Sai Prasad is good as a third raider. He's much better in fitness. And I'll tell you what, Sai Prasad, Radhika, his father Bonus point, runs a Hampi Heroes. academy in Mangaluru. He's from Mangalore, Udupi basically. And that academy is free. His dad wants to have Kabaddi players come in and learn Kabaddi free of cost. It's not charged. Of course. It's not, that was really good that he spoke about that. And Because I'll tell how you many something, times- Naveen. Yeah, Radhika, go ahead. Bonus plus point, because Palani in Tuskers, Hyderabad, number even 16 out. Srini is willing to teach young players free kabaddi, but there's nobody showing interest. Wherein if you look at the Haryana and all, they are paying to get learn kabaddi there. Correct. I really want Srini to keep up that confidence. One way or the other, it will happen. I'm sure might be few hard steps to start off with, but my support to Srini as well. Back hold, and Gagan Gowda does not turn right. Does not utilize the lobby. 1 point, Out you go, my Palani diplomatically Tuskers. correct friend. Sit on the bench for a while. This is very rarely we have seen a solo tackle going on Gagan Gowda with a back hold. I mean, normally we see him going for a chain or for double ankle holds. But then I think this is one good lesson for the rest of the team's defense that Gagan can be caught like this. Yeah, totally. Even all those left corners who've done well have gone in for the back holds. Oh my God! Oh my God! That 1 was point, with extra Palani pace. Tuskers, number 2 Giving away out. a point to Stuart Singh. But yeah, I was just speaking about Sai Prasad. His father, Mr. Gopinath Kumar, he was also a Kabaddi player. He started playing Kabaddi because of his father as well.
and he runs an academy which is free of cost in Mangaluru. And I'll tell you what, Radhika, it's not just teaching kabaddi. His academy, or rather his father's academy, or now has been undertaken, and he also goes out there as Sai Prasad. They take care of the medical insurance, they take care of any injuries, they take care of the lodging of players, boarding of players. They can stay there in the academy. So it's a very good support. Of course, locally they're getting good support financially, as Udupi also is a very big place. Mangalore is a very strong place for kabaddi because we've seen Ravi Shetty coming in from there. Of course, we've seen Sukesh Hegde, Prashant Kumar Rai, everybody from that belt. And that is why Sai Prasad. And how did you forget Mamta Pujari, Naveen? Oh my God! How can I forget her? Running at catch, I think he's got Purushottam Palnivel. Yeah, Mamta Pujari. Definitely. 1 point. Hampi Heroes. Number 3 out. I go ahead and always tell that. Mamta, you just got married too early. You should have waited for me. That's what I keep telling her. But you did not wait, is it? I am still waiting. All right. Now, what a lovely lady, really. Oh, is he broken the chain? No, he's not. Wonderful chain tackle. You put down 1 point. Ram Kumar. Hampi Heroes. After a long time, Hampi Heroes get a tackle point. And to our surprise, Naveen, there is not even just one tackle point from Palni Tuskers and nothing else. And is this a super tackle? No, 4 of them. 4 of them. Yeah, 1 tackle point. Why? Because Yuva has changed those combinations of defenders. I'll tell you what. I think the only reason he's brought in Vishwanath Vijay Kumar is because he's more taller or heavily built than Tamilarasan, and he wants he wants Vishwanath to go for the back holds against Jagan Koda. Apart from that, I don't see any reason why Tamilarasan is not in. Because the last 2 matches he's got his high five. The last match he played, he was the best defender of that match. I think only for that reason, Radhika, there should be Vishwanath who's coming. For me, this is not the point where you experiment with your defense. That is the only thing for me. They might be doing very good off the court when they're doing practice sessions, but then, the combination and the way they strategically set, that should not be changed. Yeah. See, that is why they've got 1 tackle point. That's been the problem, because you don't see any cover attacking, and that is why Hampi Heroes have also managed to keep on fighting. That's been the biggest issue. Nilavarasan, I'm sure, will think about it in the second half. Maybe try and have that substitute, because he's got Tamilarasan in the substitution lines. Got Jaisuriya Nagarajan, and now Mukesh wants to inflict the do-or-die raid. Right, as Madhu Kavirappa once again goes it. He's been tackled out once in a do-or-die raid, and now he does not backtrack. Was that a neck holding? Headed out. He came from behind. Palni Tuskers. Vijay Kumar put his body behind Madhu Kavirappa. Yeah, this is a nice block. And the lower body is being taken care of. So completely off the mat. Off the mat, and he should be confident in that tackles, because Madhu also is a very strong raider. He could have backtracked him and gone to the midline, but now Stuart Singh, can the defense be quiet? Can the defense not be provoked? There are 3 defenders and only 1 raider. Nasim Murthy has been provoked. 1 point. Could not have gone in last number 10 1 seconds. out. The pressure was on Stuart Singh. That's a big error. Absolutely, because Palni Tuskers are playing on do-or-die raid only. Palni Tuskers. You have a defense of 4. You should have just waited for Raider to do his work. சும்மா போனீனா அவன் போக மாட்டான் டீப்பா நீ ஃபேக் கொடுத்துற ஏன்டா உள்ள வந்தா குத்திரு அந்த பக்கம் வேற டிஃபென்ஸ் வீக் ஆடிட்டே இருங்க ஸ்கோருக்கே ஆடுங்க Hilavarsan says உள்ள வந்தா குத்தல வெயிட் பண்ணு strong defense, and he wants the Raiders to keep on going. Let's listen to Narasimha. ஒரு அடி அடிச்சால் ஒன் வெயிட் பண்ணி Oh my God. You know what, Radhika? Like an old tape recorder, I have told Deva that, listen, please go to the coaches of the teams who are trailing. That's like, millionth the time. I don't know if there is a word called billion,
billion times I've told Deva to go to the team which is trailing behind because we need to know what their plan is. Bonus plus point. And Deva Hampi is Heroes. Deva. Number 8 out. Exactly. The fight back stories would be interesting to hear. How the coach would. Oh, that's a brilliant bonus, Naveen. And look at that. No coordination whatsoever in the defense. Yeah, perfect bonus executed and the hand touch. Wonderful work. Arul Nanda wanted to dash Sai Prasad, but dual-hearted. Ram Kumar kicks Suhas Nagraj. And yes, the right flank is looking 1 point. weak as Palli Tuskers. Number 16 out. Narsimha Murthy is giving away points and now Suhas Nagraj. Great. He thought he might go for a hand touch, but then brilliantly he shifted his momentum for the kick. And Gagan Gowda, after that back hold, this is the time he came in for the raid, Naveen. Yeah, correct. And thankfully, Radhika, Hampi Heroes have not been all out. Thanks to Sai Bonus Prasad. point. Hampi Heroes. He gets closer and closer to the 200 mark. And because whenever Gagan Gowda has been tackled out, Hampi Heroes concedes the all out. And thankfully at that occasion, he was being revived by Sai Prasad. I think Hampi Heroes wanted to have a substitution and Ram Kumar came in quickly. Yuva Kumar is ready to come in. They need a defender. I think, somehow Sai Prasad will be taken off. No, Narsimha decides against it. Yuva Kumar runs away Naveen, from this is the raid. time. Yeah. Naveen, I am sure this is the raid that you will have a shout out for him. After he's politically right, I try to control my emotions. I try to be just a politically right person also otherwise. But nevertheless, if he does well, I'm happy. I'm really happy. He's a budding talent. He's a nice kid to be on the block, running and touch on Purushottam and 1 point. Hampi Heroes. Number 3 out. And Naveen, I think 200. he's reached 200 raid points. First grader to go out there and achieve this magnanimous feat in the summer edition. He's not aware of it. And don't tell him that. Gagan, 200 points up on India. And what an easy way to get it, Naveen. And that is just, running hand touch. That was so smooth as butter. Great. Yeah, totally. Gagan Glorious Gowda. 200 raid pointಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಂತಹ glorious raider. I think the arena can also celebrate with that. First raider to do that, and Gagan maintains composure, but not Ritik. Oh, they need to save the points 1 point. whatever the raider is bringing in. Number 2 out. Too many defensive errors today on both sides of the Great. mat, Naveen. That was the proper timing he went for. Maybe one more step and a push that would have worked for the defender. Yeah, totally. And after that back hold is not going near Vishwanath Vijay Kumar. Because Ajay Mutaya and Vishwanath, both defenders right there. He wants to go and provoke them. He's just gone in to take the bonus and Bonus he knows point. that Hampi bonus Heroes. is key for the taking. He takes it. Substitution. Hampi Heroes. That 27 might be- in, that 9 might out. be pushing that it is easy, but what Gagan is doing is he's pushing the do or die raid away. Absolutely, because the pressure would be taken off. And they are playing on a super tackle situation. They are not taking anybody out of the mat of the opposite court. They are having this situation, but then they could not 1 catch it this point. time. Palli Tuskers. Number 27 God. out. Shiva Kumar just was substituted inside. And look at where he is tackling Stuart Singh. Outside the block line, no planning, no coordination with Sukesh Kulal. And that has been a big problem for the Hampi Heroes. The raiding department is okay. And Gagan wants Vishwanath to go for his ankles. No, they're not interested, Gagan. You can stand there on the bonus. Nobody's going to come to you. You need touch points. And Bonus Palani point. will not give it Hampi to you. Heroes. He just gets another bonus point. Now Palni is eyeing on only the all-out, Naveen, but they are not understanding that Hampi Heroes are just taking away the points. 1 point. Palli Totally. Tuskers. Number And 4 see how out. nicely Stuart knew that Gagan will not even come in for supporting Sukesh Kulal. See, Gagan could have come Half in. time. And this Change is the another board. variety that Gagan should bring in. He needs to support the other defenders. I'm sure not on this occasion. Yes, Stuart was backtracking too quickly. But since the toss was won by the Palani Tuskers, the second half's his first raid. It's going to be a duo. I mean, it's going to be a surrender raid. That's it.
The all-out will be inflicted on Hampi Heroes, and it will not stand as 17-16. It will stand as 20-16. That is how we need to consider this score as 20 to Palani Tuskers and 16 to the Hampi Heroes at the end of the first half. We will come back soon and we will see the surrender raid in no time. Welcome back in this match where the Palani Tuskers, they have tried to play differently on the defense lines. They have given away easy points to the Raiders of Hampi Heroes. But Madhu Kavirappa was very good in one do-or-die raid, but the other do-or-die raid did not work in his favor. The defensive errors from Hampi Heroes are also been a problem issue for the boys in blue. But this lad, Gagan Gowda, with a pink armband, has reached 200 raid points. First raider to achieve that 100, first raider to achieve 150, and the first raider to achieve 200 raid points. Wonderful work. And every season in the Yuva Kabaddi series, we find one or the other find of the season, and I think Gagan Gowda is that one find of the season. And it's very, very nice for the Yuva Kabaddi series to become a big platform, to have this talent going ahead to play India one day. Of course, the professional leagues, and after that, it's going to be the India colours. Right, I'm Navin Shorey, and alongside with me is Radhika Reddy. Radhika, I think we have to take it at 20-16, isn't it? That is going to be a surrender raid. Exactly. That is all about, winning the, toss. This 1 plus 2, 3 this points. strategy is all about. Palani Tuskers, all out, Hampi Heroes. That is why I wanted in the previous super tackle situation to Gagan Gowda to be, taken off. Substitution, Hampi Heroes. Let's come. Or Shivakumar or somebody who substituted 9 in, 16 out. Sai Prasad comes in. Suhas Nagaraj being taken out. Shivakumar wants to start off. But the rating has been good. After the all-in, as I said, it's 20-16. Gagan Gowda now needs to, of course, cover up for all the mistakes of the defense. And still Ajay Mutaya, first attempt on the ankle hold, and also the right cover. It's bonus plus 2 is what I feel. It's going to be a super raid. Oh my God! 2 are definitely in. Exactly. Fine at 2. Ilavarsan wants a review even before that decision. Bonus plus 3 points. Hampi Heroes, number 2. Whatever 8 and that 11 out. was, Radhika, he's wiped out in just one raid, and that's a super 10. Absolutely. And I think 250 is that possible, Naveen? And now it is looking like, if he keeps on raiding like this, it almost looks like. Now, whatever that lead of Palani Tusker was, he's just come in and finished in one raid. That's why it's so important. Come on, Sukesh Kulal. Raider save, 1 point. Palani Tusker, number 4 out. A pottery maker should have patience, and Sukesh, even though he comes in from the pottery making family, does not have patience. Great. That's a lovely escape though from Stewart. But then I think, both the side defense is completely depleted. I mean, they're just taking chances whatsoever. Yeah, because they have so much surplus of raid points, isn't it? Both the sides, the Raiders are actually masking all those errors from the defense. Kick from Sai Prasad, brilliant, takes off a Raider. Kick on Ram Kumar. Wonderful work. 1 point, Hampi Heroes, number 7 out. Great. That too, the corner was in the contention, but then the in position was being targeted. Is it, Naveen? Yeah, absolutely. Right in, Ram Kumar. And now, if they can keep Stewart saying out, no, come on, Gagan Gowda is unhappy. 1 point, Sweeping Palani Tuskers, number 4 out. Cannot take his leg back.
This is one difficult skill for a raider, Naveen, just to sit flat and again, raise so tall again with that momentum and also escaping from the defense. That's one of the toughest tasks for a raider. Yeah, and that has brought back another raider, Radhika. That's a problem. That has revived Mukesh. And Vishwanath Vijaykumar. Oh, was there a dirty hold? 1 point each. 1 point, Sagar Panchal says. The crowd is happy, but yeah, Sagar says only in his eyes, just go back. Don't even talk. Exactly. That's a command one need to have. Really. Yeah. There was a jersey pull though. There was. Humpy Hero should have reviewed it. Yeah, but if the Aravali Arrows or Periyar Panthers, they would have definitely gone for it. What to do? Our boys just know to play kabaddi. Right. Don't read between the lines. Let's keep going. As Stuart Singh once again gets a high line defense. What is he trying to do? Come on, Ritik. Number 2 out. Madhu Kaver applies all words against him. Red. That was so easy. Why was he, just standing so close to the, back line? And also so high line of defense. Come on, need to stay back. So one effort from Ajay Mutaya. The first effort only has led 4 points, and now Ajay Mutaya wants to stay back down. My God! 1 point. Humpy Heroes. Number 9 out. A big challenge. Stuart Singh taken off. Red. Those long hands does all the job. Oh, yeah. Mukesh Gulal, come on. And Kumar asks him to wait. Narasimha is not happy. Do it. Ram Kumar is appealing against him. The custom officer never lies. Mukesh 1 point. has Palli to go Tuskers. back. Number He's 4 fully out. guilty for it, I know it. Raider. Absolutely. And the Number smartness 7. of the raider. He did not Green go for card. a hand touch. Don't He show went for a signal kick. before the decision. Okay. Oh, I love it. I love what Sagar Panchal just said. I have had deep discussions with Sagar Panchal about this. And I told him the same lines. If any player is showing the decision of the review, 2 guys decide, give him a green card. And Sagar Panchal has done it. Sagar, wonderful work, my friend. I've told him that if the player, goes out there and appeals for a review even before a decision, give a green Red card. out. That's what happened. 1 point. And once Palli again, Tuskers. goes and hunts Gagan Goda down. Again, it's kind of, a back hold only, Naveen. Red. That was a proper back hold, but this was like, diving a back hold or a thigh hold. Yeah, very much. Ramkumar got 8 touch points, and you know what? But Humpy Hero should realize this. Gagan, yes, he's very good as a raider. Wow, he just jumps 1 over point. Narasimha Murthy. Palli Tuskers. Number 1 out. It was as if he is, newlywed bride crossing the house wall the first time. There, boom. Red. Oh, that looked like it. And I'll tell you why I gave him an example also. Because Narasimha Murthy on his left hand is having 2 fingers less. He's got 2 fingers shortened, Narasimha Murthy. Okay? And even with that hand, he goes for a strong ankle hold, which is appreciable. Bonus But I asked point. him, Humpy Heroes. dude, I asked him why the 2 fingers are less. You know what he said? When the house was being constructed, their new house, he was, as a kid, playing in that Vaskal. That's what we call the new door. What is the tackle? Let us say 1 point. Palli Tuskers. Number 27 out. Under construction door, the frame of the door, the wooden door, and the wooden door exactly fell on his fingers. And That's what we this time, keepers. yeah. And I think, once Humpy Heroes lost the real hero Gagan, now this is the right opportunity for Palli Tuskers to take on. Bonus point. Humpy Heroes. Raider out 1 point. Palli Tuskers. The girls know what's going
Not right for the boys in blue. It's going to be a second all out, and the reason for that is their, I think, not so smart defense. One Second all plus 3 points. Palli Tuskers. All out. Radhika, Hampi Heroes. even after this, if they don't avoid those All silly it. errors, I think they will have another defeat on their name. And now, the gap is 7 and you have 11 minutes. Great. And Palni Tuskers Raiders are also doing quite a commendable job, Naveen. They are not like outstanding players like Gagan, but they are contributing very well. Oh yes, Madhu Kabaddi. 1 point. Hampi Heroes. Number 4 out. Only 1 point, but nevertheless they've got Vishwanathan out. Great. The stance were good, but the positioning of the tackle wasn't enough. Fair enough there. Yeah, and I would want to say, Madhu, also practice what you preach, maybe, because he was very clear in asking Gagan to turn left, rather turn right as a right raider. Oh, what is happening with Sukesh Kulal? He just can't believe himself. He's been targeted out 1 so point. many times. Palli Tuskers. Number 4 out. What a brilliant kick, Naveen. Standing diagonal, Great. and that is the right way to kick the corner. I think Sukesh Kulal needs a break, Radhika. He just needs to not come back. He just needs someone else to fill in that slot for a while. Now, Then Gagan, he how much- should be on Palni Tuskers mat, Naveen, so that the lot of changes would happen in the defense. Yeah, should be. But again, Gagan claims a 1 point. point. Hampi Heroes. Number 11 out. One is not for Mukesh Kannan. And Radhika, I think, because again, two covered defenders are not standing together. And the Raider Substitution, will not Hampi go Heroes. back in time. 6 in, 4 out. Red. Oh, Sukesh Kulal has been substituted. Sudarshan comes in on that left corner. Brilliant. And I'll tell you what, me and Narasimha are not connected with any wires. I just said he should be Raider save. rested. He is 1 being point. rested. Palli Tuskers. Number I think 2 next out. option is to rest this man also Time out. out. Krishna Kumar. Hampi Heroes. Look at that lovely anticipation from the Raider. Proper use of the lobbies, Naveen. He's just Let's teasing listen the to defender Narasimha. to come over. Yeah, totally. ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಡ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಡೆದೊಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಿಲ್ಲಿಗೂ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಫೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Radhika, you want to decode? It's very simple. Yeah, he was just pointing out, silly errors coming in from the defense. That's it. And it's very, very inevitable there. Yeah, very simple. And Madhu was saying Raiders point tarta idare. That's what he said. Raiders are getting points, and yes, Sai Prasad do Raider get save. points. 1 point. Hampi And Heroes. Purushottam Number 3 on out. that right corner. I think it was way too advanced for my liking. Yeah. Red. I think Sai also did not go corner to corner, Naveen. He just gave that little pause so that the attack would come and he knows to escape. Yeah, perfect. Right, finally, Sukesh Kulal having a horrible day has been taken off. Sudarshan comes in at that left corner. I tell you, Sudarshan, you are no better. You are no better. My God. 1 point. Palli Tuskers. Number 6 out. Yo, Naveen, he went for ankle hold or thigh hold with a single hand. I realized your feel there, that IO in the front had told all the stories. Yes, really, they are in a IO sort of a situation here, Hampi Heroes, especially in that left corner. And see, when you have two right raiders, Ram Kumar coming against you, Mukesh Kannan coming against you from the right flank, that left corner has been a bit of a problem. Been a deep problem, not just a bit. Again, bonus stolen. That's okay, guys. Let him go back with the bonus. Don't reduce men on the court. Shivkumar, hold your fort. That's fine. I think if you really want to speak about the Aage ka Rasta, the Rasta will be made only Bonus point. Palli if Tuskers. the defense does not make any errors.
or else your Rasta is going to look like Bengaluru Road. That's all. And also, both the top raiders from Palani Tuskers are right raiders, Naveen. That's where the left corner definitely not doing well. Yeah, exactly right. Wait. Hang on. Point was not given. And if Gagan is so confident, let him go for the review. Marla, that is Marathi. From Sagar, he asked, did he touch him? 1 point. Akshay Desai agrees to his friend Number 8 out. and says, yes, there was a hand touch. And Arul Nanda has been touched. Both don't go for a review. That looked quite far, Naveen. Yeah. So yeah, if you want to have your way like the Bengaluru-Mysuru Expressway, stop committing errors in the defense. Like this. Like this. And 1 Ritik point. is playing Only Tuskers. like Number he's 2 riding his broken bike on Bengaluru City Road. That's what is happening. Strategic timeout. Totally potholes filled. Not going right. And they are using the lobbies to perfection, Naveen. They have found out the loop there. ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಗಿದ್ರೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು ನೀವು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂತ ಅಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಬ್ರು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಒಬ್ಬನೇ ರೈಡ್ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ರೈಡು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ರೈಡು ಅಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಒಬ್ಬನೇ ರೈಡು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೀವು அவனொಬ್ಬನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ஆடுறீரா நல்லா கீழே நின்று ஏறு அவசரப்படாத உள்ளே சொத்த விட்டுறாத சரியா ஜாலியாக ஏறிறாங்க நான் மேட்ச் அவ்வளோதான் அதுவும் 6 பேரும் ஆடிட்டே இரு ராமு அதான் 6 பேர் ஜாலியா ஏறி நில்லு அவ்வளவுதான். It means let the raiders come in and he's told Arul Nanda just go for the tackle when you have the angle, and Narsimha he's just told the raiders to keep getting points because the defense is making so many errors. And Madhu also was really not happy as a captain. He's asked the raiders to keep on getting points. What else can be done? He says. Bonus point, Hampi Heroes. But on the other hand, even Palani Tuskers raiders are getting equally good points, Naveen. Now look at Ram Kumar with 15 and super 10 for Stuart Singh. Where do you fill the gap now? Yeah, correct. See, that is what. My God! 1 point, Palani Tuskers. Oh my God! They want a review for the bonus. Red. Palani, please come. Bonus plus, please go. TV umpire, Palani Tusker challenge, bonus plus 1 point. Our decision, only 1 point. Please review. And Naveen, none of the teams went for the reviews. They know that defense has been doing errors and they don't have the confidence even to go for the reviews. Correct. And I think this has to be picture perfect of whatever the bonus has to be taken. Landing foot outside the bonus line, trailing foot in the air. Easy bonus for Ram Kumar. I think he will get 17th rate point with that. Good work. Very, very good work. What is Shiv Kumar thinking? What is the entire defense unit of Hampi Heroes? See, why Palani Tuskers have been okay, Radhika, even though their defense is doing errors, is because review unsuccessful. 1 point, Palani Tuskers. Palani Tuskers, you use or no more use? I don't want to talk anything about that bonus point. I really don't want to. That'll hurt a lot of people around, but unsuccessful. Right, let's go back to whatever point I was trying to make. Okay, so only one raider bonus point, Hampi Heroes. That has not hurt the Palani Tuskers too much, but as you said, Ram Kumar, Stuart Singh, both of them getting points, that has hurt the Hampi Heroes more. And that is why that 7-point difference. Because Gagan's got no support, like how Stuart is supporting Ram Kumar. Naveen, Sai has 9. Yes, even 10, super 10 for Sai Prasad as well. I think maybe that all out, isn't it? 2 all out. I think that's been a difference.
Palani not been all out even a single time. And under this 5 minutes, they definitely need that all out now. Humpy Let us Heroes. say 1 point. Vishwanath Humpy Vijay Heroes. Kumar Number 4 once out. again goes for that back hold, gives away a point. Great. Nice turn and round the midline. That was good escape though. And Stuart Singh does his job well today. And again in a defense of 6 has the bonus opportunity, but just playing on the back line now. Yeah, correct. Yeah, so when Sai Prasad goes in, let's have the when Gagan goes in, let's have the breakup of his raid points quickly on the graphic. We want to see how many bonus and how many touch points. Strong double thigh hold, that's it. Let That's it not out. allowed to throw. 1 point. Palli Tuskers. With a little bit of a problem at the back of his neck, has now hurt his nose. Oh my God. And Gagan Gowda has been taken care the 3rd time. And to your question, Navin, I think 9 touch points and 6 bonus is what he's got so far. Yeah, correct. So see, 6 bonus points. That means the defenders have stayed on the mat. And that's Ajay Mudaya's injury. Do or die raid now. Can this be a blessing in disguise? No bonus available. Defense, stand back. Narsimha Murthy, don't play such a high line defense. Come on, Sudarshan. Raider save. 1 point. Palli Tuskers. Number 6 out. Did not see him getting tired. He just gave away a point. Substitution. Absolutely. When will Palli they Tuskers. understand the situation, 5 the in, dynamics of 2 the out. match, Naveen? You know, they have played Great. so much throughout the season. And, you know, these errors definitely not acceptable. Yeah, and Madhu Kavirappa wants a bonus review. Yeah, definitely not acceptable, correct. The bonus Humpy, was please not come. given. Sagar says Please go back. it was not TV convincing. umpire, Humpy Hero challenge, bonus point. Our decision, no bonus. Please review. Even I felt it was doubtful, Radhika. It's a clear bonus, Naveen. It is a clear bonus. Brilliant execution of bonus that was. You know, leading foot very, you know, completely out of the bonus line, and the rear foot was in the air. He should get it, Naveen. Yeah, that's what we thought even in the previous bonus. And look at Ilavarsan. Look at Ilavarsan on the Review background. successful. Bonus Review point, Humpy Heroes. successful. Humpy Finally Heroes, for the Humpy you have Heroes, written your something review. going right. And Palani Tuskers have no review. Remember that. They lost the review for Time a out. bonus like Palli this. Tuskers. Palani Tuskers timeout. இல்லை 5 செகண்ட் நின்றுட்டு ஒரு சும்மா இழுத்து பாரு கிடைச்சா அடுங்களா வந்துருங்க. Okay. Quickly, can we go to Narsimha? That's okay. He just அந்த பக்கம் says ஒரு ரைடு தான் கொஞ்சம் 3-4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರೂ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಮ್ಯಾಚಿಂದ. Oh God. ಅದಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ Oh. ಹಿಂಗೆ ಆಡಿಸು, ಹೊಡಿಯೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಡೆದೋಗಿ ಈಗ ನಾನು ಬಂದು ಸೆಟ್ ಆಗ್ಲಾ? ನಾನು ಬಂದು ಸೆಟ್ ಆಗ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಆಡಕ್ಕೆ. Will you teach me? That's what he says, Naveen. No. You know, Ritik was saying, you know, Sukesh Kulal and he did not get settled on a combination. So Narsimha asks, what? You want me to come and stand there and get settled with you? I love Narsimha when he speaks that hardcore coach's tongue. It's good. It's very, very good. What a reply to Ritik's stupid question. Really. And you know what is also very disappointing is he says only play for at least getting 1 point out of this match. Let it out. 1 Arul point. Nanda will not Palli allow even Tuskers. that. Right cover strongly puts him out. Absolutely. You know, if they wanted, they just might have just given a bonus and just let the raider go off. But then they took the challenge, Naveen. Yeah, correct. Very much. So Narsimha wants to at least pick up 1 point out of this match. He says, please play for that. At least use your brains now. Keep the score difference to 7 or less than 7. That's what he says.
More than 7 as of now. Looking little tough. But 1.5 minutes. They really can't think about it. Madhu wants to inflict the do or die raid first. Exactly. Now this is the do or die and a super tackle opportunity. So this is the right time. Fire rightly. No scope for errors here. And he will stand for 15 seconds. He will stand for 15 or 14 seconds and then he will start the attack. He crossed the end line. Yeah. 2 points. Crosses Palli the end Tuskers. line. And then Shivakumar shows Number 2 and 1 out. the most irritating sort of a tackle that is irritating Narsimha now. When a defender is stepped out of the end line, what was necessary? What are they reviewing for? Let us say 1 point. TV umpire, Humpy Road challenge. Let us say 1 point. Our decision, 2 points. Please review. Oh, they are challenging. Maybe they are unaware. Yeah, they did not cross the end line. That's what they think, Naveen. And the line umpire is standing there. He was just signaling the defender to come out. Correct. Oh God. And there was no contact before he stepped in. Look at that. He raised his hand. And after that, the second defender went in. And it's not the super tackle, but 2 raid points for Palni Tuskers. Totally. Review unsuccessful. 2 points, Palli Tuskers. Narsimurthy should have stayed back. No more review. Yeah, Humpy Heroes, no more review. I don't think so that 1 point also is not going to come in. And look at that bench. The bench also was unhappy with Ritik. He was stepping outside the end line. Now Madhuka Verappa has all the problems. He has to get a touch point. He has to save this all out. Bonus! And has been dashed off. Bonus point. Humpy By the Heroes. boxing champion. 1 plus 2, 3 points. Palli Tuskers. I think All that out. was from the left Humpy corner. Heroes. What a powerful dash that was, Naveen. And no recovery period for Humpy Heroes. Now, he just went in and look at the knock he gave in on the radar. Brilliant one on the midriff. Yeah, total knockout. And he's such a silent speaker, Manikandan Subramani. And he says, I'm a boxing champion. Yeah, he looks like a boxing champion. In his high school, he has won gold medal for Tamil Nadu. Played the nationals. Then did not get proper guidance. That's why he's playing Kabaddi. Yeah, thanks that he didn't go to boxing. Bonus point. Palli Tuskers. Kabaddi would have lost a superstar like Manikandan Subramani. Right, Palani Tuskers on the verge of winning their 3rd match in the challenger round. And Humpy Heroes will not even get 1 point out of this match. Narsimha, what else can he do? Really, this is a Match totally underpowered. And if you have a lower word than lukewarm, it's a cold performance from Humpy Heroes. That's all. That is all can be said, especially by the defense. Absolutely. Though we have seen all the 4 raiders, 2 from each teams have got their super 10s. The number of mistakes Palni Tuskers defense had done is far less than the Humpy Heroes. Yeah, correct. Palni Tuskers did not commit to too many errors. See, that is why I said the bonus points from Gagan Gowda does not indicate the touch points. Because when you have the touch points, you are inflicting the all-outs. And when you see Stuart and Ram, they got more touch points than Gagan Gowda. Yeah, Sai Prasad was good. But the touch points of Gagan Gowda was lesser compared to Ram and Stuart Singh. And that is why also, Naveen, 3 all-outs. No, Radhika, 3 all-outs. Yeah. And Sukesh Kulal, 7 unsuccessful tackles and no tackle point to him. And Krutik again, 6 unsuccessful tackles, no tackle point to him. Yeah. And we were thinking that Sukesh Kulal today will come out good in that left corner. Because Palani Tuskers had all right raiders. Stuart Singh, Ram Kumar and Mukesh Kandan. Mukesh Kandan, of course, left raider, but he does not raid too much. But yeah, that is the problem. And Gagan Gowda only can be happy with his 200 raid points. That's all. That is all. So totally, if you put Ritik and Sukesh Kulal together,
what, 15 tackles attempted and all 15 unsuccessful ones, right? Exactly. My God, that's humongous. Oh, this was funny. This was really funny. Narasimhamurthy, he should have just understood to stay back. That is the knockout punch on the captain of Hampi Heroes, and knockout punch by the Palani Tuskers on the Hampi Heroes. Just 3. Look at that. Just 3 tackle points. And Palani Tuskers, on the other hand, 8 tackle points and no super tackles at all in the entire match. Because Palani Tuskers never got reduced from 4 defenders. The max to max they were just 4 defenders. That's all. So that's why no super tackles and 3 all outs. That was very, very detrimental for the Hampi Heroes. That's why that's 6 extra points. Convincing victory once again, Radhika, for the Palani Tuskers. Exactly, and the hat-trick win in this challenger round, they still stand tall on their points table. And this raider, Ram Kumar, the best raider, 100% rate strike rate. Very confident and very skillful. And also we were questioning Vishwanath Vijay Kumar's inclusion instead of Tamilarasan, but he has proved us wrong. Yeah, Vishwanath Vijay Kumar, 7 total tackles attempted and he's got 5 tackle points, out of which I think he got twice. He's got Gagan Goda's number twice. So that's good, because Ilavarasan wanted Vishwanath to come in because he's more stronger compared to Tamilarasan. He's more, bulkier compared to him. That's why he wanted the backholes to be going in. Hampi Heroes being pushed straight down to the bottom of the points table. Oh, guys, that's not looking good at all. Nilgiri Knights, of course, had an off day today. But Hampi Heroes, yeah, they played a match lesser compared to the top 3 teams. But that's not looking good. And, of course, Palani Tuskers, once again, right on top. Just a couple more days, and I'm sure they will be finishing first or second spot. That's what the question that was being asked before the start of the match. What place will Palani Tuskers finish is what was being asked. I think, Radhika, 1 or 2. What's your call, quickly? For now, it's 1. Still 1. Totally, yeah. Right, as we will slip into a short break, and after the post-match, we will also have the post-match show coming up. But before that, tomorrow, welcome Aravali Arrows for the real challenge against the Nilgiri Knights. Unlike today, where you had a practice match, tomorrow, let's see how much of practice this will help against the Nilgiri Knights tomorrow at 5 p.m. And then, Palani Tuskers against Periyar Panthers. That's also going to be a big, big match, as we'll slip into a short break and discuss more about tomorrow's schedule and everything in the post-match show. We will come back soon. Stay tuned. Thank you, Radhika. Thanks a lot for joining us. सो एक और कड़ा मुकाबला, एक और बड़ा मुकाबला, जहां पर पलनी टस्कर्स ने लगातार एक और जीत प्राप्त की है अगेंस्ट हम्पी हीरोज। आइए आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन ऑफ मैच नंबर 102 ऑफ युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन 2023। इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले हमारे सभी पार्टनर्स को धन्यवाद करके। हमारे ब्रॉडकास्ट पार्टनर फैनकोड, फैंटेसी पार्टनर ड्रीम 11, फिजियो पार्टनर डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, जेएसएस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर जिंजो होटल और हेल्थ केयर पार्टनर रामाकृष्णा स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और आज हमारे साथ प्रेजेंटेशन में मौजूद है मिस्टर भरत चंद्र सर, टेक्निकल ऑफिशियल युवा कबड्डी सीरीज। हम आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे सर इस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। और जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि ये मुकाबला
पलनी टस्कर्स ने जीता अगेंस्ट हम्पी हीरोज और एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में आकर जीता। शुरुआत में लग रहा था कि क्या एक कड़ा मुकाबला होगा, हम्पी हीरोज ने वैसी शुरुआत भी की, बट पलनी ने कहा कि अंत भला तो सब भला। सीधा चलेंगे अवार्ड्स की तरफ, शुरुआत करेंगे फर्स्ट विद द बेस्ट रेडर ऑफ द मैच। तो आज पलनी टस्कर्स की टीम की तरफ से जिन्होंने रेड की बाहर को संभाला और अपोनेंट्स की डिफेंस को पूरी तरह से ध्वस्त किया, वो थे एम राम कुमार, 17 रेड पॉइंट्स। और आइए देखते हैं इनके दमदार प्रदर्शन को। चलिए, तो आज कोच का एक ऐसा फैसला था कि इनफॉर्म तमिलरसन की जगह एक बार फिर से वापसी करते हुए टीम में बुलाया था वे विश्वनाथ विजय कुमार को, और उन्होंने आते ही क्या दमकार और क्या दमदार प्रदर्शन दर्शाया है और बने हैं बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच पलनी टस्कर्स के लिए, जिन्होंने चटकाए हैं 4 नहीं बल्कि 5 टैकल पॉइंट्स। And now the time for the Kabaddi Kamal of the match, और ये अवार्ड जाएगा one more time from the team of Humpy Heroes। सबसे पहले इस खिलाड़ी को हम कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे on his 200 रेड पॉइंट्स इन द समर एडिशन। पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने रिकॉर्ड अपने कायम किया है, और ये नाम एक बार फिर से आप समझ चुके हैं जिन्होंने शानदार सुपर 8 लगाई, वो थे गगन गौड़ा। So that's all from the post-match presentation of match number 102। आज का ये चैलेंजर राउंड का बड़ा दिन यही समाप्त नहीं होता है। आइए सभी मुकाबलों के हम पोस्टमार्टम करते हुए नजर आएंगे आप सभी के साथ। द पोस्ट बने रहिए हमारे साथ।
चिक चिक चिक। क्या बात है, क्या दिवस था आज का, क्या एंटरटेनमेंट से परिपूर्ण ये दिन रहा, जहां पर अंतिम मुकाबले में आपको देखने को मिला कि पलनी टस्कर्स ने प्राप्त किए जीत की हैट्रिक और हम्पी हीरोज को नहीं मिली है अभी भी जीत। आइए आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे इस चैलेंजर राउंड के डे नंबर 3 के पोस्ट शो में। और आज फिर से हम पोस्टमार्टम करते हुए नजर आएंगे आज के इन तीनों मुकाबले का। बट मैच नंबर 100 इसका कांग्रेचुलेशंस और बेहद सारा प्यार देने के लिए आप सभी को तहे दिल से हम दिल से शुक्रिया करते हैं। बट आइए सबसे पहले हमारे साथ कॉम बॉक्स में बुला लेते हैं और आज की चर्चा के लिए बुला लेते हैं नवीन शौरी को। Yeah, thank you, Harshit. Yeah, the 100 matches, all thanks to the entire Yuva Kabaddi series' crew and all the very best guys as we keep on going series after series, stronger and stronger. That's very good. जी हाँ, तो चलिए आज बड़ी जल्दी से आज के रिजल्ट्स पर चलते हैं ना नवीन, देखते हैं कि आज क्या क्या मुकाबले वहां पर थे, किस अंदाज में किस टीम ने खेला। चंबल चैलेंजर्स की एक अच्छी शुरुआत हुई, सभी वो अंक इस मुकाबले से प्राप्त करते हुए नजर आए अगेंस्ट चोला वीरंस। Yeah, and the next match we don't want to talk about, the friendly game, and then 102 Humpy Heroes versus Palani Tuskers. That was massive. Palani Tuskers came out there, won their third match in the row. जी हाँ, वहां पर पलनी टस्कर्स ने एक और मुकाबला जीता। तो आइए सबसे पहले अंक तालिका पर देख लेते हैं ना कि हम्पी हीरोज को कितना नुकसान हुआ है उस हार का, और जरूर शायद बिल्कुल अंत पर वहां पर पहुंच चुकी है। 2 मुकाबले हारी है, हालांकि टॉप पोजीशन पर जो टीमें हैं उन्होंने एक एक मुकाबला अतिरिक्त खेला है, और कल जब उनका रेस्ट था इसी वजह से एक मुकाबला उन्होंने कम खेला है नवीन। Yeah, totally. Yeah, the Humpy Heroes been pushed right down to the bottom of that 7th spot. Yeah, that has hurt the Humpy Heroes too much. लेकिन समिट राउंड में मैं ये देखना चाहता हूँ कि पेरियार पैंथर्स कहाँ पे फिनिश करेंगे, because they have helped the Aravali Arrows today to come up on that points table, and how much will that cost them? My eyes are on them, Harshit, for sure. 101st match, Periyar Panthers making it very very easy for the Aravali Arrows. I really want to see where Periyar Panthers is finish in the summit round. जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों हम लगातार बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टैंडिंग्स की, तो आइए बड़ी जल्दी से उन विजुअल्स की तरफ चलते हैं, उन ग्राफिक्स की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हम आप सभी को एक और बार और हम लगातार आप सभी को ये इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि कितनी इंपॉर्टेंट है स्टैंडिंग इस चैलेंजर राउंड में। वो आपको स्टैंडिंग देता है, वो आपको पोस्टिंग देगा आने वाले मुकाबलों के लिए वो समिट राउंड में। तो जल्दी से उस विजुअल की तरफ चलते हैं कि टॉप 2 नवीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम क्यों कह रहे हैं। Yeah, very much. And even top 4. And I don't see, I think even the Humpy Heroes or even the Periyar Panthers trying to finish in the top 4. That's what I really feel. The way they have been playing, and it's not right. Because Periyar Panthers is good, and from tomorrow, Nilgiri Knights will come out as a very, very strong team. And if you want to finish in the 5th and 6th spot, then forget it. It's better not even get to that place, because it's an eliminator number 1, and it will be very, very tough to whoever finishes in 5th or 6th. That is a very, very distant dream to reach the finals on the 19th if you're finishing 5th and 6th in the challenger round. जी हाँ, बेहद मुश्किल वो कारनामा हो सकता है, बेहद मुश्किल वो सफर होगा। और उस सफरनामे की अगर हम बात करें तो शुरुआत करते हैं ना मैच नंबर 100 से, जिनके लिए सफर धीरे धीरे इजी हो सकता है क्योंकि चंबल चैलेंजर्स ने और अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और अच्छी परफॉर्मेंस करने के पश्चात वो टॉप 2 में अपनी जगह सील बना सकती है। लगातार मैचेस की विन होने चाहिए, बट चोला वीरेंस नवीन आज उनके लिए उतना अच्छा दिन नहीं गया। और हमने जो बात की थी कि अरुण कुमार और अगर एम गौतम नहीं चलते हैं तो टीम बड़ा मुश्किलात में आ जाती है। Yeah, Chola Veerans, yeah, they have their own problems, but I'm really happy with the way Ajay Maravi has today come out there and taken the responsibility off the shoulders of Sanskar Mishra. Yeah, Sanskar Mishra is one phase where he did really well in the absence of Durgesh Kumar, but today very, very impressed with Ajay Maravi. But then, yeah, Vineet is consistently performing for the Chola Veerans. Whatever the problem they had in that left corner is slowly fading away. But the only problem now is that right corner defense, where if they can get that straight, it will be nice for the Chola Veerans. But it is that one-off day, no, Harshit, where the Raiders did not do well. I think that is just that one-off day. But we have generally seen the Chola Veerans' Raider doing very well. जी हाँ, वो कॉन्ट्रास्टिंग जो हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना, जो अंतर की हम बात करते हैं, यहाँ पर वो अंतर आपको बिल्कुल नजर आया रेड और डिफेंस में। बट 8 टैकल्स में से नवीन 7 एक खिलाड़ी ने वहां पर प्राप्त किए। विनीत ने वहां पर वर्सेटाइल परफॉर्मेंस जिनकी हम बात कर रहे थे बहुत ही अच्छा है। राइट कॉर्नर भी उन्होंने काम किया, लेफ्ट कॉर्नर भी, यानी कि दोनों पोजीशन को संभाला है। और जो हमने प्री शो में कहा था कि एम गौतम अगर हाई फाई बनाते तो अगला दिन उनका थोड़ा सा भुला देने लायक रहता है, सिर्फ 1 टैकल पॉइंट्स। बट जिन्होंने आज दिन को अपनी टीम के लिए बहुत अच्छी तरह से बनाया वो कहीं ना कहीं दुर्गेश साहू थे। एक अच्छा सुपर टैकल भी किया और अपने नाम एक शानदार हाई फाई किया। देखते हैं नवीन।
Yeah, that's very good. Durgesh Sahu, he's got that Kabaddi Kamal moment. But yeah, you mentioned it right. See, Vineet is generally a left corner defender. And for all the right raiders, he becomes a big problem. But today, the right raiders of the Chola Veerans had a lot of problems with Durgesh Sahu, who is coming into form. See, again, that is also a good factor for the Chambal challengers. And I really want to see Durgesh Kumar coming back as soon as possible. For me, he is the MVP of Yuva Kabaddi Series Summer Edition. Very, very clearly, he's been the most valuable player. But I'm happy that somehow the Chola Veerans have got that left corner correct. But the problem is on that right corner, Arshit. They tried many, many defenders, but I'm not seeing one proper name in that right corner yet. जी हाँ, वो महेंद्र प्रसाद और जो उनके साथी खिलाड़ी वहां पर इंजर्ड होने के पश्चात तो प्रॉपर राइट कॉर्नर का फ्रेम नहीं मिल पाया। आप कवर के डिफेंडर प्रवीण को वहां पर लगातार खिला रहे हैं, बट उनके लिए उतने अच्छे दिन जा नहीं रहे हैं। बट आइए अब बात करते हैं जिनके लिए आज का दिन अच्छा नहीं गया। मैच नंबर 101 की बात करते हैं। पेरियार पैंथर्स वहां पर मुकाबला खेल रही थी अरावली एरोज के साथ। अच्छा मुकाबला चला, शुरुआत अरावली एरोज ने बहुत अच्छी की और नवीन इस मैच में भी डिफेंस हैवी गेम हमें देखने मिलने वाला था, हमने यही आशा की थी, पर दोनों ही टीमों के रेडर्स ने भी ठीक ठाक अच्छा प्रदर्शन दर्शाया है। And right word from you, Harshit. Really, tic-tac match. Let's, I think, leave it at that, because the more we speak about this match, it's not going to be worthy enough. Yeah, the Aravali Arrows somehow come up on that points table with the Periyar Panthers' soft corner. जी आज पेरियार पैंथर्स ने जरूर अपने सातों भाग की हम जब बात करते हैं 6 की 6 जो कॉलम से वहां पर उन्होंने पॉइंट्स प्राप्त किए, बट अरावली एरोज को जीत से नहीं रोक पाए और अरावली एरोज ने उस मुकाबले में जीत प्राप्त की। अच्छा फायदा उन्हें अंक तालिका पर हुआ है और अच्छा प्रदर्शन। एक चीज हमें देखने में नजर आई कि राजेंद्र भाकर को आज फिर से इनफॉर्म नजर आए। जो आप रेबेल की बात कर रहे थे, उन्होंने दर्शाया कि वो किस पोजीशन और किस तरह के प्लेयर के खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। I think he has forgotten, but I think let's quickly go to that Kabaddi Kamal moment. Who's got that? जी हाँ, और बात करेंगे चलिए कबड्डी कमाल अवार्ड की, तो 3+2 पॉइंट यानी कि एक शानदार सुपर रेट नजर आई थी जो ऑल आउट कर दिखलाया था सरदार चौधरी ने अपने विपक्ष के विरुद्ध। आज सरदार चौधरी को मौका मिला था और उन्हें मौके को बुनाने की पूरी तरह से कोशिश की है। आइए उस मैच की तरफ चलते हैं और उस शानदार प्रदर्शन की तरफ चलते हैं। Yeah, totally. Yeah, wonderful. Sardar Chaudhary, I think he's a veteran in the Yuva Kabaddi series. So, yeah, he's done well today. जी अच्छा खेले हैं आज, पर बहुत सारे सवाल हमारे मन में और बहुत सारे दर्शकों के सवाल थे यहाँ पर आज कहीं ना कहीं पेरियार पैंथर्स के कोच के लिए। तो आइए हम उन्हीं को इनवाइट कर लेते हैं हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पूरन शेखावत साहब, आपका स्वागत करते हैं हम। थैंक यू सर। और कैसे हैं सर आप? ठीक है सर। और कैसा रहा सर मुकाबला? शुरुआत आपसे ही करते हैं कि कहाँ आपको लगा गलतियाँ हुई? सर गलतियाँ तो हुई हमारी टीम से, बाकी हमारे कल मैच था हमारा जो, उसमें हमारे 3 प्लेयरों के इंजर्ड हो गए। जैसे मतलब मंजीत आज बिल्कुल भी ऐसा था, उसकी खेल नहीं पाएगा इसलिए उसको बाहर रखा। अनुज को भी चोट लग गई और लोकेश के भी थोड़ा दिक्कत थी, इसलिए हम फिर भी हमारी टीम ने अच्छा, पहले शुरू में थोड़ा डिसपॉइंट हुए थे, फिर मेरे को लगा कि मोनू अच्छा कर लेगा। लास्ट मैच मोनू ने अच्छा किया तो मोनू भी अच्छा नहीं कर पाया, तो फिर मैंने लोकेश को चेंज किया, तो लोकेश ने कुछ ट्राई अच्छा किया पर हम जीत नहीं पाए सर। जी हाँ, राइट। और सो मिस्टर पुरन, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस दिन के हार के बाद आपका पोजीशन क्या होगा करके आप सोच रहे हो? चैलेंजर राउंड के अंत में आप समिट राउंड में कहाँ पे फिनिश करना चाह रहे हो आप? सर हमारे पास अभी भी मौका हमारी टीम के पास में कि हम फर्स्ट या सेकंड कर सकते हैं, क्योंकि पलनी से और नीलगिरी और अपने हम्पी से मैच है। हम तीनों मैच जीते तो हम स्वाभाविक है कि हम फर्स्ट आ सकते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट या सेकंड पे हम फिनिश करें और हम क्वालिफाई करने के लिए कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपके मैं ये सवाल क्यों पूछा, वो उसका कारण भी वही था क्योंकि अगले 3 मैचेस शायद अब हम्पी हीरो से थोड़ा मतलब सिंपल हो सकता है, लेकिन अगले 2 मैचेस पलनी और नीलगिरी के खिलाफ तो बहुत टफ मैच होने वाले हैं। तो इसलिए मैंने ये पूछा कि उन टीमों के खिलाफ आपकी तैयारी कैसे रहेगी? हाँ सर, हम कोशिश यही है कि हमारे जैसे मंजीत और अनुज मेन टीम डिफेंस के हैं, ये फिट हो जाएंगे तो हम स्वाभाविक है कि हम अपना 100% देंगे, तो हम कोशिश यही करेंगे जीतेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।
चलिए, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जरूर अपना बेहतरीन एक ग्रेड गेम दर्शाना पड़ेगा पूरन शेखावत जी को, और साथ ही साथ पेरियार पैंथर्स को, क्योंकि बड़ा मुकाबला वहां पर वो होने वाला है। आने वाले सभी मैचेस बहुत ही बड़े और बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। बट एक और इंटरेस्टिंग मैच वहां पर हमें नजर आया, जहां पर बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ बिल्डअप किया गया था, जहां पर गगन गौड़ा ने अपने शुरुआती 200 रेड पॉइंट्स भी प्राप्त किए और रिकॉर्ड को कायम किया। हम्पी हीरोज बनाम पलनी टस्कर्स, और नवीन हमें देखने को मिल रहा था कि तमिल अरसन की जगह विश्वनाथ वहां पर खेल रहे थे, बट उन्होंने क्या रोल निभाया है आज तमिल अरसन के एब्सेंस में, पूरी तरह से एलिवरसन के उस जो सब्जेक्ट था उसे पूरी तरह से पास करके बताया है। Yeah, see, the only point why Vishwanathan was actually fielded in that left corner is because against Gagan Gowda, I think Ilivarasan did not feel Tamilarasan will be very strong as a back hold, because for Gagan Gowda, that back hold is one big weapon that can be used against him. That is like an atom bomb that will burst out. And Gagan Gowda, yeah, he's got that old habit of not turning, isn't it? Not utilizing the lobby well. And today, yes, he got lovely raid points. He reached 200, but he also tires out very quickly, Arshit. See, that is also a big point of contention that the Humpy heroes should have in their mind. Yes, he's a good raider. Yes, he's a tall raider, but physically, he's not got that stamina, what I feel, for 40 minutes of consistent raiding. Yeah, see, you can't expect that from any raider, isn't it? Even in a Kabaddi match, it's a game of 7 players, and even the bench has to contribute whenever it's needed. But the Humpy heroes' defense should understand that Gagan Gowda is very much, effective only for 25 minutes, or rather 26, 27 minutes in the entire 40 minutes. That is how he plays. That is the best. He's like one of those vehicles which does not do well in the high range. In the mid range, it does really well. It has got nice peak, nice torque, nice pickup. That's all. In the high revs, it has been a problem for Gagan Gowda, and Humpy Heroes' defense should understand this. I'm not blaming Gagan here. The Humpy Heroes' defense should understand that Gagan can't be effective for 40 minutes. They should really realize this, that he is effective for 27 minutes. And even 27 minutes is a big time in a Kabaddi match for one raider to be effective, isn't it? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा नवीन आपने, क्योंकि डिफेंस में देखिए, हालांकि दोनों ही टीमों के लिए वहां पर सिंगल डिजिट में डिफेंस में अंक आए थे। ये बता रहा था कि किस तरह से इस मुकाबले में रेडर्स ने, राम कुमार ने वहां पर 17 अंक प्राप्त किए और बहुत ही अच्छी तरह से वापसी की। और वापसी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो विश्वनाथ कुछ समय के लिए वहां पर, खासकर अपने जन्मदिन के बाद कुछ समय के लिए वहां घर गए थे, और जब घर से वापस आए तो मुझे लगता है पूरी टीम को उन्होंने और पूरे दर्शकों को उन्होंने अपना बर्थडे गिफ्ट वहां पर दिया है। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इस खिलाड़ी का नजर आया, आज अपना शानदार हाई फाई बनाया। बट जिस प्लेयर की आप बात कर रहे हैं जो एटलीस्ट 27 से 30 मिनट्स बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही एफिशिएंट साबित हो सकते हैं मैच पर, उनके खाते में जाएगा कबड्डी कमाल अवार्ड, जिन्होंने शानदार बोनस प्लस 3 अंक प्राप्त किए और सुपर रेड लगाई। कहीं ना कहीं अच्छी कोशिश की कि उस मैच में हम्पी हीरोज को पलटवार करने का मौका दें। Yeah, this was the first raid of the second half for the Humpy Heroes, where the scores were 20-16, and he got that 4-pointer raid to nullify all the lead that Palani Tuskers had. Bonus plus 3 was very good. Yeah, as I said, even Narsimha and Madhu Kavirappa, everybody were disappointed today. And Arshit, left corner Sukesh Kulal and right cover Ritik, both put together 15 tackles attempted, all 15 unsuccessful ones. Yeah. All 15 unsuccessful tackles. So if that is how weak the defense is, see, that's why I asked Puran as well, that Humpy Heroes might be comparatively easier game, but against Palani Tuskers and Nilgiri Knights, Puran needs to really go out there, and Puran needs to do puri tayari. जी हाँ, पूर्णतः तैयारी के साथ आना पड़ेगा पेरियार पैंथर्स को भी, अरावली एरोज को भी। बट जिस प्रकार से हमने बात की गगन की, बहुत ही इफेक्टिव परफॉर्मेंस उन्हें लगातार कर दिखलाना है अपनी टीम के लिए। बट आइए, कल किसके भिड़ रहे हैं यहाँ पर, और कल कौन सी टीम वहां पर रेस्ट पर है, उस पर जल्दी से निगाहें डालते हैं। कल के 3 मुकाबलों की बात करें तो सबसे पहला मुकाबला अरावली के लिए भी बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है, बट अभी कहूंगा नीलगिरी नाइट्स के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। जरूर एक वहां पर दिन का उन्हें रेस्ट मिला है, बट 2 हार के साथ आ रही है, बट ये टीम बाउंस बैक करना जानती है नवीन। तो अरावली और नीलगिरी नाइट्स एक अच्छा मैच होगा शुरुआत के लिए। Oh, I will really trust my hopes on Raja Ram, the coach of Nilgiri Knights. He is a magician. He is an experienced old horse. He knows how to win races.
and Aravaliaros with the match practice that today they have got against Periyar Panthers. Yeah, that'll be really good to come out there and tomorrow face the real challenge of the Nilgiri Knights. But yes, at 6:30, Periyar Panthers against Palani Tuskers. Palani Tuskers have another opportunity to go out there and make it 4 out of 4. And that is what Puran Shekhawat told us in the post-match just a few minutes ago, that he is going to bring out Manjeet and he is going to bring out everybody fit against the Palani Tuskers tomorrow. And then Chola Veerans against the Hampi Heroes. Can the Hampi Heroes at least go out there and win their first match at least tomorrow? Or will the Chola Veerans come back to bite them hard? जी वो भी एक बड़ा मुकाबला होगा। बट नवीन, एक और चीज वहां पर देखने लायक ये रहेगी टाइमिंग्स में। हमें 5 बजे कल मुकाबला शुरू करना है, यानी कि 5 बजे वो लाइव एक्शन कबड्डी का आप सभी के लिए शुरू हो जाएगा। तो प्री शो निश्चित तौर पर आप सभी जानते हैं कि 4:30 के आसपास वहां पर शुरू होगा। उसके पश्चात जो अगला मुकाबला है वो 6:30 बजे नवीन, यानी कि 6:30 PM वो एक टाइमिंग में बदलाव है। और तीसरा मुकाबला 8 बजे वहीं पर शुरू होगा। तो ये छोटी सी टाइमिंग्स के साथ फिर से हम चाहेंगे कि थोड़ा सा स्पेयर टाइम हमारे दर्शकों को भी दिया जाए कि आप अपने एज यूजुअल अपने कार्य को कर पाएं। Yeah, totally. Yeah, I think Deva wanted that extra bit of a time to, I think, go run around, have some rest. All the timing changes that happens is only because of Deva. I have nobody else to blame. Our PCR director, who is completely there, and I call him, he's my chachu. He's as elder as my chachu is. So yeah, because of Deva, the timings have changed. What to do? I am guessing your age, by the way. No, I am just 25. Every day, every year of the calendar, I am 25 only, Harshit. No change in that. Absolutely, yes. But चलिए अब आज दी एक्सपर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवीन, एक बहुत ही दिलकश प्रश्न आ रहा है। मेरा सिक्स सेंस ये कह रहा है, देखते हैं कि कौन सा वो क्वेश्चन होने वाला है आज दी एक्सपर्ट कुएं में। तो चलिए देखते हैं कि आज द एक्सपर्ट क्या वो प्रश्न है। इफ यू हैड टू चूज 2 टीम्स फॉर एन एल क्लासिको मैच ऑफ YKS, which would be those teams? प्रतीक मुंडा, क्या बात है, क्या अद्भुत आपने प्रश्न पूछा है। नवीन, शुरुआत आप कीजिए, अंत मैं करूंगा। Awesome question. First of all, Pratik Munda, really good. El Clasico is, see, for me, we've seen a lot of El Clasicos before in the YKS, where, the then Periyar Panthers and, the then Kaziranga Rhinos. That is something which will be never, ever forgotten. Where we had Pratik Dhaya, where we had, all the other strong raiders, Ashish Narwal and Pratik Dhaya. That was the major El Clasico that I remember. But in this season, if you really go out and pick the nail of the wood, it will be for me Palani Tuskers and Nilgiri Knights. Because every time they both come in very closely fought matches, and for the first time Palani Tuskers winning against the Nilgiri Knights, because before that it was all the Nilgiri Knights with 2 ties and 1 victory, and then when Palani Tuskers came back to win. So whenever those 2 teams come and fight, that will be my El Clasico match in this season. जी हाँ नवीन, बिल्कुल मैं भी आपसे 100% सहमत हूँ, क्योंकि हमने वो देखा है ना कि समर एडिशन पिछला 1 साल पूर्ण अगर आप चले जाते हैं तो मुरथल मैग्नेट्स बनाम पेरियार पैंथर्स, क्या राइवलरीज थी। आशीष नरवाल, आशु मलिक, विनय वीरेंद्र और सुल्तान ऑफ सरप्राइजेस आपको नजर आते थे। 2 कॉर्नर्स, कृष्ण धुल, बड़े बड़े नाम शुमार थे। तो एल क्लासिको निश्चित तौर पर समर एडिशन का फाइनल था। One more teams or one more season that I really want to remember is our Pune edition, where we had Ahmednagar Periyar Panthers, the victorious team, and of course I think we had Nilesh's team. Nanded Chambal Challengers. Yeah. Nanded Chambal Challengers and the Ahmednagar Periyar Panthers. Whenever those 2 teams played, oh my God, that was a team to be remembered for. That was massive. That was really good. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। वहां पर भी अजीत थे मौजूद थे, अक्षय सूर्यवंशी मौजूद थे, और दूसरी तरफ आपको अजीत पवार खत्म कर दूंगा वो एटीट्यूड वहां नजर आता था। और don't forget Aditya Shinde. Yeah, Praful Zavre. Undoubtedly. Yeah, Praful Zavre, Laddu, what we call Praful Zavre. But Aditya Shinde, my God. I see the reason why Ahmednagar won is not because of Praful Zavre or anybody else. It was because of Aditya Shinde. Aditya Shinde made sure that he actually went against Akash Shinde, and he was just all guns blazing. And I will pick him anytime in my 7. Arshit, I think before we end our conversation, I think we also have that top 7 of every commentator. That question is still pending. We need to answer that out, and we are waiting for Mohit and all the others to put the idea across. I think we will come to that stage
where every commentator will have our all-time seven of Yuva Kabaddi series. या नवीन, तो इस एज अ शो हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। वहां पर हम पैनल डिस्कशन के तौर पर, जहां पर हमारे साथ अश्विन भी मौजूद होंगे और भी कुछ बड़े नाम वाईकेएस मैनेजमेंट से भी मौजूद होंगे। हर कमेंटेटर की स्टार्टिंग 7 होगी, तो वहां पर हम बहुत ज्यादा डिस्कशन करने वाले। हम इंतजार कर रहे हैं आपका कि कब आप मैसूर में एक बार पुणे आएंगे, बट आप जल्दी आएंगे, ये हमें पूरी आशा है। Very soon you'll be seeing me there. Yeah. तो चलिए, हम सभी भी आप सभी के साथ बड़ी जल्दी मिल जाएंगे। आज का दिन आप सभी ने देखा कि कितना उतारू था, कितना ज्यादा थ्रिलर था, तो इस थ्रिलर को हम बरकरार रखेंगे। कल हम आप सभी के साथ लाइव एक्शन के साथ जुड़ेंगे 5 बजे, बट प्री शो में जुड़ जाएंगे 4:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, सबक खैर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने पूरे परिवार का। Good night, guys.